सभी को गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अनदर टीम। व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वैलोरेंट वॉस पार्टी लाइव इज टीम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्यार से बात करेंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे आज, क्योंकि अगर प्यार से बात नहीं की तो घर से हमें काम 25 कर सकते हैं, तो इसलिए प्यार से बात करना आज जरूरी है। ठीक है, इसी बात पे एसी लगा लेते थोड़ा। कभी उठे तुम लोग? सोए नहीं क्या? क्या तुम लोग सोए नहीं या अभी उठे? क्या सीन? मेरा तो तुम लोग बता सकते हो। तुम लोग बताओ मेरा क्या है, तुम लोग बताओ। मैं सोया नहीं कि मैं अभी उठा हूं? बताओ। मैं सोया नहीं कि मैं अभी उठा हूं? बताओ। पढ़ रहा हूं भाई। तुम लोग पढ़ रहे हो? आपका होमवर्क कर रहा था मैं। मेरा होमवर्क? वाह, अच्छा ध्रुव भाई तुम मेरा होमवर्क। हाँ, चड्डी मैन ओपी इन द चैट। मेरा चड्डी ओपी एडिट करके आया ये पक्का। नहीं, मैं तो सो के आया हूँ भाई। मैं तो सो के आया हूँ 2 घंटा सो के उठा हूँ। कल बोर्ड एग्जाम्स है। कल तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स है सालो। भाई ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अब भी सो जाओ यार, अगर बोर्ड एग्जाम्स है ना तो सो जाओ भाई, क्योंकि नहीं तो एग्जाम हॉल में कल है ना सर दर्द देने वाला है तुम लोगों का। तो गो एंड स्लीप बेबीज, यू नीड टू स्लीप बेबीज, नीड टू स्लीप। मैच कब चालू है? मैच विल स्टार्ट इन सम टाइम। और ये तो वाइपर आई है। रुको, आएगी, अभी आएगी। आएगी यार, रुको। ये देखो इधर आएगी। आएगी। ए भाई तू हटना भाई। And I respect that because they wanted to stick with what was comfortable for them. So I guess this team plays themselves some highly, competitive matches. I think FURIA looked very good in their game. MIBR managed to take. आज की टीम देखो दोस्तों, अगर आपको टीम नहीं पता आज की, माजिन भाई ने अपना जो है हुलिया चेंज कर लिया है। माजिन भाई अभी ऐसा दिखते हैं, ऐसा विषय हो चुका है। माजिन भाई हमारे थोड़ा नुस्खा चेंज कर लिया है। ओ वाह, इसका फेस देखेला लग रहा है। कोनान है ना, कोनान, इसका फेस देखेला लग रहा है। बाकी सब थोड़े से नए है ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी मैंने किसी का मुंह नहीं देखा है भाई कभी, ऐसा विषय लग रहा है मेरे को। तुम लोगों ने ये लोग का मुंह देखा है? मैंने तो नहीं देखा भाई। भाई मजा तो आने वाला है आज, लेकिन मैच है ना मेजरिस्टिक जो है वो इसके बाद होने वाला है, जो तुम लोगों को पता ही रहेगा। कौन सा मैच होने वाला है बेबी, बताओ जरा। अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद जो मैच होने वाला है उसमें तुम किसको सपोर्ट कर रही हो? बताओ।
VCT वाले सोते नहीं है क्या? सोते हैं भाई। टेक पॉज आया तो फिर क्या, फिर काम 25। They're not as strong as they used to be. And I think that's the biggest point here. On the other side, though, Furia also ran old comps for the most part here. Familiarity. Right? But I'm not as worried about what we saw from them because, first of all, I think NRG was a much stronger opponent than what Cloud9 was. And secondly, I think these are maps where I'm not as disappointed in these comps. I think what they were running with was गेम प्ले यार भाई देखो, गेम प्ले दिखाना है ना बराबर नहीं है यार। गेम प्ले दिखाते हैं ना भाई तो हटे यार, गेम प्ले नहीं दिखाना चाहिए। गेम प्ले क्यों दिखाते हैं यार? So I don't have the same worry I have for MIBR for Furia. I just think ओ it's भाई, interesting you guys aren't as देखते big देखते on कौन कैसा MIBR, खेलता है। only because when you look डेंजर back खेलते at गए ये that लोग। series, like Oxy had like a highlight performance. I mean, he popped off, and that's very hard to stop फ्लैश a है, player फ्लैश है, खेलने who आता है, has- खेलने who has आता that है। kind of impact ओ potential, and I'm भाई sure that, सब you know, तीन they मारे। weren't factoring that in ओ because भाई, you look at the score lines, right? I mean, ए we चैट, started off इन at दोनों में कौन सी 13-10, टीम अच्छी है बताओ? 13-9 into an कौन MIBR कौन win, टीम अच्छी है इनमें? 13-10 for that MIBR loss. कौन सी टीम and अच्छी है यहाँ Oxy पे? popped off. So yeah, I don't disagree. Which team but is GOAT I team? feel like MIBR stocks can be just a little bit higher than what they are right now, personally. Yeah, but I also feel like सुबह सो Furia लिया was था क्या? facing हाँ, NRG, मैं so 2 like घंटा you're सो kind के of आया हूँ। forgetting that Yeah, part. I I was know. like, for me, NRG is like one of the top 3 teams you just mentioned. yeah. I'd say like I genuinely think NRG is like one of the teams to beat. फ्यूरिया गोटी टीम है क्या? सब लोग बोल रहे हैं भाई फ्यूरिया ओपी है, फ्यूरिया ओपी है, मतलब इतना अच्छा है। C9 definitely had some weaknesses as well. फ्यूरिया जीतेगा, सट्टा लगाया है। What I saw from MIBR, yes, they were solid on split. I genuinely देख, अगर लेकिन मैंने सपोर्ट किया फ्यूरिया को तो तेरे को पता है कौन जीतेगा, तो चल but at the पैसा same ला time, इधर। like, I still think the innovation needs to come out because you can just watch a VOD. क्योंकि भाई ऑब्वियसली अभी अगर मैंने सपोर्ट किया फ्यूरिया को is because they have तो फिर विषय हो जाएगा ना तेरे साथ। तो and with those guys is मेरे को ऑल द बेस्ट कह दो फॉर बोर्ड एग्जाम। ऑल द बेस्ट SY गेमिंग भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लास्ट यू विथ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ लव एंड सैक्रिफाइसेस। एंड भाई आई होप तू जो पढ़ाई कर रहा है वो ही आ जाए तेरे एग्जाम में। everyone else is starting to innovate and take आपको डर नहीं लगता? लग रहा तो है कि मम्मी अभी आके मेरे को चापटी मारे और बोलेगी भाई धीरे चिल्ला। I don't think they played poorly. वाई ग्लासेस? बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एनालिस्ट, एंड एक प्रोफेशनल एनालिस्ट को सनग्लासेस पहनना कंपलसरी होता है, बिकॉज his ops shouldn't know where he is looking at. Right, but let's actually move over though to some of the more individual players who pop off. And I think when you talk about individuals in these two teams, one name that immediately comes to mind is going to be players like. मेरे को भी ऑल द बेस्ट बोल दे। ऑल द बेस्ट मेरे भाई AK मिनाटी गेमिंग वाईटी। Look at the numbers that he is putting up. He's always प्रोफेशनल वेल्डर problem is he's कर दूं क्या वेल्ड तेरे को? हगरे हाँ, Yeah, I वेल्ड कर दूंगा ना, ऐसा बोल नहीं पाएगा भाई फिर। looked okay. Like I think they'll end up अरे ये कौन है? putting up numbers. ओ भाई गेम प्ले दिखा रहे, गेम प्ले दिखा रहे। Time you need a team that can go around that and have more firepower भाई surrounding that. साहब। Like, you can be a star player, but if you don't have anyone else on you, you can't 1v5. Yeah. I mean, unless you're D1, but तो like मतलब that's different. That's फ्यूरिया altogether. He can sometimes. चैट Yeah, फ्यूरी, we saw ओ that भाई, in ओ Nuggets भाई, because ओ the भाई। SVG was strong around him. This ओ guy भाई। was great, don't get me wrong. He impressed me. as जेट he डिफ किया always भाई does D1 watching को। this stage. we always talk about. But all I was really भाई into watching this अच्छा, match, मतलब especially चैट with them फ्यूरिया being 13-0 हो गया, against NRG, फ्यूरिया is I 13-0 हो गया, wanted to see 2-0 हो गया more फुल from the rest. भाई। We know these players have much higher heights they can hit. If they can achieve that while also भाई सट्टा लगाएंगे मत लगाओ यार ये सब। एडिट मिल गया हर्ष भाई? नहीं रे, मैंने देखा नहीं, मैं बाद में देखूंगा फिर, अभी स्ट्रीम होने के बाद। ठीक है, तुम सो जाओ भाई आराम से। भाई मैं इतने देर से पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्स चल रहे हैं, अब सोने जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। कल इतना पढ़ाई करो ना यार, मतलब कल के लिए इतना पढ़ाई करो, इतना रेडी हो जाओ ना भाई कि ये मच्छर, माँ कसम भाई, ये मच्छर लोग का एनर्जी कहाँ से आता है भाई? इतना चूसते भाई, मोटा हो जाते भाई। उनको ऐसा बस हाथ लगाया ना कि भाई पात देते वो लोग, उसका खून खून होता है। ये कौन है रे? And I feel like for MIBR, I just don't know who that is right now. I feel like there's just a bunch of stable players, but I don't see a star player or someone who's going to go But do you need beyond. do you feel like you when need a you're star against player? them ओ दीदी बोलती है MIBR में कोई स्टार प्लेयर नहीं है। MIBR में कोई स्टार प्लेयर नहीं है, खपची करने वाले वो लोग।
C9 के अगेंस्ट वो लोग जीते क्या? MIBR वाले जीते क्या C9 के अगेंस्ट? नहीं ना, मैंने सुना C9 के ऑक्सी ने बहुत टॉक्सिक कर दिया। आंखों में तेरी जब सी अजब टकलिया। मिस्टर फनरू, थैंक यू सो मच फॉर द 3 मंथ सपोर्ट। हेलो, कैसी हो? C9 2 MIBR 1। ओ मतलब एक राउंड जीते, एक मैच जीते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आंखों में तेरी क्या हाल हॉर्स भाई? एकदम मस्त ओजी लियो भाई। तू कब रुका? in these regional matches. Exactly. They have these regional matches. They're very familiar, but I also agree. I think FURIA is just going to take it on top 2-0. It's fair. To be ये completely बहुत honest, बोलता है यार, something in my gut. ये बहुत बोलता है। It's ये क्यों telling बोल me रहा है? MIBR, Hey, good and I morning, don't know Clutch why, Gaming. but we'll see. I honestly, सेंटिनल्स के 5 प्रेजेंट प्लेयर का नाम बोल, मान जाऊंगा तेरे को। टेंस गेमर, फिर एक टकलिया भाई है जो IGL है, उनका नाम भूल गया मैं। फिर मेरे को नहीं आता, मैंने एक सेंटिनल्स का मैच देखा है फिर भी। टेंस, सैसी, जेकेन, जेल्सिस, और कौन है? हाँ, जो सिलाई मशीन चला रहा था। क्या कर रहे हैं? चलो भाई चालू करो, अभी चालू करो। कैसा है? बहुत बोर हो रहा है, नहीं तो भाई विषय हो जाएगा इधर। ओ भाई पप्पा है भाई, ये तो ऐसा दिखते भाई वो। अच्छा तुम लोग को दिखाया नहीं क्या मैंने? मराठी सा पेपर है। ए भाई तुम लोगों का लैंग्वेज है कल, समझ रहे हो? लैंग्वेज को भी अंडर पैंट मत करो भाई। जो लैंग्वेज को अंडर पैंट करता है ना, उसके सबसे कम परसेंटेज आते हैं। तुम लैंग्वेज में ग्रामर एकदम सही करके है ना, अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो, समझे? भाई आपके लिप्स काले कैसे हुए? पिंकी पिंकी तो है। परसेंटेज मास्टर क्लास। हे हर्ष, गुड लुक अगेन। हाँ, ए थैंक यू पिक्सल रानी। पेपर लीक कर दो हर्ष भाई। नहीं नहीं भाई, ये सब मत बोल, क्राइम होता है साले। हाँ, जीपे 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 जीपे। हर्ष भाई भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर दो। मुझे खा जा, मुझे खा जा भाई। ये चालू हो रहा है, दीदी चिल्ला रही है। सॉरी सॉरी भाई, भाई साहब ये क्या चिल्ला रही दीदी मेजर। ए भाई ये लोग यार कॉपीराइट देते, मालूम क्या? ये कॉपीराइट देते भाई। ऐसा गाना लगाते मेजर मेजर, लेकिन कॉपीराइट दे देते भाई। अबे किसका गाना लगाया भाई? जतिन बिरबल का। स्मोकिंग नहीं करता मैं। दीदी चिल्ला रही है, दीदी अभी भरेंगी। वो बोलती है 12 सालों ने तो बहुत भरूंगी तुमको। ए बाय बाय, कॉपीराइट कॉपीराइट। अरे ऑर्गेनाइजेशन का अपना सॉन्ग होगा। हाँ भाई वही तो कॉपीराइट देंगे ना भाई। वीडियो एडिटिंग का अभी कोर्स। यार हर्ष भाई मैं कह रहा था एक डाका डालते हैं। ओके बेबी। किसको बोल रहा है भाई?
क्या बोल रहा था भाई? ये किसको बोल रहा था? हाँ, किसको तो बोल रहा था बाहर मिल भाई? किसको तो बोल रहा है होगा? किसको तो बोल रहा है बाहर मिल? भाई बोथ मैच वॉच पार्टी और जस्ट वन ओनली वन. Seeing you from long time, but recently you got too active on channel. Keep grinding, bhai. Keep growing. Chummi, 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 chummi. I've been consistent since very long, bhai. But yeah. Teams who are hungry, and we just have to figure out who wants that more. These regional matches are always भाई लोग extra इनके special. सेटअप देखो ना These क्या guys मस्त can लगते हैं भाई. इन लोग का है ना माउस पैड है ना, ऐसे इवेंट पे ओ भाई क्या ब्लैक माउस पैड है. क्लच भाई तुम्हारा कौन सा माउस पैड है? ये वाला, ये है ना. ये इवेंट्स पे जाके ना किसी का तो माउस पैड ही गायब कर दूंगा भाई साहब. अभी है ना चैट, ये चीज किसी को बताओ मत, ठीक है? अगला इवेंट होने वाला है नॉर्डविन घाट, बराबर लैन होने वाला है भाई. मैं तो बोलता हूँ जाके है ना गायब कर देते किसी का तो माउस पैड. countered on that. We talked about MIBR somewhat lacking a शिट, ये तो चोरी होती है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करने का भाई, ये सब. और भाई I thought मोन्टाज. they looked good on that map, and I'm a little worried that MIBR could just get out firepowered there. Yeah, I think the concern would be like if NW just decides to press him, you know, and if he feels comfortable enough to do that, which if he He's going does, to. and he's going to, and that is going to be the thing that this MIBR team needs to shut down. But you can also say that, but you also got to worry about Havoc and a lot of the other weapons that are over on FURIA, so it's going to be a crazy one. But let's go ahead and see what we're getting for the agent selects here as we get Astra locked in immediately out of the gate for the IGL. Split to start here. We haven't seen this one yet from FURIA, but MIBR took a Viper. win over Cloud9. They ran this Ayya. double duelist solo Sky comp. If Viper, I were the FURIA, cutie gaming what I'm looking Whitey. at here is on my attacking sides how Hi, I can Viper play आई है. slow and bait out that Sky utility. Once they lack that Sky सिनेमैटोग्राफी का util, भी even सोच with रहा double हूँ. dive, आप बताओ ये सही है? retakes are सिनेमैटोग्राफी very ओपी है भाई, Yeah, like कर the ले. Sky Util is so limited in getting the information now that especially when you have that Viper, ऋषभ you भाई have चिल that करो wall, यार जरा. you have the ability सबके to मैसेज bait डिलीट कर रहे those flashes you run and this those guy? draws. हिंदी का Sky is पेपर okay, है, but I feel लेटर like in सिखा this दो. meta, in this current meta, you देखो can भाई, drop your wall and मैंने तुम लोगों को बताया है हिंदी का अगर तुम लोगों का पेपर है तो तुम लोग भाई देखो, लेटर जो है लेटर, ये बहुत इजी है लिखने के लिए भाई. लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इनफॉर्मल फॉर्मल को? मैं भूल गया. लेकिन भाई इनफॉर्मल, ए भाई हैक कर रहे शायद. पीछे आ गए देखो एडमिन्स. ये देखो इसके पीछे एडमिन आ गए, हैक कर रहा है शायद. If you want to be rocking with this heavy stall comp, with the double ए भाई डॉज हो control, रहा है. with the cipher, those are tools that are tough to play without on the defensive side. So it is अनौपचारिक hard to make औपचारिक पर्यायवाची, ये कौन से स्कूल जाता है भाई? पर्यायवाची बोलता है भाई. भाई तू फेल होने वाला है, मत कर भाई. ये गया भाई, पर्यायवाची बोल दिया भाई. ये गया, ये हो गया फेल. असभ्यता हो गया भाई इनका हो गया भाई. double duelist. It is going to be exciting. Yeah, at the very least, मैप this is क्या gonna है? be a मैप क्या है? pop-off मेरे को game. मैप ही नहीं पता. This is very America. Everyone in America is just playing this last year. Every other यार region was चैट, इन लोग का टैलेंट क्या रहेगा ना, ये फ्यूरिया और MIBR दोनों टीम्स में ना सारे ब्राजीलियंस है. क्या टैलेंट होगा ना बच्ची साला. भाई ब्राजील है ना शायद है ना हर एक चीज में अच्छी, मतलब पढ़ाई छोड़ के बाकी चीजों में अच्छी रहेगी शायद, है ना भाई. फुटबॉल में कुत्ते माफिक खेलते हैं भाई. फुटबॉल उनका पूरा स्पोर्ट एकदम डेंजरसली ऑप्टिमिस्टिक. बहुत गोटी गेमर्स रहते हैं भाई ब्राजील के. और फिर भाई ये मतलब अगर कोई टीम में कोई ब्राजीलियन खेल रहा है भाई, तो मतलब स्मेल आ जाता है कि भाई ये तो है गोटी गेमर. अभी ये कर रहा क्या है? really want to see more out of him in this match. Yeah, I do want to let everyone know at home, and for those of you guys in the arena, you चलो, can see right there. 50 साल तक technical difficulty. Trying to get that sorted for MIBR, so that this way we could jump into the action. So we'll stick with the stage for the time being, continue the conversation. Just want to let you guys know what's करूँ going zoom How many करूँ stage managers आंदो भाई. At Well, least 3. Yeah, and get me up there. you gotta have at least 3 pairs of eyes on the task at hand. But don't worry.
we'll get on that as soon as possible, and then once we are good to go, we will jump into the matchup. But let's keep the conversation going here. I love what we're seeing, regardless of the fact that it is very Brazil, regardless that it is very, it's going to be a quick one. I think I'm looking forward to that. Play double duelist. I think on your defense, the nades are really strong to be able to hold space and make a stop and kind of add an extra Mouse connect नहीं हो रहा, हाँ ना भाई? And the jet can be really quickly भाई rotate. कैसा ना यार, तुम लोग समझ रहे हो भाई? इतना बड़ा भाई पीसी रहेगा उनका, इतना बड़ा पीसी होएगा माँ कसम, और उसका पोर्ट नहीं चल रहा भाई, उसका पोर्ट नहीं चल रहा मेरे भाई। रिस्टार्ट कर चालू हो जाता है, ये देख ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल किया रहेगा अभी। लैम्जू क्या होता है भाई? ये कौन सा माउस है भाई? 8000 का माउस खेल रहा है, 8000 के माउस से खेल रहा है भाई वो। ले क्या इसको, ये वाला माउस ले क्या नेक्स्ट अपना, क्या बोलते चैट? लेकिन चल रहा नहीं है भाई, तो चलो चलो स्किप हो गया। अगर चलता ना अभी भाई, बड़े स्टेज पे नहीं चल रहा है तो क्या फायदा ना। मैं भाई सोच रहा था अभी कल जो जाने वाला हूँ मैं VCT चैंपियंस टूर लॉस एंजलिस, उसके लिए मैं सोचा मैं लूँ इसको, लेकिन अभी नहीं ले सकता ना। अभी कैसे, खराब हो गया इतने बड़े स्टेज पे, मेरा हो गया फिर भाई। लेकिन कितने वजन है, कितना वजन है? हाँ इतना वजन कितना है इसका, वजन कितना भाई? 55 ग्राम का ही चे, मतलब मेरा वाला कितने ग्राम का है भाई? मेरा वाला माउस है कौन सा मेरे को खुद को नहीं पता भाई, यही है शायद मेरा वाला माउस। क्या मालूम कौन सा है भाई, एक तो बाद में कभी स्टॉक में दिखाया ही नहीं है भाई। इतना भाई मेरा तो हैवी माउस है मतलब। ओके भाई ये माउस पैड चाहिए भाई, खा जाऊंगा इसका माउस पैड में। सुपर लाइट जी प्रो ले लो। देखो भाई सबके पास जो होता है ना, वो लेने के लिए ना, जो सबके पास नहीं है उसको लेने का। टेंस वाला फाइनल माउस ले ले, क्लोजेस्ट यू विल बी टू टेंस। Without this kind of composition, when you have double dive though, you can split up how your two dive agents are entering, be able to break crosshair placement, and kind of just send those two alone into the site while everyone else is stalled by you. 16,000 का था। Players who are talented individually and can win those fights. हर्ष भाई सुनो ना, बोलना। I have rare mouse of Valorant. I have rare mouse of for Valorant. Is Intex 299. अरे भाई ये भाई ऐसा कुत्ते माफिक उसके हाथ वाथ पे पैर वेर पे ऐसा घुस के ऐसा वाकड़ा तिकटा करते हैं ना भाई कैमरा, मेरे को ऐसा ऑकवर्ड होता है यार। अबे इसके माउस पैड पे तो एनिमेश बनाया है पूरा भाई, तो डेंजर है। This game is going to be so explosive going in. Voltronics का यूज करो आप, Voltronics on my top। Let us know who you think is going to pick up the dub. ओ भाई बटन दबा रहा है, FURIA or will it be कनेक्ट कर रहा है, MIBR? कनेक्ट। Let us know who you think is going to win. अरे भाई घंटा कनेक्ट नहीं हो रहा भाई इनका, FURIA and then for MIBR. घंटा कनेक्ट नहीं हो रहा आज, घंटा कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे स्कूल में डाका डाल दो, मैं अपने स्कूल को बचा लूंगा, फिर मेरी क्रश इंप्रेस। भाई साहब यार मेरे स्कूल में ना एक बारी ये हो रहा था, मेरे को गन फायर्स की आवाज़ आ गई, ठीक है, गन फायर्स की आवाज़ आ गई और हमारे ना क्लासरूम में एक ग्रेनेड आया और भाई टीचर वहाँ पे पढ़ा रही है, ग्रेनेड आया और वो ग्रेनेड फट गया। तो भाई गलती से है ना, मतलब सैड लक, लेकिन वो एक बंदा था भाई जिसने मेरे को टपली मारी थी, वो भाई फट गया यार, वो बंदा उस स्पोर्ट में फट गया और भाई सब लोग चिल्लाने लग गए, भागने लग गए, या हुआ या हुआ। तो सब लोग है ना भाई बेंच के नीचे जाके छुप गए। तभी एक है ना मेरे सामने वाले बेंच के बाजू में एक और नेड आया, मैंने ना ऐसा डाइव मार के वो नेड उठाया और ऐसा टर्न अराउंड होके वो नेड ऐसा बाहर फेंका। भाई साहब जस्ट वो नेड है ना खिड़की के बाहर फटा है। आई इम्प्रेस, खत्म ना फिर। हाय बॉम्ब जरूर फेंका मैंने,
लेकिन एक बॉम्ब तो मैंने हासिल कर लिया। क्या बोल रहा हूँ मैं होता तो टीचर पे फेंक देता। वेरी बैड ब्रो, वेरी बैड। छी भाई, सॉरी भाई। word.exe हर्ष ब्रो, मास्टर सोल जाएगी देखने। मैं तो जाने वाला हूँ, पासपोर्ट निकाला है। अरे भाई चैट यार, इसका देख लो भाई, इसका देख लो भाई, उसका विषय उसका। हर्ष भाई ज्यादा नींद आ रही है लगता है। भाई मेरे को नींद नहीं आती, कभी नींद नहीं आती। मैं सोता हूँ सिर्फ आंख बंद करने के लिए, समझ रहे हो ना? एक सेंस समझो ब्रो। मैं आंख बंद करता हूँ, सिर्फ सोता नहीं हूँ मैं, आंख बंद करता हूँ सिर्फ। There's a difference. याद है मेरा अकाउंट हैक हुआ था, राइट ने वापस दे दिया। अभी हैकर ने मेरे अकाउंट साउथ कोरिया के एक 15 साल के बच्चे को बेच दिया था 3000 में। तेरे को इतना कैसे पता भाई हैकर के बारे में? तू हैकर है कि वो? अच्छा भाई मैं पढ़ने के लिए उठा हूँ। आप स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? चल भाई अभी तू बोल रहा है तो जाना पड़ेगा। पढ़ ले हगा से, ये सब चैट में लिख के पास नहीं होने वाला है, समझा ना? A little bit over the fact that they got a map, MIBR got a map off of C9. I think that's a good kind of नया माउस आ गया बच्ची, नया माउस आ गया मार्केट में, नया माउस आ गया। Okay. भाई इतना जल्दी नया माउस कैसे आ गया? I want to know that when Alex went into his analyst mode, he put a fake hat on. So I want everyone to just know that. भाई इतना जल्दी नया माउस कैसे आ गया? रिचा ये तो हार्ड है भाई, ये तो हार्ड है। वो तुम लोग को दिख रहा ही नहीं है। वाह, डब्ल्यू ट्रिमर, नाइस स्क्रीन। अबे नया माउस लाया उन लोग ने, पहला वाइट था ना, अभी ब्लू है भाई। ऐसे रंग बदलते जैसे उसने बदले। Like outside? Yeah, it's hot. Yeah, the players look like they work out. Yeah. I mean, so long as they're, stretching. हर्ष भाई चश्मे के पीछे अपने नींद भरी आंखें छुपा रहे हैं। दिखाऊं मैं? दिखा दूं। Define a run. Well, yeah, because a run here would only be winning and then getting those points, right? They've been on a run before. A run in this tournament is not super big, but I don't think that's going to happen per se. That's an extremely spicy take. इतने सुवा क्या होता है भाई? We'll say it is a spicy but not extremely spicy take. I feel like we should have all दाल भात खाता स्ट्रीम बघतोय। आता कोण खाता बाबा? आता नको ज्यूस। अब भी अगर तुम लोग खाना खा रहे हो ना भाई लोग, अब भी अगर तुम लोग खाना खा रहे हो तो तुम्हारे पेट में ऐसा गरम होने वाला है ना भाई, और फिर पूरा दिन और फिर ऐसा होएगा भाई। ये कब से मैं ये स्क्रीन पे क्यों रख रहा हूँ भाई? तब से पता नहीं क्यों। सॉरी भाई, सॉरी। चालू हो गया माउस चालू हो गया भाई। लेकिन उसका माउस चेंज हो गया है बे, उसका माउस चेंज हो गया भाइयों। तो अभी सीन होने वाला है। उसने अपना माउस चेंज किया है। अगर उसका माउस अगर भाई ये क्या पी रहा है भाई इतने छोटे से इसमें? इनका भाई सब कुछ अलग ही क्यों होता है भाई? इसलिए ये लोग वहां पे, मालूम क्या? इसलिए ये लोग वहां पे। सो जाओ और सोने दो, वरना राइट से कंप्लीट कर दूंगा। First match of the day. Thank you so much for sticking with us. And let's send it over to your casters. They hate Mondays, but they in fact love lasagna. It's of course Valorant's very own Vancillion Rivington. How does everybody know I love lasagna? Start. Yes, definitely. We could definitely start the game, and the Death set it up very भाई ने well. स्टार्ट दबा दिया भाई, तो डेंजर है। On the line now for both MIBR and FURIA here, Riven. Yeah. Because GB mentioned there was a couple of roadblocks that both of these teams have hit last Roblox season. खेलने वाले हम लोग। It's not necessarily a roadblock, but a dead end if they lose this series for the भाई journey towards Madrid. दादा का ये बहुत अच्छा है ना बे, स्वेटशर्ट निकाल के पहन लेंगे, है ना? VCT का लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट
like they're gonna bring the historical comps back. We're going back to double duelist, and there is a lot of comfort here between what they're going to play against each other. They Caster really realized, plays okay, yeah, Valorant, same obviously, भाई. region, they know what it's like to play भाई against कंबल में against बैठ के these देख रहा हूँ, players. चिल्ला They're not मत. gonna change. Let's bring what we're tried and true at, and it is the Jet, Raze, ठीक the है. Sky, Astra, and Viper. So Spill it, I feel like it's spill a it. pretty level match as we get into this one. Spill it, Interesting to spill see it. the votes भाई coming इन in लोग के from नाम social देखो, अब मुझे media समझेगा as कैसा well. कौन So MIBR है, कौन फ्यूरिया है. चलो चालू हो गया. अटैकर्स फ्यूरिया है भाइयों. We start off on split, and it is going to be MIBR अच्छा चलो, on defense. इनिशियल्स दिख रहे हैं, इनिशियल्स दिख रहे हैं भाई. Few ghosts, frenzy there for Havoc as they look to enter onto B. फ्यूरिया Just के a few lurkers 3 जन on the यहाँ back पे end. एमेन ले रहे हैं. Still a lot of decisions Furia can make. ओ भाई साहब अंदर घुस गई फ्यूरिया. ओ डबल सैचल. पहला मरते हुए, दूसरा मारते हुए, और एक प्लेट. लेट्स गो. पीछे गए. भाई डिफेंस है, डिफेंस है. भाई मेरे को फ्रेंजी चलानी है भाई अभी. मेरी भी फ्रेंजी ऐसी ही चलेगी. Yet this time they wanted to focus on GZZ, but he was ready for it. स्पाइक अभी भी बी की Two down तरफ. at B. They स्काई play out अकेले the map ए जा once रहा है. again. अच्छा स्लीवर With the साउंड दिया Viper उन्होंने, still up, फेक being किया able to फेक. activate the लेकिन wall. कोई फेक हुआ ही नहीं, किसी ने साउंड ही नहीं सुना. Over towards A just a little bit, so this helps play the numbers for Furia, but they're still going to walk into this solid defense at MIBR. Looking at the utility. आज भाई not मॉड too कैसे much बनते हैं? left on the side, just a चैट guy में in रह light के. there with the dash for sight, so MIBR is going to have to hit these shots. That's exactly it. They used a dog earlier on from Conan to try to drone towards the middle and didn't see anybody. So when you don't have दो utility, जन you हेवन want पे, the duelist, अभी they're playing 3 the जन भी में contact. साउंड आ गया है. जेट रोटेट कर रही है. चलो फ्यूरिया हार गई ये राउंड. नाइस ट्राई, नाइस ट्राई. नहीं हो रहा है, छोड़ो. जी दबा दो. चलो हो गया, चलो. नाइफ, नाइफ, नाइफ. गुड राउंड बाय MIBR. No, and भाई सब लोग बोले आज फ्यूरिया जीतेगा, फ्यूरिया जीतेगा. अगर MIBR जीत गया ना भाई, मजा आ जाएगा. it fizzles out. मेरे को तो है ना भाई, चैट तुम लोग को भी ऐसा मजा आता है क्या? मेरे को है ना वो टीम जो जीतेगी नहीं, वो उसको जीतते देखे ना, मेरे को मजा आता है भाई. मेरे को अंडरडॉग स्टोरीज बहुत पसंद है, कमबैक स्टोरीज. आई गेस ह्यूमन बिहेवियर. Ability in this is still kind of to make space for MW's era, or if Havoc is getting Watching in your on that, stream if from they're Canada. going in together as Hi. we would expect here. Namaste. It's gonna be a mid-open play, so still not going back to that dive into sight just yet on this save round. Putting a lot of importance on Endo U0 this round. For Furia. Furia जीतेगा, Only jinx कर a दिया. Sheriff in hand. We didn't even buy anything for Oh, Conan, so not too much लियाजी support भाई around यहाँ that पे चा- duelist. Artzine trying to push forward, and they actually have a really good angle right now for Liazzi just around the corner. So we'll try to make some noise, bait a shot. There's that push भाई forward. क्या Beautifully done पीक है यार. for Furia to start. Quick movement. क्या What a पीक nice है play. यार. Liazzi has been. We saw the ascent. चलो clips तो from दो earlier. One जन of the- बीमेन the पे ones on the साउंड front थे. of these आई मीन दो pushes जन when का बीमेन का Furia इन्फो goes दे into दिया and है. engage. And they are playing ए very पे good mind games. ए पे 50 rotation जनों ने back पीक around. लिया था, अभी वो लोग पीछे जा रहे हैं. ओह दिस इज अ ह्यूज प्ले. Furia's patience is very surprising right now. They've almost gone फ्यूरिया to का both बाय sides on है, लेकिन every, ऑलरेडी वो लोग एक जन every chance they गवा could. चुके हैं. Little at B, little at A. Second round. अभी little at MIBR B, little at A. बी पुश करने का ट्राई कर रही है. बी भी पुश नहीं कर रही है, वो लोग MIBR so मिड much जा to रहे think हैं. of, but this push on ramp from MIBR allows B to be a little bit more sure that the hit could be coming in. फ्यूरिया यहाँ पे rotation मिड back पुश looks like करेंगे. coming in ये from, दो GZZ. लास्ट मॉली बचा है, वो बी में डाल रहा है. Fuzzy's लेकिन falling back ये here, लोग मेल thinking रूम it's घुस गए. gonna be a ओह भाई टाइमिंग हो गया. very वेंट्स big वाले hit को नहीं towards दिखा the वो B क्रॉस main, करते but हुए. Furia are ये मर गया, contact. ये मर गया. There you go. नहीं FRZ मरा, just round the corner, but the guns are too good. Already the flank came from नहीं behind मरा, from कोई नहीं GZZ. मर रहा है. पीछे से आके मार दिया. क्या बात है. राउंड है, राउंड है, राउंड है. वेंट्स वाले ने गेम प्ले किया भाई. अच्छा उल्टा बोल रहा था मैं. Shift right now for Furia. मैं उल्टा बोल रहा था क्या? Fake out Sorry, sorry, MIBR sorry. by cutting all noise, not giving any kind of अंडरडॉग intention जीतते to what they're देख going to do. खुशी Or मिलती है सबको. indication यस rather. ह्यूमन And बिहेवियर. this little या play, super cheeky. People like Making comeback sure to drop stories. one. And finally they find MIBR. Because Better of that Viper than push हर्ष on the भाई. ramp, कभी knowing मेरे को that the बोला है भाई rotation कि had हर्ष to भाई go क्या to वाइपर B, खेलते हो. MIBR हाँ backs ऐसा up कुछ to बोलियो. receive the rest of Furia. ऐ But now we're on the चगावत. guns round. बस सामने कोई भी वाइपर खेल रहा होगा ना भाई, वो कितना भी रंगोली बनाए, सब बोलेंगे भाई हर्ष भाई सीख लो इससे. ओ भाई ऑप निकाली है इसने. Might find that quick as they dismiss जेट the ने star, and this will आठ be one of सीजन, the first आठ times we जिन, see Furia आठ kind जिन. of pressuring with that Viper wall towards A truly. MIBR जीतेगी तो 50 मेंबरशिप गिफ्टेड. हम नहीं मानते भाई, एक अभी करके दिखाओ. From that balcony, JZZ is just ready to rain down with the foul. हम नहीं मानते. एक कर दोगे तो आपका मैसेज पिन हो जाएगा. Good positioning by MIBR. Furia is left
to find nothing on भाई these ऑप peaks लगाइए on, बी पे, And लेकिन that's बी the पे thing कोई for पीक MIBR. भी नहीं After कर रहा, using हलचल that भी dart, नहीं the कर one रहा that's भाई. trying to find the most information. Look at ओ on ये that फ्लैश radar. में कोई Everybody's रिवील नहीं हो jiggle रहा peeking, है. trying to jump spot, trying to find information as FURIA. अभी दो जन रैम्प्स Again, खेल रहे हैं, the no one is beauty playing of that side. double duelists are looking for a perfect timing to explode. Now all grouping up towards this अभी A sound side. आ गया, sound आ गया. Coming up, there is that execution and it's फ्यूरिया open on यहाँ the पे A डब्ल्यू side. करते हुए, MIBR is फ्यूरिया ready का to play the फर्स्ट बाय है retake. दोस्तों. They're क्या in. फ्यूरिया ये राउंड निकालेगी. नाइस फ्लैश आउट, ये बाहर आ गया है. वाओ माजिन, माजिन भाई, माजिन ने दो मारे भाई. 2v4 भाई साहब. राउंड है, राउंड है, राउंड है. गोटी गेमर्स है भाई MIBR. माजिन भाई ने दो मारे. उसका नाम माजिन नहीं है, उसका नाम मजीन है. मजीन किसका नाम होता है भाई? तुम कमेंटेटर की ड्रेस में क्यों बैठे हो? मेरे को लोग बोल, मतलब मेरे को वैलोरेंट वालों ने बुलाया भाई, मैं एक प्रोफेशनल एनालिस्ट हूँ भाई साहब. यार MIBR भाई वो लिटरली हेवन ड्रॉप करके दो जन को मारा भाई. पनिश करना चाहिए था उसको, अकेला था वो लिटरली, मालूम क्या? ये देखो, ये तो जिस भाई थे, शायद अकेला नहीं था, दो थे. माजिन came a long way, facts baby. हर्ष लाइक करने बोल. 190 लोग देख रहे हैं और 180 लाइक. ए यार भाई, लोग जो लाइक नहीं करता है ना, तो भाई कल है ना ब्लॉकेज हो जाएगा भाई, टट्टी ही नहीं होगी. They are pushing themselves through into this round. ओ भाई रैम्स घुसा घुसी गेम प्ले बाय मजीरा. Getting a little bit of lint for this purchase as well, I think. मजीरा क्या नाम है ना भाई उसका? मौजीरा. MW जीरा. A big push up by जीरा. FURIA, and this time they're going to hold the space and see what information they can gain from behind enemy lines now. जल गई आप. नेड खा लिया, नेड खा लिया, लो हो गया, सब हो गया. नो वे. ओ माय गॉड, हाउ इज ही थ्रू? वेंट से एक आया भाई MIBR का और उसने गन ले लिया. उसके पीछे एक बंदा है, मर गया भाई. 8 HP पे मार रही है, मर गया. 2v4 है भाई. चारों जन साइट पे यहाँ पे फ्यूरिया के. MIBR के सिर्फ दो जन बचे दोस्तों, दोनों हेवन. सेव कर रहे, सेव कर रहे, सेव कर रहे, सेव कर रहे. फुरिया, फुरिया होता है, फ्यूरिया होता है, फुरिया भी हो सकता है, फुरिया भी हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं भाई. From MW0 to help pick up another one, and Good no, morning, MIBR Jania. was not expecting ओ that मैं kind तो of hard surface. They जनिया pre-cleared तेरी corner, ओर and they तेरा hurt. They चढ़िया. expected to again maybe be finding a slow-moving भैया FURIA with a lower बोर्ड्स का buy एग्जाम than है what they कल had. और मन नहीं कर रहा Really पढ़ने का. pulled क्या above करूँ? the फेल हो trend जा there. फिर FURIA भाई, फेल हो जा. pushes through on the buy, and they get the round of themselves. ओए भाई धप्पा Getting बॉल even कर रहा higher था in वो. the spot. Yeah, MW0 finally going down here, but it was too little, too late. What a great call to continue taking control of A and भाई उसका चश्मा कितना मोटा था देखा क्या? composition to a variety of ways. अरे भाई सेंट लॉरेंस से तो नहीं होना, नहीं भाई. The dive into sight once so far from FURIA. All right, still guns around. आपको सुपर चैट करना है, पर सुपर चैट में क्या लिखूं समझ नहीं रहा है. हाई लिखा है. Dueling operators from our jets. One shot from MW0 activates Blade Storm too. Glass cannon as well for him. Yeah. Now they know he's got it. That's even worse. So MIBR is going to hold on to those ओ corners भाई without साहब, ये peeking. क्या पुश कर रहा है? MIBR के 3 जन. That's what FURIA likes to do, just have B MW0 पे. try to walk out and get a pick. Oppo versus Oppo baby. अरे भाई क्या पीक किया है वो प्यारा. भाई मिड पे देखो क्या हो रहा है ये. भाई टाइमिंग हो गया मिड पे. Oh, they got one. Great call. It's going to make it so much harder to get in. MW0 too with the operator is shooting from afar, right? To dive ICL in. में नहीं था भाई मैं. Switch up the gun. Teamwork here. Freeze the crowd as अंधी they हो start to make गई. their way into sight. MW0, however, stays on ramp. MW0 just yet. MW0 with the Jira gameplay. ब्लाइंड होते हुए. ओ भाई फ्यूरिया वॉक इन कर दिए दोस्तों. ओ क्या जंप कर रहे भाई. आर्टजिन भाई से एक शॉट नहीं बच रहा. ओ भाई बैठ गया. सॉरी भाई आर्टजिन भाई. 2v5. MW0
क्या ये लोग निकालेंगे दोस्तों 2v5? something done with this. The top of the dome of one Pixel दिखा था, Pixel. and then wins that mirror matchup against Artzine. 2v2 Also 2v3 with that, 1v3 becomes the last player standing as भाई his अल्ट team खोल दे, अल्ट. falls. Looking back up towards the window, misses that shot as well. Senses the push out from main, but it's the wall bang instead from MIBR as they have a clean retake. भाई मास्टर कार्ड पेमेंट कैंसल्ड हो रहा है क्या? क्यों? भाई पादने जा रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन दे दो. अगर आप पादे नहीं तो आप फेल हो जाओगे. भाई मुझे सेंटिनल वर्सेस 100 ही देखना है. सेम आज एग्जाम है, पढ़ाई करूँ या लाइव देखूँ? मैं तो सबको बोला हूँ भाई, मैं तो सबको बोला हूँ जिसका कल एग्जाम है, तुम लोग मुझे देखो फिर फेल हो जाओ. They're trying to play here with for FURIA was very well read by MIBR. It's a great call on Smokes too, because in the way कितना टाइम सोया? 2 घंटा. अच्छा भाई आप क्यों नहीं खेल रहे हो? क्योंकि मैं खेलूंगा तो वो लोग मेरे को रिपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे स्मर्फ कर रहा है. फ्यूरिया यहाँ पे ए पुश करते हुए हैवी. ओ भाई साहब, ऑपर ने वहाँ पे एंगल लगा के रखा था, मालूम क्या? वो लेग किया उसको. भाई हैवॉक अकेला लर्क कर रहा है, उसने कितना साउंड किया भाई मिड पे. साइड मिल गया पूरा. माजिन टाइमिंग कर रहा है यहाँ पे, नहीं फ्लैश करके. ओ जेट ने बहुत अच्छा डॉज किया उसे. ह्यूज किल बाय जेट. सेव. अरे जाए भाई. फ्यूरिया का ये क्या उसे कहते हैं, अगर ठीक है, लेकिन नाइस कॉल. अगर MIBR ये हारती तो MIBR नहीं, अगला भी बाय था MIBR पे, लेकिन कैसा ऑपरेटर वगैरह और इकोनॉमिकल टाइम्स रखना है उनको, तो इसलिए. और उन सामने वालों को ऑर्ब्स नहीं देना है. हैवॉक का और कोनान का देखो अल्ट आने वाला है, तो अगर उन लोग मार देते तो फ्री ऑर्ब्स मिल जाएंगे, इसलिए सेव हो रहा है. फ्यूरिया को ए काफी पसंद आ रहा है. अगला राउंड वो लोग यही करेंगे क्या वापस? बी पे 2 जन बी पे एक खेलता है और मिड पे एक खेलता है, फिर बाकी के ए जा रहे हैं. फ्यूरिया 2-0 जीतेगा. ओके. ओ भाई अजबाऊ, हारने वाली टीम चले जाओ प्लीज. क्या अजबा है घर के अंदर सनग्लासेस क्यों? क्योंकि मैं एक स्टार हूं ना ब्रो, मेरे आजू बाजू में काफी लाइट्स है. देखो ना, ये डॉज बहुत इंपॉर्टेंट था वो जेट का. मैं तो ब्लाइंड हो जाता ना, खपची हो जाता. चलो यामीर जी का मैच कैसा लगा? लवली ब्रो, लवली. आपने ट्वीट नहीं किया? किया मैंने. आई लव यू बेनकाई करके ट्वीट किया मैंने. For MIBR, they feel like it's going to be a hit again from FURIA. Looks like a bit of a default though as the spike goes back and forth. And yeah, this push towards A ramp may sort MIBR back to more default defense, but definitely a different look. I love that call because that's that conditioning we just talked about. Those I love that call. I love you. क्या खेल रही है यहाँ पे अभी फ्यूरिया? बी ए पे साउंड देके वो लोग अभी बी गए. भाई पूरा ये बी ओपन है बे, कैसे क्या? A retake for double duelist is just like hitting the site, so you gotta expect MIBR is gonna come flying through. Site is gonna be furious. They get a good plant and they'll get a good defensive setup. This is now on MIBR to be able to take the round as Seekers go out to give FURIA an idea of how much time they have. 3 जन हेवन से आ रहे भाई. बिग नेट भाई, सीधा उसके पैरों के बीच में फटा है. भाई मेरे को लगा काट लिया भाई. एक ड्रॉप किया है. ऊपर सिटी देख रहा है वो. नाइस ट्रेड. ओके जीत गए भाई फ्यूरिया. नाइस. ओ भाई ऑपर ने मार दिया. नेवर माइंड भाई, MIBR ने कर लिया कमबैक. भाई एक साइड पे है अभी भी. ओ भाई 1v2. भाई कैसे निकाला वो? खलील भाई उधर खेल रहा था ना, उसने अच्छा निकाला भाई. खलील नाम भी कैसा है ना भाई. Absolutely, and low buys, full buys. FURIA had gone A.
They finally switch it up to be right away with the numbers of MIBR having to rotate back. देखो इसने भाई पूरा गेम निकाला, क्या मस्त खेला ये। अकेला खेल रहा था उधर, मालूम कि एकदम पेशेंटली खेल रहा था भाई ये। क्या बात है भाई, क्या बात है, खेला है, गेम प्ले दिखाया इसने। भाई हाइप है वे, इनमें हाइप है। मिड पे अल्ट करते हुए ये सारे वीसीटी में हम लोग यही देख रहे हैं, जब भी वाइपर के पास अल्ट आ रहा है वो मिड अल्ट कर रहा है। अभी वो लोग वही डिफॉल्ट कर रहे हैं, ए के तरफ जो करते हैं वो लोग, दो जन, एक जन बी पे, एक जन मिड और 3 ए में। अब 4 ए आगे। खलील का अल्ट आ रहा है, आर्टिजन का अल्ट आ रहा है डिफेंस का, और माजिन भाई का अल्ट आ रहा है, लेकिन माजिन भाई खेल रहे कहाँ पे, बी पे, तो माजिन भाई के सामने कुछ एक्शन नहीं है। वो लोग बस ऑर्ब लेके निकल रहे क्या? ओ भाई, अबे क्या टाइमिंग। भाई फेंक देता यार, एक शॉट मार देता भाई। 3 जन रैम्प्स पे आया है। स्काई अभी भी मिड लर्क कर रहा है साला, क्या कर रहा है वो मिड पे? दे आर गोइंग मिड। क्या टाइमिंग कर दे रहे ये लोग, मस्त। मूली कर दे। But the commitment of FURIA is towards the A side. Bro, he almost hit the collide. Finally with a shot. Anchor in sight. RGL Meister still waiting patiently. Oh भाई साइट वाले का गेम है। Easy kills for sure. Bruh. 10 seconds left. Liatzi pretty much on an island. He was Round है भाई MIBR का। Round है। With the stars that he has and there's no way he could move in. भैया सेंटिनल वर्सेस क्लाउड का मैच देख के लग रहा है टेंस चल नहीं रहा। Give the round still for MIBR. एक ही तो मैच देखा है, उसके बाद में कहा देखा तूने कोई? अच्छा भाई मुझे वो लोग बैन करने वाले हैं, प्लीज हेल्प। तो भाई फ्रेंडली रखिए चैट। खेली से भाई, खेली से, मेजर खेली से। ओ भाई का टट्टू तो है। दोनों मैच देखा सेंटिनल का, अभी वो एक ही मैच था। But if Khalil can actually get into an interesting position, he may be able to prevent some rotations with a pit. भाई चापटी खाने वाला है जिस, ये चापटी खाने वाला है, मेरे को स्मेल आ रहा है। We didn't like going back to A just yet. In fans, I feel like You felt that, right? You felt भाई आर्टिजन कितना फॉरवर्ड आके मारा है। ओ भाई यार एक मारा फ्यूरिया ने डबल सैचल करके, लेकिन MIBR फुल पुश करके मारी है भाई। ओ नाइस भाई, सीटी से स्टेयर्स पुश करके मारा है ऊपर। डबल पीक करेंगे, बीमन क्लियर करने एंड दे डू इट। अकेला स्काई बचा है भाइयों, 1v3। अगर माजिन ने ये निकाल लिया भाई, माजिन को अभी कॉल करूंगा मैं। One tap baby, one tap. Save कर रहा है यार, माजिन सेव कर रहा है। That has not been seen Mazin by save कर रहा है MIBR भाई। did leave the one person in heaven out to dry, right? FRZ could not get out of the situation, just plowed right through, and FURIA waterfall into B for the first time. So really nice for them to break this out to the point where they could easily start to change the आपने game. कभी e-sports खेलना सोचा है भाई? खेला हूँ, सीरियस वाला खेला हूँ। See for MIBR's buy here if they keep all going down like this. So we should get another gun round. Seems like there's been so much money in this game for teams to go back and forth, and FURIA is just capitalizing on their post plants now. Every time they get it down, MIBR's had a really tough chance of getting back in. And you could start seeing it. Ardzine, both operas are starting to warm up. So this, as Ades was mentioning before, could be one of a very clouded match for this Battle of Brazil. For these two teams, where again the comfort comes in for क्या हो गया भाई? how to play against each other, and sometimes क्या हो गया भाई? you'll probably see like maybe the ऑपर वर्सेस ऑपर देखने मिल रहा है अपने को मिड पे दोस्तों। We love it. We'll take that all day. ये जंप पिक के लिए एंगल लगाया भाई, अगर जेट नीचे से पीक करके मार, ओ भाई व्हाट अ पुश भाई। देख रहे हो क्या प्ले था? ओ डिफेंसिव वर्ल्ड यहाँ पे स्ट्रेट अप रीड पे मार दिया। ये लेफ्ट चेक करेगा क्या?
that they have on defense, and it was a fake check. Khalil punishes him, but at least Artezine is still able to hold this. भाई एक पिक्सल उसने उधर देखा, मालूम क्या, 1 मिली सेकेंड उसने बस राइट देखा भाई, उसको पनिश कर दिया सीधा। भाई क्या गेम प्ले यार, क्या गेम प्ले, चुम्मी रे चुम्मी गेम प्ले। A double jump out just behind the defensive wall to get Decade running through. FRZ dodging some shots behind the map, trying to bait out the rotation, trying to bait out the peek from screens. ओ भाई अंदर घुस चुका है बे वो स्काई। I mean, there's only 2 left. स्काई कुछ कर सकता। Oh my God, he missed the shot, bro. But lands the second one through the smoke, allowing Conan to go for the backstab. Easy kill. Nice kill भाई, important kill दिया। ओ भाई Towards the air, the updraft, it misses. They bump against each other. They swing out, and Conan gets the trade to tie up the game. They did bump into. Oh my. That was what a round. That was chaotic. Bye, Mustafa. But I commend Bye. Furia for the patience. FRZ was not moving behind the screen, but Furia didn't try to do anything too crazy. It did not cause them to make Yuvraj an bhai, error, shout out. and it was to wait for the shots of MW Zera to connect. They don't miss भाई that much. आर्टिजन ने निकाला है राउंड बे, आर्टिजन ने निकाला है He राउंड। picked up the rest. Artisan trying to do the same, but it is not enough. Furia almost. अरे भाई क्या हेडशॉट दिया है आर्टिजन को उसने। Able to make an opening that allowed it possible for Conan to move around and get that backstab, and the rest. Economical round है यहाँ पे MIBR का। Now at 5-5, we'll get our first positive Usakale, for MIBR. उसकले It makes sense. As we mentioned before, they were really good at dictating the pace against C9 on the defensive side, and it almost felt the पौजा same होते here. हुए यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले MIBR यहाँ पे दिखाती हुई फ्यूरिया लोगों की फैन फेवरेट है। लोगों को लग रहा है फ्यूरिया 2-0 जीत जाएगी आराम से ये सीरीज, लेकिन MIBR यहाँ पे ठान के आई है कि वो काम 25 करके ही जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेम प्ले दिखाती हुई MIBR डिफेंस में, लेकिन जाने के लिए तो ये देखना होगा कि क्या जब साइड स्विच होगी तो कुछ कॉपड़े कॉपड़े करके दिखा पाएगी MIBR। अभी तो इकोनॉमिकल राउंड है। Looking at a strategy that would just shut down the jet op too. I feel like just focusing at that. VCT Pacific. See it, and then avoid भाई it VCT अमेरिकाज में VCT coming down Pacific to. दिखा रहे। 10-9 right now. Late storm up for MW Zera. Operator still in hand, and it seems to be the reason that Furia is able to get so many openings in these rounds. See again ओ towards mid. भाई अगर ये डिफेंस में राउंड निकाल लिया ना, मिड ही ट्राई कर रहे हैं भाई फ्यूरिया। Usually you don't see any पिक्स के लिए रुके, पिक्स के लिए रुके कि कोई तो पीक करेगा। but almost every time now they're going to push up, and again havoc. फ्रीज भाई मारो एक वन टैप। ओ नहीं मार रहे भाई, इन लोग को पहले ही दिख जाता है भाई, सब लोग ही हैक करते शायद इन लोग में। ये लड़का अकेला दिख गया यहाँ पे बस स्काई को, तो अकेला ये खेल रहा है स्काई, अभी बस क्रॉसिंग देखेगा वो। वो पूरा गाँव ए पे जा रहा है फ्यूरिया का, अभी सिर्फ अकेला वाइपर स्पॉट हो गया था, इसलिए 4 जन बी पे। देखो अब भी समझ रहा है इसको कि पुल अप हो रहा है, पुल अप हो रहा है, हो गया पुल अप, साइड मिल गया। Clean into sight. Happy to get some of the ultimates, or at least hear them on Furia's side. Furia's ready to lock Sentinel this ले down. वैसे 100 टी कब है? 6-6:30 बजे। Low buy. They're going to have to be behind each other here on these trades. For shots. So Furia knows भाई ये मरने वाला है, ये मरने वाला है, हैवॉक मरने वाला है। ओबे स्मोक अच्छा है बे उसका, खेल लिया अच्छा खेल लिया। But that gets denied by a couple of utility on the attack. The pivot back towards A, having to Oh, try to drop nice. down. RGL gets a nice shot onto Havoc. क्या ये कमबैक रीटेक होगा दोस्तों? अल्ट खोल दिया भाई अटैकिंग स्काई ने, अभी तो चांस। ओ माय गॉड ब्रो, Nice shot. Seekers, at least from Furia. भाई क्या शॉट दिया यार वो जेट ने, MW जीरा ने। क्या शॉट दिए ला भाई, They don't have it anymore for Furia, but we have money on the defense. क्या शॉट दिए ला है। And we have a Yop back out. That might be an opportunity. भैया आपने MIBR की साइड हुआ और आप पता नहीं, A lot of those ultimates हम will तो come बस now. मैच देख रहे। A few frags to go down, but we should have the हेलो buys दर्श, we need for both teams here एक coming into 10 this. Yeah, एक से that 10 came में out से so एक नंबर quick. सिलेक्ट करो। Just like 10। that. Yeah, हेलो right? अमन The भाई। headhunter pop. Exactly. Oh my.
All right, let's see where this goes. Looks like, okay, so they were Oh, nading up on Khelraay. that balcony. Now we're gonna put a Viper bite up on the balcony when they hit the site, so nobody can peek out. A lot of times, even if the smoke goes up there, you can still get retaliation. Here as the Trailblazer goes through. कुत्ताते हुए. The wall blocks vision. Double Duelist wants to fight though. Ardzine activates the dash, but they both miss. Both Duelists do not get any value on that push. चूस लिया. Both denied. Big भाई क्या flash. blind Mazin था. just trying to stay alive for a bit. Showstopper misses, but NW0's on the भाई other पहला side. वाला blind So the बहुत double अच्छा था duelist यार, at least on दोनों the attack fully side blind of थे. Furia opens लेकिन up वो the smoke sights. ने घान कर दिया. Even a pit, this is gonna be good luck, have fun for RGL and FRZ. भाई टट्टी ऑपर है. नहीं वे. One of the last rounds we see. लास्ट राउंड वाइपर लर्क कर रहा था ए पे और उसके इन्फो मतलब उसने अच्छा खेला ना, वो लर्क वाले वाइपर ने अच्छा खेला, इसलिए वो लोग ए पे पुल अप कर पाए. अभी कुछ रीड रहेगा उन लोग का, इसलिए वो उसने पुश किया था. 2 डुएलिस्ट ने पुश किया था और दोनों मर गए भाई. एटलीस्ट ट्रेड ले लेता वो, ऐसे उस भरोसे वो गया था, लेकिन भाई दोनों को भर दिया. Adaptation from Furia. By playing a little bit more कॉन्ग्रेचुलेशंस, passively आप against MIBR 10 रैंक्ड rounds मैच and हारने वाले हो, सीधा प्लेट just से punishing ब्रॉन्ज. MIBR. रिपोर्ट कर देता हुआ ऐसे लोगों को मैं सीधा. You've waited the whole time towards A heaven as you walked in, you get hit by a dog. That's हैकर. the way, or you miss the trip Hacker. and you just walk right into it. Yep. It caused so much time. 7. ओ हाफ हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया. मैं सोचा भाई ये सेव क्यों नहीं कर रहा. भाई लोग हाफ टाइम हो चुका है. फ्यूरिया यहाँ पे लीड पे चल रही है. अभी हम लोग को देखने मिलेगा कि Making ये देखो कैसा openings पुश there. पे मरे ये Furia लोग. wasn't finding otherwise and able to take MIBR apart to get those 7 rounds. MIBR with a fantastic start, not allowing even plants to come through. Well, now, at least let's toss it back. तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे भयंकर गेम प्ले चलते हुए 7-5 ये स्कोर चल रहा है. ये किल जाएगा टरेट यहाँ पे दिखाते हुए और हमारे प्यारे प्यारे कास्टर्स. सॉरी. तो जैसे कि आपने देखा कि हाफ टाइम बहुत ही बेहतरीन चल रहा है. फिर मेरे को देखना है कि अभी MIBR अटैक कैसा करेगी, क्योंकि डिफेंस में तो MIBR ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. लेकिन विषय ऐसा होता है ना ताई कि डिफेंसिव मैप है ना स्पिलिट, तो MIBR ने इसलिए शायद ज़्यादा लीड लिए लाई यहाँ पे. लेकिन विषय ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अभी फ्यूरिया मजबूत कमबैक करे और फ्यूरिया ये मैच जीत जाए, क्योंकि डिफेंसिव मैप है. 1 out of 8 retakes, 13%. MIBR struggles to defend the sides in opening half versus फ्यूरिया. ऐसा बोलते ठीक है. It felt like for a little bit, MIBR had a solid understanding of their early round protocols, but then the mid to late round, the retakes were just not there. And honestly, Furia, once I figured it out, they were और just भाई मैं doing the same स्टेडियम में हूँ thing मैं भी. every round. Apply a little pressure on one side, you're going to bait out those flashes. Late round, you hit a site with double dive, which especially when आज your no opponent नींद, is no offering नींद and आज. flashed off the line, it's really hard to hold on भाई to. एक राड And बुल मिल clean जाए out भाई, those post एक fights. राड बुल The मिल thing जाए is, अब भी though, मेरे को this नशा हो goes जाएगा. both ways. We also have a solo Sky. Well, I was going to Double ask duelist because, on you for know, Furia. tables turn, right? Because Yes. now it's going to be Furia's problem to solve here. And how do they do that? How do they figure it out? भाई Opponent has टेक्निकल to be so डिफिकल्टी चल careful रही है क्या? about नहीं when नहीं he's नहीं. using his utility and Yeah. communicating with his team. इतना रात में when भी he's हेट flashes, देने आ रहे what लोग. space कौन they हेट get कर रहा है off भाई? of that, and needs ए to make sure हेटर. he is being conservative in his use so they don't get ran over in these retakes as well. For viewers at home, pay attention to how that Sky can impact this one, especially in the retakes. We'll see how it pans out. And send it back over to Vansili. जितने एस उतने मेंबरशिप गिफ्ट, जितने एस उतने मेंबरशिप Thank you, गिफ्ट. GB, पक्का. Mimi, and Athena. Yeah, indeed. I mean, तो अभी जो that's 2 a एस हुए terrible उसका stat for MIBR. 1 of 8 out of retakes, and I think they bring up a great point. The Sky. Maybe Oh, that's why sakali, you kali, oh, see that sakali, pressure kali. out for MIBR on the defense. We'll see if Fury is going to try to do the same thing because they know how little utility they would have on these retakes. Quick peek. Liazzi back with the stars. MIBR यहाँ पे पुश कर रही है भाई. ओ भाई दे पुश्ड आउट. Different. Definitely for MIBR. देखो द एंट्री, लेकिन मॉली से डाउन हो गया भाई. खलील मचा रहा है भाई, पूरा क्लीन अप कर दिया. फ्यूरिया ने फुल बी हिट किया भाई हेवी. As you try to funnel through, I think one of those They should have- Sentinels missed, so we had a great अगर suck coming out from the ये eye. फ्रिज थोड़ा लर्क कर रहा है तो आई गेस पता नहीं कुछ तो रहेगा स्ट्रैट उनका कि भाई MIBR पूरा घुस जाएगी, फिर फ्रीज लेट आएगा. बट दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कि भाई हमारा पुश वर्क करे.
Expecting ठीक this है, double duelist to ठीक है। explode immediately. मेरे को समझा नहीं उनका एग्जीक्यूट कैसा था। Round of their own, so we've traded Rad one Bull to more you, now. अरे सूरज भाई, Was able to come up with the round thank you last यार time. for the Rad Bull। I mean, look at this Love you positioning as भाई, well, love right? you, Even love if you। MWZ got picked off there by RZ. खतरनाक भाई, खतरनाक। idea was Rad there. Bull We Gaming saw those SYT। those double dive style of MIBR going towards this orange area. You had players being placed behind where that distance would be if you actually double dash through. Thank you so the much pillar, सूरज so भाई they for were the able to 120 रुपए। minimize the space Rad here Bull that in my MIBR जेब। could take. Oh, quick peeks. अब एक ब्लैक कॉफी पीऊंगा ना भाई। Rad Bull में शुगर होती है। IV go gym। 120 रुपए की अभी कॉफी पीऊंगा ना मैं। और यहाँ पे फ्यूरिया, ओह फ्यूरिया जीरा, MW जीरा यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, इसलिए वो लोग अभी मिड ट्राई कर रहे हैं। उन लोग को दिख गया है कि बी मेन पे एक मार्शल है जो कि वन शॉट कर सकता है उनको, क्योंकि उनका इको राउंड है। तो वो लोग अभी मिड पे साउंड देके, बी मेन साउंड देके, मिड साउंड देके अभी ये जा रहे हैं। अकेला एक जेट देखो अटैकिंग का बी पे लर्क कर रहा है। अगर उसका लर्क वर्क किया ना भाई, मजा आ जाएगा। ओ भाई वो लर्किन कर रहा है, वो लर्किन कर रहा है भाई वो। मम्मा, oh he got him bro, damn. But they know it's A, they know it's A कि जेट सिर्फ लर्क कर रहा है। I don't know how they know it, but they know it. Bro what? What? That's absurd. भाई बाय क्यों नहीं किया हगासे ने उसने? 30 seconds left. And now within the ropes, the Marshall drops a right click classics again. FRZ 3 in the round. MIBR यहाँ पे उनका इकोनॉमिकल राउंड जीतते हुए 1v4 है हैवॉक के लिए। उसके पास एक बुलडॉग है जिस भाई लो है। Gets chaotic. Whether or not stock's going up on the glitch pop pistol. For sure. That's crazy. For sure. Planted now for heaven. Havoc last player standing and realizes that there's nobody trying to get the last pick. Understanding Spotted that him. they are on this eco for MIBR. You have to play those protocols that they were good with in that matchup yesterday. वो अच्छा फ्यूरिया लीड पे है। मैं बोल रहा था भाई MIBR लीड पे। सॉरी मैं नशा कर रहा हूँ थोड़ा। एनालिस्ट हमारा नशा कर रहा है भाइयों। In favor of MIBR here. जमा Havoc just Jama. trying to potentially even build up Jama. to जवानिस्ता catapista। for FRZ. Wild that they're able to take that back. 3 on it and then a headshot as well to Link take it the armor करूँ। off with Havoc and an absurd amount of damage being done with a classic in 1 round. Yeah. The pistols are on fire today for both sides, it seems. And yeah, that's one of those I wish I didn't situations. As RGL comes up with the last one. Nicely done. They flipped the script on नहीं रे सूरज। working here. A Marshall there still for Liazzi on defense though, so they may be able to. फ्यूरिया कैसी खेल रही है आपको क्या लगता है? फ्यूरिया अच्छा ही खेल रही है, मतलब इतना कुछ इंसेन गेम प्ले तो नहीं हो रहा है, मतलब पता नहीं यार, शायद मेरे को नहीं समझ रहा है, बट बैक एंड फोर्थ हो रहा है गेम। भाई बीमन पुश्ड अप है भाई ये फ्यूरिया का प्लेयर। ये इको राउंड है फ्यूरिया का, राइट? उन लोग अपना बाय हार गए थे, अभी इको राउंड है। ओ भाई वो पुश करके चापटी मार दिया वो FRZ को। स्मोक से पुश आउट करके सिटी से कैसे मार रहा है भाई बंदा? Support from hell denied both of them by MIBR. Has Havoc upgraded a rifle and has a showstopper? Does he want to do this? They called potentially the HP remaining on the rest. They're definitely on an eco. Try to do something. मेरे भाई दूसरे अकाउंट को बैन कर दो, अनबैन कर दो प्लीज। ओके ब्रो। Definitely seeming more comfortable in his play and his positioning. पैसिफिक सो मच मोर एंटरटेनिंग। ये पता नहीं पैसिफिक भाई एंटरटेनिंग तो है, आप कुछ भी बोलोगे पैसिफिक की भाई मजा ही है भाई। अभी ये सारा अलग ही मजा है भाई पैसिफिक में। सेम भाई मेरा भी। कितने जनों के अकाउंट बैंड है भाई? The potential of that round was huge. As soon as Havoc got that frag, कर दूंगा मैं, काफी जनों को अभी अनबैन करूंगा उनको। The whole team can just focus in onto what's happening at B. However, FURIA realized they needed to act fast as well. ओ मैं तो चढ़ेया तेरी ऊपर। Jesus, he coming around, so very interesting stuff. Both teams reacting well and adapting to the speed they're putting up for each other. Maybe towards A. Double duelist hit first time for MIBR here, but it's just going to be towards ramp, gaining control.
satchels instead of a dash, so the Rays taking control up towards A heaven. Meanwhile, the rest of MIBR dashing in somehow a shot from Havoc outside the window. There wasn't a smoke for the heaven side. MIBR wanted to challenge this. As they do so, 3 players up atop. Plan is forced to be safe. A push towards the spawn decides otherwise. Zardazine is just trying to reposition. They're waiting. It's like, can MW get लोग काफी जनों को किया मैंने. the activation? Otherwise, it's as soon as काफी जनों को अनबैन किया. Just heard a snake bite come out. I'm pretty sure that was one being thrown towards the main, slowing the pace as if they heard a flash. There's that peek towards the spawn. अभी देखो अगर हुआ तो ठीक नहीं तो फिर बाद में. 2 shots with the wall bang out towards screens. Now they have a perfect position for MIBR on the pulse plan. MW0 cannot move in with his teammates. वे आवाज बहुत कम था, अभी कोई बताया नहीं. MIBR, after winning that thrifty on that eco, ties up the game. Wow. टाई हो गया भाइयों. One of their 8-8 main हो गया. goals, I MIBR think, का of comeback win भाई conditions is to साहब. figure out how to shut down MW0, right? You have a guy अबे ये who's attacking map है क्या? basically glass Attack cannon में and मचा रही भाई and teams. is a reason that these rounds भाई can मेरे be को shut लगा तो down. मतलब So the faster they get मेरे inside, गेम the में तो faster they भाई set up, कैसा है ना. the less भाई work माजिन भाई मार रहे MW0 यार. can actually do. माजिन भाई ने Exactly what कोलैट मार दी Rock उधर. wants to be able to hold the forward angles. It shuts down fast pressure play. Somebody comes flying around भाई the ये corner, ऊपर हग one रहा है. shot. That's not what टाइम आउट आ गया MIBR फ्यूरिया का found. भाई. It's the good तो smoke, good जैसे कि control, आप and लोगों ने Fury's gonna be देखा calling a timeout here ये to see कुछ how they can राउंड्स में right this. मुझे घंटा कुछ समझा back नहीं कि in their क्या favor. हुआ क्योंकि मैंने नजर ही नहीं दी. Yeah, I mean, तो they have ये that राउंड के showstopper एनालिसिस before तो we मैं saw दे on नहीं the सकता screen तुम here लोगों को, available for लेकिन Havoc. ये They wanna try स्टेज to do some जैसे sort कि of आप trap देख play सकते here. हो ये It's a good स्टेज funnel. If you put एस्थेटिकली MW0 एकदम in a good चुम्मी रे spot. चुम्मी चुम्मी रे चुम्मी है. Actually, he lands some ये shots and लाइटिंग्स adds that मेरे को pressure बहुत ज्यादा पसंद आई onto है. MIBR. और There's यहाँ पे an opportunity to रेड बुल बड़े बड़े रखे हुए हैं हमारे प्लेयर्स के लिए क्योंकि वो कभी भी अगर उनको डुलकी लगी तो एक रेड बुल से वो उनकी सुबह हो जाएंगी. ये टेबल हमने खास बनाया है झगमग झगमग लाइटिंग के लिए और हमारा स्टेज बहुत ही प्यारा. जी हाँ यही आज मेरी एनालिटिक्स है. आगे बढ़ते हैं हम अगले हाफ की तरफ. चल ऑर्डर कर रेड बुल. पागल है. 5v4s or 4v5s and pistols, all even in how they're playing against each other. Like I said, and the scoreline 8-8. The only thing that's different here basically is the buys. The economy is switching up a little bit. Let's see what they can do as we now get into round 17. This is just the first of this series. Neither team wants to go home on this one. And look at this. So they have NW0 playing solo with that off, so they do want to try to go for this funnel potential. Absolutely. Look at that stack you have. A safe spot from Havoc. Season A के तरफ है भाई फ्यूरिया के. So this is an important shot to land right भाई ये here. किसी का बाय नहीं है सिर्फ एक ऑफ है फ्यूरिया पे. ये ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है लेकिन वो ऑफ शॉट मिस कर दिया उसने. हैवॉक के पास अल्ट रीटेक के लिए Look how fast rotations which come I over. feel There's वो gonna be invest alert for करने वाला है. FRZ. Could be a nail in the coffin if he can get behind enemy lines. Dog is going to see चार जन सीडी से आ रहे हैं. This off Havoc for JZZ on the other end. Shot by NW0. An opportunity to come through. There's the showstopper. Oh coming my up God, against by another Mazin. runaway. Oh, flash out huge here from Mazin to try to get a spot, but cannot get the shots. Stars coming down, a flank from the back. FRZ does connect onto Liazzi as the players are slowly falling down from Furia. They realize this, potentially just try to save and protect NW0. Have the other two do some damage. It works out at least onto FRZ. 3v3 Hope this scenario, back bhai. down for Furia to attempt to go for a retake if they want to. And it starts off with the ऑफ jump एक spot on लिटरली the फ्यूरिया attack. पे अभी Spotting ऑफ. one, the double ओ drop. भाई he spammed him. To Mazin. Oh well played. 1v1. He tried to save it but RGL from the भाई pillar. साहब क्या राउंड था यार. क्या बैक एंड फोर्थ राउंड था ब्रो. क्रेजी क्रेजी राउंड. The 1v1 at the end. Honestly, the MW was trying to get out of there, but भाई वो when I साइड से saw दो मारा ना four वो players ह्यूज of थे भाई. Furia huddling in towards Sands, ready to Huge round, pile huge through, round, and भाई, the crazy Kickoff shit. Mazin's guiding light in the face. That is one of the oh no moments. They finally But the spread sad out, thing get into is a कि अभी situation, but डिफेंसिव MIBR डिफेंस पे ऑफ नहीं है भाई. ये दो किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. on this Oh what a round. shot. Understanding Furia would try and sprint back into the site. Straight W. Headshot मारते भाई सीधा ये लोग. MIBRs, they are going quick. It's a plant the bomb, win the round type of game. Who can get back in and get the retake? It's up to ओ Furia भाई now. फ्लैश करके Holy फोड़ने का moly. ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे. RGL Meister operator was with him और last सिक्योर round. किए उन लोग ने और सिक्योर किया और वो लोग पीछे आ गए. No operator now for the side of Furia. It has been such a focal point to get that weapon in the mix. That's a great call from Azim with the operator because of MIBR's
comfort to go for the double dive. And when you have a Sky in the back trying to run all that util first, you get a plant for example, B main where they're inching towards. He could actually play the op on the post plant. So MIBR needs to waste this utility that's being posted up towards his B site. भाई इनिशिएट करने के लिए कुछ यूटिल नहीं है शायद. दे आर प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स ए. बस बी पे साउंड देने आए वो लोग. खलील भाई तो एकदम शांति से खेल रहे हैं. मिड साउंड देके दिल गो ए राइट. Oh my god. Gonna foil the first step of the attempt of map control towards Spike अभी भी B की तरफ है. But they won't go B, right? Okay, they are planning going B. Oh, भाई क्या एंगल लिया था भाई वो लियाजी ने. हाँ, this round is Furia's. RGL in contact against Liazzi, still at the 8 HP, being a pivotal point as an anchor. ओ भाई 2v2 आ गया बे गेम. Have to move quickly to pick up the spike. FRZ does भाई वो so. कैसा भाग रहा है देखो बीमेन की तरफ. So a plant will potentially bring out a pit. बीमेन का कॉल तो है. To give it timing here for Conan. और एक सीटी का भी आवाज आ गया है. सीटी का भी कॉल आ गया है और भाई व्हाट अ गुड अल्ट. कैसा सीटी डीप जा रहा है भाई वो अल्ट. दैट्स सुपर गुड अल्ट. इंपॉर्टेंट किल. ओह नाइस. अभी लास्ट बीमेन है. Out to MW0. Blade Storm still available, not popped yet. Has a Vandal in hand. Both the players of FRZ and Mazin holding together, trying to keep this pit up, keep the pit alive. There's मॉली नहीं है उस पे. Trying to find a timing to walk forward. And it's Mazin to try to bid it out first, नहीं. just to keep the pit up. There's that first kill, but the push comes out from FRZ in the end. Bro, अगर उसका स्प्रे ट्रांसफर कनेक्ट होता ना वैसा. MIBR able to still get through on that round. It almost looked like it got way too chaotic and overcooked. We had JZZ go down, and then Artazine was just, I'm going by myself. Let me try to fight everybody. And you were just like, wait, team's still in it. But no, they recouped. भाई क्या गाना है यार वो माया भवानी. सुनो भाई कभी. क्या वाइब है. भाई एक ब्लैक कॉफी शायद लगेगी मेरे को. मेरी आंखें है ना ऐसी हो रही है. ऊसकले. और यहाँ पे हमारे एनालिस्ट है ना बहुत थक चुके हैं दोस्तों क्योंकि बैक टू बैक उनको आना पड़ रहा है. लेकिन गेम प्ले बहुत ही हेवी चल रहा है. जैसे कि आप लोगों ने देखा फ्यूरिया बहुत डेंजर खेलते हुए, लेकिन MIBR भी कभी पीछे नहीं हट रही. एक राउंड फ्यूरिया जीत रही है, एक राउंड MIBR जीत रही है. और ये हमारे फेमस सिंगर स्टीव आउकी आ चुके हैं मार्केट में. बहुत सारा भाई सब क्या क्राउड है यार. नशे से चढ़ गई. ओ एक क्राउड यहाँ पे सब लोग फ्यूरिया की तरफ से एकदम सीरियस. किसी के मुंह पे कोई हास्य नहीं. लेकिन दोस्तों इस गेम में हंसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेम आपको हंसी से ज़्यादा डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा देता है. और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भाई नाच रहे हैं. बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे थे सब लोग. तो राउंड चालू हो चुका है. अभी देखते हैं. Last 5 post plans have been successful retakes for them. Like that's kind of crazy with how fast Furia is getting in the site. We still have. अरे सूरज भाई विषय ऐसा है कि अगर मैंने अभी रेड बुल मंगाया ना तो मेरे घर से मेरे को है ना घर वाले मेरे को रेड कर देंगे. To let Furia plant right now. They're not worried about the extra money because it just seems like they have such a read on how to retake right now. Mid gets taken over. See if they can force the hand of MIBR to head just to one of the side sites and deploy that double duelist comp. What a gamble. Right now they have a lower buy. They went ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब भाई मतलब 4-player stack on the A site. उससे अच्छा बोलेंगे सो जा ना. अगर नींद आ रही है तो सो जा. इतना क्यों खुद को स्ट्रेच कर रहा है. यही बोलेंगे ना मम्मी तो यही बोलेगी. एंड मेरे को खुद को भी पट रहा नहीं है. I should rather drink black coffee than Red Bull. And look at MIBR. क्या हो रहा है मैं I was lost. 3 जन बी के तरफ पीछे से खेल रहे हैं क्योंकि बाय नहीं है. ओके फ्यूरिया का बाय नहीं है तो इसलिए वो लोग रीटेक खेल रहे हैं. एंड बी पे कुछ साउंड नहीं आया इसलिए वो दे जस्ट वेंट ए. दे आर जस्ट गैम्बलिंग आई गेस. अभी अकेला एस्ट्रा और वाइपर है बी की तरफ. दैट्स अ गुड अल्ट टू पुश इन. एक और राउंड फॉर फ्यूरिया. इजी साइड मिल गया यहाँ पे MIBR को. लेकिन अरे भाई अगर कनेक्ट होता ना भाई ये शॉट नशे हो जाते. भाई का बाउंसर स्मोक यहाँ पे.
Round should be coming in here for MIBR unless a miracle happens on the side of FURIA. Both players split off here, one towards screens, the other one towards the ramp. Liazzi was able to get one. But FRZ has been so good on this. मैंने legit अभी 4 रेड बुल वाले 2 पैक मंगाए. जब आपको समझता है ना कि भाई क्या-क्या विषय होते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ पे फोकस करना प्राइमरी बन जाता है. And another successful post plant for MIBR. और शुगर कट करने के बाद है ना भाई, शुगर खाने का मन नहीं करता. ऐसा वैसा विषय होता है, शुगर इनटेक करने का मन नहीं होता. लाइक मारिए दोस्तों अगर आप नहीं हो तो. It looks like they're playing to the Big Bang Gaming YT. I'm not actually Thank sure you for the how sponsor. MIBR keeps getting that in their favor. They are holding the angles and just taking FURIA down. All right, 11 to 8. Welcome to the Power Gang. Punished here. Liazzi's walking away. Shoals not to clear out the space. That's going to land. No more stars to deny the push. MIBR का 11 score है भाई. For MIBR. This will be a huge round for MIBR. A bit of a gap on a smoke that was red in the first place, but That's a big mid flank. That's a big mid flank, bro. No one's expecting him. Player advantage. The backstab. Habit just got caught. MIBR का round है ये तो. I mean, this is too That's a good here for 1v2. Okay. 1 versus 3. Ult है इसके पास. Okay, 1v3 है. Conan, the IGL having to decide at this point. Do I want to use एक my B में है, seekers एक CT है, एक side है. Sees one, here's a plant. Oh, that's a match point for MIBR भाई. Map point. Absolutely clinical for 7 rounds in a row. हर्ष भाई गुड मॉर्निंग हर्ष वैसे भाई नेक्स्ट जी का मैच जेटा के साथ है. क्या लगता है कौन जीतेगा भाई? आई एम एक्साइटेड बिग बैन भाई. मेरे को पता नहीं कौन जीतेगा, बट भाई T1 जीता जेटा के अगेंस्ट भाई. Predicting the rotations, predicting the positionings, and it's really डेंजर चल रहा है भाई, डेंजर चल रहा है मैच, मतलब डेंजर चल रहा है टूर्नामेंट. And we are definitely seeing a bit of a change in effectiveness for MIBR's. चलो भाई, कोई तो बोला था MIBR जीतेगा तो 50 गिफ्टेड होंगे. चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ. But slowed by a flash, and that was a teammate. चलो यहाँ पे क्या सीन है अभी? Azine trying to do that to create यूरिया that का space, बाय तो है अच्छा. allowing the both duelists once again to work together. This time अल्ट्स यहाँ पे वो कौन 4N उसका अल्ट है. Sometimes it's slow. This time it's quick for the past 2 rounds. Nice. Havoc close range with the judge, but both duelists are there. Do they know the crossfire? घूम के मार They do दिस now भाई as they सब try to आठ go in दिन to ने. push forward for MW0. The off shot missed. Furia has Heaven से B जा a रहे. leading chance. A little light here. Will they 3v4 है दोस्तों, connect with another? 3v4. Still sticking together. क्या फ्यूरिया Utility ये राउंड there. निकाल के Guiding They'll light stay in the coming game. for Artisan. no one has any ult loading up. There are 3 people on heaven Just and they are break trying to anchor on the go sights, and Fury is CT. ready to re-rotate off of where Liazzi and MW0 दोनों are. एक दूसरे को चेक करते करते CT तो जा रहे भाई. अच्छा Now they pretty much know where they hit. CT से B जा रहे हैं. Oh my god, वो लोग बस अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ब्रो, but they don't know कि ये ऐसा फ्लैंक आया है. B साइड वाले पूरा फ्लैंक करके हेवन आ गए हैं. The 2 players B that pushed all the way out. Oh my Just god. waiting for the walkout. Oh my It's god. easy. Oh. Free falling forward around for What a MW0. clean spray transfer Furia भाई. finally get around in this half. What a It took clean while. spray transfer भाई. That And was the so 3K nice. Just kind of sneakily waiting for MIBR to waltz on in. That was one of the slower rounds, and it gave a chance for Furia. माजिन भाई हर्ष को छोड़ के e-sports चले गए. हाँ ना बच्ची, Take a bit of a breath and understand what may be क्या happening. क्लीन today. किया ना उसने. Too little, too late. Still, the question we have to ask: 12 to 9 here within reach, though. 12-9 हो गया भाई. Still a bit of money to work with. Only a low armor buy here from MW0. चलो ऑफ नहीं ओके नहीं मैंने मेरे को लगा ऑफ निकाली उसने इसलिए ऊपर चढ़ा है, पर कोई नहीं. And defend on. कौन 4 भाई पे अभी भी अल्ट है और आफ्टर स्केल रहे. Looks again just to pressure heaven here. So nothing on Oh, the no. left side of the map. MIBR goes straight back to the A hit. अल्ट खोल दिस. MIBR Once again. के आर्टिजन साइट में आते हुए और भाई भर दिया इतना Third round इजीली. in a row, this time Full towards 1v1 the duel side. लिया भाई. Mid to A. भर दिस One उसको. round No after the flash, next. no कुछ का Plan है. attempted for heaven. It will be successful, but Furia is चार्ज एंड all हेवन से over the रीटेक A कर रहे हैं भाई heaven. फ्यूरिया A के. dog to clear down the ramp. A crossfire set up from GZZ That's a and good FRZ. crossfire. Stick fight does not connect. So they can stay deep Full now आएगा, until these stun smokes आएगा, come out. flash Recalls आएगा. the Oh, peek he out. peeks Conan and he gets the dies. pick onto Low तो GZZ. किया है यहाँ A पे. battle on the other side of the map towards screens. A 3v3 as a heal comes up 3v3 from है Conan. भाई. Still no utility left now for the retake of Furia. And the crossfire is there for MIBR towards the back of the site. Clock is still ticking down. nice. Pressure is coming through for लो Furia कर दिया है बे as काफी. this
once again, it's अगला still बाय match नहीं आएगा point शायद for फ्यूरिया का। MIBR. Artisan staying within all these नहीं smokes. आएगा। Tap on the first spike, and that's pretty much it. Conan was trying to watch the top for his teammates. आएगा फ्यूरिया का बाय, लेकिन आई गेस हाफ बाय आएगा। It's down. The spike goes ओ जीत out. गए, ओ नेवर माइंड, MIBR take the first map. नेवर माइंड, जीत गए। अरे मैं क्या सोच रहा था फिर भाई, मैं थोड़ा नशे में हूँ, कॉफी लगेगी ना इसलिए। चलो कोई नहीं, जी तो हो गया। मैं बोल रहा हूँ भाई अगला ये हर्ष भाई अभी क्या कर रहे हो उठ के? अभी मैं उठ के मैच देख रही हूँ। हो गया मैच हो गया, मैं मैच हो गया। कॉफी पी ले, हाँ। एक कॉफी पानी में गई। चबा ये 2 कॉफी, पानी चबा। It's time for chat up flags. Kusale com. वंश भाई थैंक यू फॉर द $3 हर्ष भाई आप स्ट्रीम कर रहे हो और मैं काम पे जा रहा। भाई वहां पे कितना बजा है वंश भाई अभी? थैंक यू फॉर द $2 बेबी। घन घन दुनिया बजे करके माखने मजे ऊने जब करे मैंने गंजी चाई तू मान भवानी। भाई यार ये स्ट्रीमर है ना मेरा फेवरेट है, फेवरेट। अबे हाँ 50 गिफ्टेड कौन बोल रहा था भाई? चले भाई ला, चले भाई लोग सब लोग ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे कि कौन बोल रहा था 50 गिफ्टेड। 50 गिफ्टेड कौन बोल रहा था, जल्दी बताओ। वीसी और टाइम पास करते तब तक। वीसी हम लोग देखेंगे चेटअप। कन कन दुनिया बजे कन के मांजनी मजे। एपिक ब्रो कीबोर्ड आने वाला है। बाकी दिस इज माय गेमिंग चेटअप। पैसे जोर के बना है पॉकेट मनी से। ओ भाई का प्रोफाइल पिक्चर देखो यार, शीश ब्रो शीश, झगमग लाइट। भाई मैं भी ऐसी लाइट्स यूज करता था अपने चेटअप पे। आज शाम में स्ट्रीम करोगे? हाँ आज वैलोरेंट लाइव स्ट्रीम इंडिया होगी। मैं वेटिंग में हूँ, ड्रैग कर सकते हो क्या? नहीं ब्रो। सर्वो वेरियर क्या बोल रहा है? सेंटिनल्स और 100T हो गया क्या? नहीं, ये होगा 6:30 अभी। बजे 6:30 बजे। तो तू करेगा स्ट्रीम जब तक? हाँ ओ मैं भाई। वेटिंग में हूँ, ड्रैग कर सर्वो वॉरियर। हाँ चले सर्वो भाई, चल आंदे मेरे भाई आंदे। वंश भाई बोल रहे हैं 10 बज रहे हैं सुबह के 10 बजे ऑफिस क्यों जाता है भाई? मैं ऑफिस अगर जाता ना तो मैं सुबह 9 बजे टच होता। ऑलवेज ऑन टाइम बेबी। तेरे को ऑफिस में रखता कौन? भाई मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हुआ, मजाक से हटके बहुत ज्यादा। वो तो है भाई यार इतने ज्यादा स्क्रीन्स भाई, क्या बात है। वेरी नाइस चेटअप, वेरी नाइस। भाई इसका कीबोर्ड देखना क्या भारी लग रहा है। वेरी नाइस चेटअप। क्रिसमस हो रहा भाई इसके कीबोर्ड पे तो। क्या हो रहा है? क्रिसमस ट्री बन रखा है पूरा। है ना, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। लेकिन क्या भाई इसके पास 2 मॉनिटर है, एक CPU है और एक इतना अच्छा लैपटॉप है भाई। और क्या चाहिए लाइफ में? 2 वाओ स्क्रीन्स और। भाई ये भी कितना क्लीन है भाई। भाई बड़ा मोटा माउस पैड चाहिए, समझ रहा है? बड़ा और मोटा। भाई ये भार्गव का लग रहा है, ये कैप लग रहा है क्यों कैप लग रहा है मालूम क्या तेरे को? क्यों? भाई ये आइकन्स देख के भाई भाई इतना गेमर कोई नहीं है यहाँ पे, बहुत रेयर होते हैं भाई इतना गेमर्स। मतलब जिसके जो एक भाई साहब एडिटर भी हो, ठीक है, और भाई आई मीन सारे बेसिक गेम है। अबे CS:GO घंटा है, GTA है। ग्राइंड वाले गेम्स है सब। अवेंजर्स भी भाई ने लेके रखी है। अवेंजर्स जो बंदा लेता है ना भाई, समझ जाना चाहिए वो गेमर है। मतलब उसके पास पड़ा हुआ है पैसा।
कुछ भी ले सकता है वो। ये कौन सा गेम है? ये रोब्लॉक्स है? हाँ भाई ये तो रोब्लॉक्स है भाई, ये तो रोब्लॉक्स तक खेलता है, ये ओवरवॉच तक खेलता है, ये वैलोरेंट भी खेलता है। नहीं भाई मैं नहीं मानता ये भाई, ये घर का सेट इसका मतलब भाई ये भी खेलता होगा। रियल हाँ, सेटअप है। ओ ये वही भाई है, यहाँ से हाँ 10 बजे ऑफिस को उसका छोटा भाई उठ के खेलता होगा गेम। हाँ बे और वो ऑफिस से आके इस पे चलाता होगा अनरियल इंजन, फिर 3ds मैक्स का है, हाँ। माया वगैरह। यस। बैडी नाम है इसका, बैडी बैडी। कॉमन है एक्चुअली, अगर एक गेम में एम अच्छा है तो इजी है सारी गेम्स। सही में पता होगा जिसका अच्छा हो एक गेम में एम, मतलब। मेरा तो है वैसे। डार्की भाई का सेटअप भाई साहब नाइस। भाई ये ऐसा जब लगाते हैं लैपटॉप ऐसा स्टैंड पे तो कुछ क्लिप विप लगाते होंगे ना, तो सो दैट वो आगे गिरे ना। वो नीचे से होता है, लाइक नीचे से थोड़ा उठा हुआ होता है तो स्लाइड इन करके डाल देते हैं। हम्म। कुछ क्लिपिंग लिपिंग नहीं होती, बस रख देना होता है। केला खा रहे हैं लोग। Picks up the win, and it's because of bananas. Let's go. They're back, baby. Welcome Kela power. everyone to VCT Kela America. power, As we look to babies. break everything down for Kela that game power. we just saw on Split. It was a 13 to केला भाई फोटोशॉप चालू कर दी। हाँ और 5-6 फैंस, माँ कसम भाई 530 फैंस यहाँ पे, इधर 3 इधर 3 इधर 3, लेट्स गो। और ऊपर से पानी में चलता हुआ कूलर। भाई इसका ग्राफिक कार्ड इतना छोटू है। वाओ भाई ये है एक मूवी एंथुसियास्ट। भाई उसका ग्राफिक कार्ड छोटा नहीं है, उसका कैबिनेट बहुत बड़ा था। ऐसा है क्या? नहीं भाई ग्राफिक कार्ड छोटा लगा क्या, वटा वटा। भाई ये देख, इसने इतने सारे पिक्चर देखी है। अच्छा आधा तो हैरी पॉटर लगा दिया है उसने। तूने देखी हैरी पॉटर? हाँ देखी है पूरी, मैंने 10th एक के भी नहीं देखी है इसमें। भाई। भाई फन है भाई, बहुत फन है, बहुत क्रेजी फन है, बहुत क्रेजी फन है। 10th की छुट्टियां थी ना तभी देखी थी भाई, किसी ने मुझे फोर्स करिए किया था, देख 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 देख, तो मैंने देख ली थी। भाई क्या कैबिनेट है यार लोगों का। नहीं ये तो कैप है भाई, इतना शेयर लोग कर, नहीं यार, ये तो कैप नहीं है। स्क्रीन शेयर कर, मेरे को डिले आ रहा है बहुत। हाँ भाई क्या प्यारा है भाई, क्या प्यारा है भाई। साले लोग ए यार ये देख भाई, लाइक अगर नहीं हो रहा है ना भाई तो बता दो अभी, मतलब क्या इतना रात में देख रहे हो और किसी का भला नहीं कर रहे हो भाई लाइक वाइक करके। भाई सबका कैबिनेट ही बहुत अच्छा है। किसी का? हाँ ना भाई, देख ना इसका कैबिनेट देख, इसका कैबिनेट देख, इसका कैबिनेट देख भाई, सबके पंखे माँ कसम, सबके पास इस डेंजर डेंजर भाई सेटअप आ गए मार्केट में। ओ अबे इसके पास पेट रहेगा ना बे भाई, पेट रखना है भाई घर पे एक। अरे तेरा वो हो रहा है ना, रेनोवेशन वगैरह होगा ना, उसके बाद हम्म। पेट रखियो बढ़िया, एक प्रॉपर एक एंगल बना दे, एक नया मतलब कैम लगा के, छोटा सा अबे वेब कैम, लेकिन पेट एंगल। लेकिन बस ये है ना, क्या उसे कहते हैं, उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना ब्रो, और मैं खुद का ख्याल नहीं रख रहा। बिल्ली पाल ले फिर। वही बिल्ली का ही बोल रहा हूँ भाई, बिल्ली खुद पालनी का है फिर खुद का भी नहीं रख पाएगा फिर। है ना। ओ भाई साहब, भाई के ग्लास है रेडी, भाई फुल वाइब में भाई का यार लैपटॉप, लेकिन बहुत डेंजर है। एक सेकेंड भाई, इसका माउस और कीबोर्ड देख, और इसका लैपटॉप से नो महंगा है फ्रिकिन वे भाई। भाई, उसका हेडफोन देख, उसका हेडफोन, माउस और कीबोर्ड लैपटॉप से महंगा। भाई मुझे जानना है ये क्या है, ये ऐसा क्यों है भाई, क्या आप गिव अवे में ये सब जीते हो भाई? क्योंकि लिटरली उसके लैपटॉप से ये सब महंगा है भाई। भाई बताओ यार, चैट रुका हो आपके लिए। हर्ष भाई ये ऊपर मेडल आयुष लगे का कि गाड़ी की चाबी है? क्या बोल रहा है? ऊपर मेडल्स हैं कि गाड़ी की चाबियां हैं? गाड़ी की चाबियां भी है नहीं। हर्ष भाई ये आयुष का टाइम आउट हट गया गलती से,
आर्यन भाई ने दिया था गाली के लिए, फिर से कर दूं या जाने दूं? हैं? जब भी जाने दो, फिर गाली बकेगा तो मैं देख रहा हूँ, हाँ। मैं भी बकूंगा। हेडफोन 15,000 के, हाँ ना भाई। भाई इसका हेडफोन का स्टैंड भी है ये, मतलब इस हेडफोन के साथ स्टैंड तो नहीं आता है ना? नहीं नहीं हाय भाई, उसने कुछ डाला नहीं यार, किसका है? भाई, इसने लिया है ऑल्टो और उसने बहुत सारी वो मॉडिफिकेशन करा दी है। बड़े बड़े अलग अलग बना दिए, चल रही मेरे पर से चल लड़ रही। रहा है वो। अरे तो रिप्लाई क्या है भाई, सबको रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता है। ब्रीज है भाई अगला। भाई ब्रीज पे देखने मिलता है यूरू भाई, नहीं अपने पैसिफिक में मिलता है वो। अब पता नहीं वो लोग खेलेंगे कि नहीं। भाई वो आइजू करके है भाई, भाई T1 का आइजू, ऐसा कुत्ता बनाता है ना भाई। अभी सबसे अच्छी टीम कौन सी चल रही है? भाई पैसिफिक में ना हर एक टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर एक भाई। बोल ही नहीं सकते कौन सी अच्छी टीम है। भाई पेपर एक्स को जेंजी ने हराया। हम्म। और भाई उस दिन कल कल था ना वो तो मैच? DFM भी कल बहुत क्या अच्छा था? खेल रही थी। जो सबसे टट्टी टीम थी ना भाई पैसिफिक में, वो टीम भी अच्छा खेल रही थी। भाई जी हम्म। ने ब्लीड को हराया भाई। एक दो तीन भाई साहब, ये है भाई ये गेमर तो है भाई, नहीं गेमर नहीं है भाई, ये ट्रेडर। ट्रेडिंग वाला है, सारे चार्ट्स देखता रहता है। माई चेटअप। जी जीतेगी एंड शट अप दोज पीपल हु से जी ऑलवेज डिसअपॉइंट, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया, या ही रिप्रेजेंट्स। गेस द रैंक। ओके उसके अनसब्सक्राइब नहीं किया उसने, तो भाई ये बंदा है तो वैसे सिल्वर है। ठीक है मीमन अच्छा है। 10 से, हाँ आज 10 होएगा ना। इस बार लग रहा है VCD से VCD चैंपियन निकलेगा, होप सो भाई, होप सो। VCD पैसिफिक से चैंपियन निकलेगा। ओके भाई माउस पैड की जगह डर्मिकूल पाउडर यूज करो, मक्खन चलेगा। आयन से गोल्ड आने वाला हूँ, इतना मक्खन चल रहा है। भाई कैरम बोर्ड पाउडर डाल इससे अच्छा। भाई साहब भाई, क्या क्या भाई, हैवी हैवी भाई हैवी। ओ भाई 5 मिनट में माउस सेंसर की ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई इसका पेट है, इसको मैंने कैट बोल दिया था। भाई लग भी रहा बिल्ली जैसा, वो बैठा ही वैसा ओ है। भाई क्या प्यारा है यार भाई। भाभी कैट्स पसंद आने लग गए। हम्म। शिट। ए भाई इनका गैप बहुत बड़ा रहता है, जय आयला इनचा। कॉफी पी लेना जब तक। अभी तो स्ट्रीम, रुक रुक मैच चालू होएगा तब बनाने जाऊंगा। ओ भाई वॉच देखते भाई का, जूम मार के। डिसांटे वॉच। भाई ये HMT का कोई है डायल, वो वैसा बड़ा रहता है वैसा वाला। भाई वो गोप्रो वाली एलईडी रखी है ना इसने, देख क्या देख रखी देख। है? वो गोप्रो पे अटैचमेंट लगती है ना एलईडी की, देख। हाँ हाँ ये ये वाली ना, हम्म। ये वाली वैसा ही कुछ तो लग रहा है। मोटी नाइजू, बातचीत। नाइजू। और भाई भाई ये है खरगोश। ये है खरगोश। भाई क्या है भाई ये। भाई ऐसा कुत्ता घर पे होगा ना ले ले भाई एक भाई, पेट। मैं भाई मैं फिर इसको कुत्ता बोलूंगा ही नहीं भाई, मजाक से हटके मैं कुत्ता भाई इसके लिए। हर्ष भाई मैं तो टीवी पे देखूंगा, लेट्स गो, क्या बात है भाई। सेटअप देखो ले, ओ भाई
इससे होगी पैरों के बीच में गर्माहट, समझ रहा है? 12 ईयर ओल्ड के लिए अच्छा है ना, बहुत अच्छा है साले। ओ भाई माउस कहाँ रखता है ये? डिस्कॉर्ड लिंक खेलता आया, कैसे एक्सक्लेमेशन होगा? डिस्कॉर्ड। क्या बोल रहा है? खेलता कैसे होगा ये? वही ना भाई। एक हाथ एकदम पीछे, एक हाथ एकदम आगे। ओ भाई चालू हो रहा है। But we also did see gaps get exploited at times. I think that's less likely to happen here when they actually have a sentinel, when they have double initiator. But Khalil, he's damn good at finding those gaps. भाई Well, पता है let's see मेरे how को, this is all अगर gonna अभी play डिस्कॉर्ड out. पे It's कुछ time होने for लगा है, number तू two अगर to सिर्फ get स्क्रीन back शेयर on भी the कर रहा है ना, field. फिर भी ऑडियो आती है पूरी स्क्रीन की। हैं? हाँ मेरे को अभी भी आई थी तेरे उसकी, तू जब तक चेंज नहीं भी किया था ना तब भी आ रही थी। मैं कल परसों से देख रहा हूँ, लाइक मैं प्रीव्यू दिखा रहा था ना किसी को भी वीडियो का, ओ तो ऑल्सो screen शेयर भी करना सिस्टम पड़ रहा है। ऑडियो। ओ भाई ये तो सिस्टम हैंग वाला मूवमेंट ये है। मस्त कर दिया भाई इनने। थैंक यू भाई, रिवॉल्यूशनरी अपडेट बाय डिस्कॉर्ड। नाइट्रो के फालतू चीजें करने से अबे लेकिन करने फिर के तेरा लिए। आवाज रिपीट हो रहा है क्या तेरे को? बोल कुछ। नहीं, हेलो हेलो 1 2 3 नहीं आ रहा। Oh, boy, system. They were hitting him hard because they knew he wasn't hitting the shots and he wasn't getting his positioning right. एड्स बंद की लेकिन Absolutely, and नाइट something खेले रे। that'll definitely weigh on him. Probably अर्श not भाई worried about it गेस too द much. रैंक में Team's क्लिप भेजा है, behind him, देखो he देखते knows what देखते। he can do, but MIBR, Finally a good content from will Discord. start focus if they Discord? can find again that they do see a कब weak का आ point गया था for ये the सिस्टम? match. हाँ क्या Furia तुम्हें versus बूम रहा हूँ MIBR भाई। with Furia starting on defense now. We're on to Breeze. मैं बूम रहा हूँ। MIBR goes for the attack. भाई Fully अभी spread फ्यूरिया out. 2 Furia राउंड्स is 2 गेम्स pushing जीतने up वाली है to get to that फटफट, line of 2 scrimmage मैप्स। and push it forward even more. Classic तो किसकी MW, साइड the है, walk फ्यूरिया down. की? नहीं भाई, In मेरे को the तो middle, MIBR no जीतना Yuto to चाहिए help him क्योंकि out, सब लोग only बोल his रहे हैं own फ्यूरिया dash. जीतेगी। And as it dissipates, at least he creates that space and holds it. Look at the number of defenders of Furia up towards middle. And they चार just heard जन that मिले run भाई। for sure. Not knowing RGL would have the spike, but MWZera definitely heard footsteps. Artisan Liati waiting on the other side of this wall, so they hear Liati's first movement. This is an interesting call right now, though, A take कर because रहे हैं। FRZ heard Khalil jumping back and forth on that shoulder, yet still wants all the players to rotate. भाई अकेला inside सप्रेस the हुआ है side एमएन for a पे। hit. Where Furia, we just mentioned, they have a full stack on middle. आर्टिजन उधर हॉल्स पे होल्ड कर रहा है टू गेट सम मोर इन्फो आई फील, और वो लोग अभी पुश कर रहे हैं। ओके You still want to go for a split on the A side. Both initiators here for MIBR. The rest of the team follows भाई through. बहुत जन है इसके फ्यूरिया के यहाँ पे। Still they got one. Havoc once again, who better on Oh. that right side, picked off at the Oh. shrimp pyramid. And now Oh. a wall bang from FRZ, that lurk play coming out, allowing MIBR to even make भाई it a निकाल 5 लिया versus भाई 1. राउंड So, फिर भी। yeah, my bad for क्रेजी questioning MIBR. क्रेजी 50-100 जन थे लेकिन वो मिड लर्क ने निकाल लिया। Figuring out what's going to work best. The patience there once they did get up really far 10 seconds helped left. them suss out that Furia was also taking a few Spike planted. steps out of bounds. And now it is up to Liasi to come back and get in spike range, at least get a bit of chip damage down possibly. I mean, हो there's no गए हम option कहा for even फ्री to में take देखनी है, off. कहाँ से डाउनलोड करूँ? They'll end this one out. Nice round by MIBR to read and not have a full committal right off the bat. Feels like they had their homework done on the fact that, yeah, MW0 would be pushing down mid, looking for an instant fight. फ्यूरिया प्रोनाउंस करते सब फूरिया है, फूरिया। They Okay. split right off from it. So pistol round going over. 2 on the series for MIBR. भाई इसने निकाला है राउंड, ये जो आया ना पीछे से भाई, Nice little spam. इसने राउंड निकाला है भाई। नहीं तो भाई 50-100 लोग थे भाई यहाँ पे Feels like साइड पे। MIBR is really carrying the heat from the first map to the second map. Absolutely. And with that, I mean, it's pistol round. You can't take too much from it based on the strategy used, but knowing Rushed Fury is grind that भाई, I comfortable don't to miss push, it क्योंकि मेरे को समझता नहीं था MIBR क्या will होता है। remember how deep they were even on that pistol. MIBR Cautiously pushing up here, attacking even A for this second again. round. They do wait a bit to get hit by the 0 भाई ये देखो point. ना क्या डिफेंसिव वॉल है, देखो ना वाइपर का Yeah, क्या that's a जीबी big है भाई time कुछ sharp. तो। You just wanted to make sure there was no Yep. pressure coming out in the defensive half or track play into a main. Easy ये for वाला them to wall pick कोई up north. Pacific They में wanna किया bring नहीं up ना the ऐसा। Mazine. So they could भाई potentially खाली have छोड़ दिया उनने a पूरा KO out on the पूरा। hill well for Furia, you could see. Gamble Yeah, कर रहे full भाई। stack on Yeah. B. They're setting up shop over here. Super patient from MIBR again. I think MIBR also has to realize Furia went ahead and bought like Vandals and whatnot into a low buy round on split. Oh. Won't be the case here, ओह but they are going to be able to upgrade to that Sheriff. Well, that Sheriff do a lot. It's in the hands of Khalil. भाई आर्टिजन भाई का ए से नहीं, नेवर माइंड, उसके साइड से कोई आ रहा ही नहीं है। Easy plan, even set up for a तीन full जन, flank, चार a जन flank आ quad रहे। flank coming up from ओके 3 जन Furia. आ रहे। As a leads for the attack, they push towards the spawn. And that's Artzine holding towards bridge.
Big knife on that flank. It's only going to hit one player. That's Mazin, who now is watching it. Has cover from his teammates, and smart for MIBR to wait within the site. Looks like they understood that the stack was there towards B when FRZ was pushing in. Oh, but ओ भाई आ still गया gets फ्लैंक an वाला opener, a backstab. छी भाई देख रहा नहीं है बेट कर दिया उसने I thought was there, but it wasn't. But at least for the rest, it is. Reassessing, repositioning. Ooh. MW0 gets the shot onto Artzine. Numbers are dwindling down on the Ui. attack finally as RGL is stopping the bleeding with the Guardian. गुड राउंड भाई थोड़ा महंगा राउंड था लेकिन निकल गया The round will still finish up in favor अगला of राउंड तो फिर MIBR, फ्यूरिया but जीत रही है क्योंकि इनके पास अच्छा बाई नहीं रहेगा I call that a W. 100%. अच्छा फ्यूरिया का था वो मेरे को लगा But that much damage from Furia with a slew of classics to take down 3 members of MIBR in the second round. That works out. Still, the extra money from Plant goes to MIBR. They should be able to fold into a few weapons, but we'll see this again. शॉट नाइस There was शॉट somebody watching. RGL was भाई वो there. 50 membership वाला वापस Watching आया the fight. Oh, that कौन wall है? came out. There was potential there. सर्वो वॉरियर ने Probably बोला था the ना reason 50 मेंबरशिप ओ Khelraay was हाँ able to squeeze through for that kill. ए गया चले भाई। सर्वो वॉरियर आन दे भाई लोग ये देखो ये आ गया सर्वो वॉरियर भाग रहे हैं But it does hurt a little bit. JZZ is going to be able to focus on the initiator utility, though. Both initiators you see focusing तो on the भाई utility. पहला फुल बाय अभी as the team pushes guns फ्यूरिया around का that. So you'll भाई see MIBR ने initiator util creating दो space वैंडल्स here निकाली है for ओके all those और वो weapons. दो पिस्टल्स पे खेल रही है Furia is happy Here. to set up D. 2-3 split. Now you have a push for MW0 and Halls to kind of get some audio cues. 3 जन मरे थे राइट MIBR के लेकिन फिर भी एक वैंडल आया है हाफ शील्ड पे Mirror ओके match it is. They're just Artisan waiting पे है for वो this utility to go off. Play within that window. Again, wait for 30 seconds or 40 seconds and then try to hit. Here we go. Chaos caused. Artine in. MW has a great timing on the flank. So as we're planning for the pulse plant once again on default, FRZ is pushing forward towards the staircase. A scan spot. भाई निकाल लिया ना MIBR ने ओ फ्लैंक ओ भाई व्हाट रिपोजिशनिंग भाई Spike planted as FRZ and JZZ are trying to play the lurk the ओ flanks. भाई मेरे को लगा निकाल लिया MIBR ने लेकिन भाई सब थोड़ा थोड़ी गेम प्ले Wins the 1v2 duel against the duelist. But then गुड Khalil राउंड on बाय that फ्यूरिया rotate भाई trades it वो right क्या back फ्लैंक आया to भाई Furia आर्जन against the defuse. The damage Arjun Furia बोल did रहा हूँ, इनका definitely कौन है? helps count into this जीरा from last round. MW Helps जीरा into this MW round. जीरा Definitely having the upper hand. क्या in डिसीजन weaponry मेकिंग to ना भाई pull off उसका this bonus and get पाट their पाट first मार के round भाई win in. साहब A lot of hits towards A so far for MIBR. I wonder if we Repositioning see the बढ़िया थी switch भाई from इसकी। Khalil हाँ ना actually भाई। change sights onto the other side. We'll have to Crazy। keep an eye on that as we check out the replay. Pop out of it back into game. It does look like they will NW start to switch ज़ेरा up how मारता they're है भाई। playing with Khalil. जीरा भाई The trips you can set up, the longer ones इधर now, डाल रहा क्या मेरा ये and A can get pretty disgusting. This goes here. If you start setting up वही तो little कैमरा things, डाला है it has to वापस be right here. दोनों ब्राजीलियन टीम्स हैं ना हाँ भाई कंप्लीट सबके ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं All right, towards A again. पूरी MIBR ब्राजील है very much starting together and relying on the utility from FRZ to keep their backs something they don't have to worry about. Gonna go fast. वाओ Pass for MIBR denied right away as Khalil was ADS down between the pillars. Knife comes out, he's suppressed, but MW0 is on and rotate from tunnel all the way within the A site. Support from Havoc on the top of the staircase. This is going to slow down and make things very difficult. चारों जन एम इन पे ही है RGL What a shot. It does so, but Havoc does get the pick on the आ गई भाई JCC फ्यूरिया before the wall came up. मार्केट में आ गई फ्यूरिया चलो अभी एक और राउंड है Ball is coming out. एक और राउंड है Furia in round number 4. लगातार 2 राउंड निकाल दिए हुए फ्यूरिया I love that we had the back shot from observers खतरनाक of Conan Gameplay. throwing up the drone, and it didn't even matter that the wall was there. You just saw all the shots coming through. from कास्टर्स Furia. पैसिफिक में है फुल मसाला Very nicely साला done. भाई इंडिया बोल दिया आज MIBR getting red मालूम on क्या that अमन? side take. क्या हुआ आज भाई गुड भाई इंडिया बोल दिया था मैच होने से चालू होने से पहले Really coming together on that. I feel like Furia कौन? भाई पीछे वाला देखना फोन चला रहा था जैसे सब चिल्लाए ना वो हैंग हो गया Nice to see them step up in the एक कास्टर MIBR रियाज as गुड they बाय इंडिया enter बोल दिया था 2 to तो भाई 2 now. फुल It's like जीत that गए low तो share उदास हो by गई रहेगी उसकी MIBR will split them up into a bit of a default strategy. ट्विटर नहीं खोलना See if चाहिए they उसको can 2-3 upgrade a दिन weapon. हाँ to भाई start off the round. उसको ऑलरेडी भर रहे थे Like for बहुत battle ज्यादा B, Khalil's gonna go ahead and set back up there with MW0. Conan droning all the way. नहीं यार सूरज भाई इतना कुछ एक्साइटिंग हो रहा थोड़ी ना है मैच में कि वो कास्टर्स कुछ हाइप करे Play the long range with the sheriff. And a headshot there. I think Normal- it's a normal ही हो रहा है। 1.5, so trying to find the right timing to push down in the holes while the rest of MIBR और अभी scaling up वैसे भी middle. किक ऑफ ही चल रहा Camera है तो should be able to spot FRZ soon if it continues to push towards the nest. There you go. Spot it. Cage comes up.
camera gets broken, and that pivots MIBR towards B. B ट्राई कर रही है फ्यूरिया, सॉरी Double MIBR. swing out from FURIA. That's not going to allow any split to happen, and already in an instant rotate from FURIA. Inside FURIA है भाई. from Khalil. FURIA, Execution FURIA. out from MIBR. Control towards the ladder. harshkhel with that push, that timing, that was perfect to get the kill. As unfortunately, though, his teammates are still dying within the B site. That's all a ruse here. भाई कुछ There's a दिखा दे rotate भाई, coming out from the खतरनाक से हेडशॉट. A great अरे यार. position from 30 seconds Liadzi. left. Might just stop everything. Not even need it. NWZero rotate all the way back. But And on this ego, the Shiko that you had for MIBR, they couldn't find. इंडिया की टीम है क्या इसमें? ये इंडिया का रीजन नहीं है भाई. Good job by ये बट अमेरिका हाँ है. not overreact on इंडिया से that. कौन सी Still ऐसी leaving कुछ anchors है across टीम the map. जैसे GA है, वो Big इंडिया ही frag बोल there सकते हैं towards उसको. double doors to क्या end the round. नहीं, वो पूरा अपना For one of रीजन the first कंसीडर beats we've होएगा seen ऐसे. winning power Region-wise from हो गया. MIBR. So FURIA adapting और किसमें really किसमें well, इंडियन seeing प्लेयर्स something हैं different. टीम जो खेल रहे हैं नहीं इसमें? नहीं, पूरे पैसिफिक में लीग खेल रहा है, सिर्फ एक ही इंडियन बंदा खेल रहा है. ग्लोबली स्पोर्ट तो इंडियन और गया, लेकिन तू इंडियन हाँ. प्लेयर का पूछ रहा है तो सिर्फ लाइटनिंग फास्ट खेल रहा है. Default setup, we move Cypher back to A. हैं बाकी सब कहाँ चले MIBR, the गए भाई? spike drop has been बाकी happening सब a little अभी, bit more here at the beginning of the rounds. नहीं है. Like, they think ग्लोबल NWZero esports की is टीम है gonna be सिर्फ in their पैसिफिक face, but at लीग least में. look for one of फ्रेंचाइज्ड those है ना वो लोग. beginning round aggressions that FURIA loves to do. Exactly, they like भाई to do मेरे that. को तो Always कोई putting अपडेट his ही ball नहीं है down इन सब towards चीज middle का. and putting NWZero अभी तो at पता भी this नहीं है कौन spot. सी When he has टीम an है op, कौन tries सी to push नहीं down है. even more, but this is just to watch the angle and allow a quick trade. This is why you have a passive play from Liadzi. भाई ये towards इंपॉर्टेंट Tom. राउंड है MIBR They're को, okay अगर with the instant उनको MIBR लीड or लेने any का है type of तो. attacker utility dump from B main. As long as they secure middle, this might help them even better for the retake. Havoc's freedom. लेकिन here भाई at Havoc AK really भाई allowed पे FURIA to अल्ट है. know, play back in B, look for the retake. This could get quick coming from MIBR. भाई उसको पता है वो फेक कर रहा है, देखना, इसलिए उसने छोड़ा ही नहीं. टैग हो गया फिर भी छोड़ा नहीं है मैंने उसने. So knowing that push not तो coming अभी from साइफर A, रोटेट कर FURIA रहा है. still should have a pretty good read on this as MIBR are going to crash into the site. The late lurk's They're gonna be pushing important B. from FRZ right now in the holes. Meanwhile, on B side, there is that hit out from MIBR, stopped by a Molly. Ooh, what a kill, भाई. Comes out on the Ooh, attack as they भाई, go Arzin, forward. भाई. Ooh, Arzin भाई, somehow team मारा. goes free. Instantly, all those players that were trying to hold back at least one anchor, the others playing the retake. Got denied भाई right KO away अल्ट by में the बहुत मोटा aggressive दिखता है, push इसलिए out of हेडशॉट खा लेता है. Arzin. Still looks like we're trying to go for it. And that timing that you have, the more Ooh, you're easy. waiting here, that backstab's about to happen. NWZero gets the भाई, pick from the Arzin ने window as he निकाल pushed लिया. all the way down. And FRZ finally meets up his teammates, but you definitely know that MIBR has the plant, and they're in a great position to tie up the game. अरे Trying to hunt him down. FRZ's already back towards his spawn. This guy's been running marathons around the map of Breeze so far. We would get the fight at least. Let's put MW0 down to 40. Artzine, what an addition to the squad of MIBR here. Oh, a few final shots as they will keep their Vandals here. I don't think they go back for another one, do they? Tempting fate. But yeah, look at his previous match. He comes out +6 on first kills, first deaths. Artzine does not fear being in the front. Will use that utility to great effect, and here starts off the round with a triple kill for MIBR to open the site. What more would you? Okay. Hello That King one we Edits, didn't good morning necessarily see Fleek. right away, but he does get one through the golden arches there, and it just makes it look too easy. Yeah, another day at the office. So great kills coming in. A quick round for MIBR to explode onto that B site. I have a Back cult again, BB. that spike drop. This time it'll be a double push coming in from Havoc, but MW0 is now at that long A position, or that A cave position. Right now, you can see FRZ's got a camera posted up to watch the push from the shop. So if he sees Oh, भाई वो this कैमरा double push देख out on जाएगा. A main, this might change the pace. Oh, he's for not MIBR watching to the move a little bit camera more for quickly. Amen. Oh भाई. Behind it. हम्म. Behind it. Great knowledge as well. There's a triple. ओके यहाँ पे तो At ट्रिप least है. for Havoc, ओ consider how भाई yes, yeah, that's a क्रेजी. mistake right there for MIBR. Wow. गोलमाल चल रहा है भाई. FRZ, that's their Havoc rather. That's the second time he's been. तो अभी वो put into हॉल्स चढ़ रहा है इसको मारने. So it's a contact play, a backstab kill that forces the hand of MIBR to add मरा. more pressure ओ in the B भाई site. क्या Havoc ये? continuing to lurk, the push forward. expect क्यों Gets नहीं the किया पीछे backstab आएगा? on the backstabber as FRZ falls. बहुत स्मार्ट खेला भाई, स्मार्ट खेला KO बहुत. Seems a looking good. lot more clean Yep. coming into today for Havoc. दो जन बी पे. And this is 3v5 gonna be more है. contact for MIBR as they're forced to walk in now with hardly any use. भाई भाई पर Made अंदर it आ through. गया.
Ardzine's low on HP, but one slipped across. टाइमिंग हो गया बे. The right angle. Spike is down. Mazine gets a pick, but कह रहा हूँ. to what use? It's out towards the A site, and all the players are split off, already positioned to just wait the clock out. Mazine and भाई Ardzine ऑफ will ऑफ save नहीं their निकाले weapons, भाई. फूरिया and की Furia पब्लिक. will retake the lead. ऑफ ऑफ निकालो जरा. छापड़ी छापड़ी करो. I cannot believe this series continues to be this close. Well, I can't नोवा फिर से between these two चाइना में squads. They ऊपर know each आना other चाह so रही. well, but just the क्या way it's नोवा going कौन है? down. Another quick trade from MW Zera to look and get that Blade Storm online for an upcoming round. This place is nice, but not Could nice have enough to dueling die Blade in. Storms as we Let's come leave into it this. at बिलबिली भी depending on what मस्त है. the हाँ purposes भाई. are. बिलीबिली तो ओपी गेमिंग है ना. Ultimately अच्छी. 7 altogether across the board. नोवा स्पोर्ट्स वो लोग This कौन could है? be a very explosive round. Hey, to help Harsh them bro, get looking back to handsome. moving Hey, to the always, right. A baby. mistake there. Havoc pushing up, like we said, he gained that space quite freely in A cave before, and that's allowing Furia to recognize where they need to be on ओ the भाई map. अल्टीमेट्स Really देख stop कितने MIBR. सारे है भाई. It's pretty telling when 500 Furia ultimate can है भाई get that MIBR space. पे. Yeah. FRZ was so focused with the camera to look down towards the other side of halls. that नहीं लेकिन है never ना thought that somebody हैवॉक was भाई ने gonna push 50 साल से अल्ट क्यों नहीं करा पूछो. But he'll never do it क्योंकि again. भाई उनको वो Definitely अल्ट now he ना knows. बचा के रखना था. जब जेजी अभी अल्ट करेगा So ना that's वो gonna be the important round that तब देखो वो अल्ट खोलेंगे. decides the fate here Oh, of MIBR boy. for the second map. Oh, To see how boy. Furia can push this to a third. And Havoc was continuing to find that confidence. हैवॉक भाई इतना He said he's not ज्यादा gonna do it पटेल ही again. नहीं मारने का Well, पुश करने FRZ का is हर not बार. gonna do it again to watch the camera, but Havoc thought that he could do it again for the backstabbing gets denied. Exactly. Good read though. Furia finally picking up on that and able to get a free kill right off the bat. क्या बोल रहा है यार जय? Pushing back. Ardzine already has Discord the exclamation Storm Discord up. डालो, वो वाला Able link to चालू get है. the uplink onto this double ping going out onto the side of Furia. It's going to be a ओ nice भाई hit here बी coming एंट्री from यहाँ पे इनको MIBR पता है कि बी पे setup. कोई नहीं है. With that hat, that ओ spots सप्रेस the हो गया side भाई. at the इसका back of ट्रिप the भी spawn. चले गया रहेगा. अच्छा That's a तोड़ दिया beautiful ऑलरेडी. knife being thrown by Mazine. Continuing खाएगा to शॉट deny ऑटोरिक. that utility that was वो set नहीं behind खाया. by जस्ट Khalil मिस. in the back of the site. It उल्टी कर दी. allows here क्या for फूरिया MIBR यहाँ पे to be रिटेक positioned. करेगी. ओ आर्जिन का No पुशी. trigger discipline. Ardzine's भाई ने Ardzine's भाई. Ardzine falls. There's only one player then the pit. अल्ट है भाई पे अभी. Comes back out. जेजी का अल्ट है लेकिन ओ हैवॉक मर गया है तो जेजी का अल्ट. Second ping's gonna come out, but he's not spraying. Stays नाच रहा है alive for a नाच bit, रहा tapped down to है 51. लेकिन कोने में है वो FRZ पता है. supporting him on the ओ lurk भाई to get 10 HP है ये. Khalil down. Advantage for MIBR. Hunter's Fury out on the attack all the way back towards cannons. खेल लिया वो, जीत गए. मॉली भी रहेगा. ओ माय गॉड ही गॉट वन ऑन 10 HP. Holds it down. There's no time. भाई left to defuse. राउंड है Last few भाई. players of FURIA already running back towards the archers, but MIBR भाई hunting him और एक down. मारा उसने. Conan trying to stay alive, but लीन here's राउंड भाई. FRZ नाइस. to cut the rotate. सो आल्ट Let's भाई. get the सो kill आल्ट feed. ह्यूज भाई. सो आल्ट ह्यूज. Stays alive. Wow. कॉफी नहीं बनाना भाई. मैच अच्छा चल रहा है बे. Gonna get really hairy for the side Like of मारिए MIBR. दोस्तों, Once like they put मारिए. the Viper ultimate down, I almost thought Furia was just going to encompass the ultimate and come in from every side, but भाई somehow साहब RGL ओपी finds गेमिंग a हो रही है. spot to ओपी hide. Nobody गेमिंग. can ever find हैवॉक him. भाई को है ना थोड़ा सा बेबी काम डाउन करना The पड़ेगा. whole time and not being able to find a वो single बीमन frag, पुश and एमन they पुश come कर रहे हैं up ना. only losing RGL वो एक frag. बार किया, A अभी great दूसरी बार hold से on the एक्सपेक्ट site. कर रहे हैं सब लोग. Really cool play coming अभी वो from लोग MIBR बेबी काम डाउन there करेंगे. for a पीछे से bit. खेलेंगे. ऑफ निकालिए यहाँ पे. 4-4. एमडब्ल्यू जीरा ने Finally ऑफ निकाली भाई. Now a slew of them for Furia to fight back with. Spike's going to go towards A. Havoc no longer pushing this position as Furia kind of bring that defense with Cypher back to A. भाई हैवॉक का पोजीशन बहुत अच्छा है वो. Did a lot to start for उधर से वो Furia. aim and A spot knife कर towards सकता है the क्या? elbow, a late owl drone, just to make sure that there's nobody towards the elbow. So they're guessing this push is अकेला coming सप्रेस from हुआ the है भाई. side. A wall दो bang जन to मिड get से the kill. एक Battle मेन inside. से. दो Balls मेन with से. one for the defensive side. Havoc anchoring the nice. A side, now alone. Two players pinching on the left side. At crap, the wall comes down. The time अरे माँ कसम. three in the round. Only one भाई left बहुत alive important for kill था वो. MIBR. That is RGL in a clutch. हगदीस भाई ने तो attempt 2v2 आ against जाता यार. Snake bite towards the back of the orange. Havoc low on HP. Trying to go for some pre-shots. Underhand flash. And now all they could do here is wait वो the डबलिया time. पिक. क्या Move प्यारा together. डबलिया पिक करते भाई. Wait for RGL to Jama. peek out. There's the high-low waiting for him. RGL's counting the bullets down the chamber, peeks out, and both of them run away. At this point, though, it's going to get very difficult here. 30 seconds left. RGL, can he pull भाई it off? utilize That's a जा रहे हैं rogue भाई, play अंधा for अंधा हो रहा MIBR. बेचारा. There's only Bully 24 कर रहे हैं seconds बेचारे left. को. On the first shot, the high-low continues. आह, It's good for Furia. भाई क्या 5 on the पेशेंस है round. भाई.
And Furia don't even play the retake. The quick shots from Havoc, the traps, or the भाई वो थोड़ा वीफे हो गया देखा कि नहीं तुम लोग ने and MIBR shut वीफे down अगर on the नहीं take, होता ना भाई and तो a few मजा आ more जाता members required वीफे नहीं after होना that चाहिए था to close out the round. Really strong stuff coming in from Havoc right now. Just भाई क्या aim है immovable भाई in these situations, even with utility flying over his head left and right. क्या aim है भाई Crazy stuff. Good cleanup by Liazzi and the rest of the team there as RGL Meister did his damnedest to keep that situation in their favor. Operator for MWZera now. They've been looking to get alone for that one throughout the game, and he finally has one in his hands. It's going to be a B hit with a Viper's pit up. Good call on the pit, trying to read that early. Not allowing the Outlaw to get anything done for MIBR on the attack. भाई ये Havoc का aim आ गया भाई अभी Over it. Liazzi keeps the pit up. ओए Gets a snake bite kill into RGL. There's the back. जमा Pushing towards Mara, the spawn. mara. Wow. MIBR only gets one out of that half bite that they've gotten. Doesn't really matter on the armor. 7-5 होएगा because Furia is looking pretty good on the money. They are. एक राउंड मिलेगा MIBR को कैसे दो मेरे को नहीं लगता लीड में खत्म करेगी निकाल लेगा That MIBR much. Still able to find a way into these sites, Full not even support. being deterred here by the Viper's pit. सेन का मैच हो गया क्या हाँ भाई इतना लेट क्यों आया तू यार Knowing MIBR. But I'm 15 now. I started earning. I do a little training. Can I take membership now, please? No. Finally broken away and giving themselves some padding. We were going almost tied game starting this first half off. Now, what last 2 rounds can MIBR? What can they do with that? Knowing there's an operator now for MWZera, a key अरे win condition. इमोन भाई don't. इमोन भाई क्या कर रहे हैं? Breeze being such a long range map. Why? Because MIBR you is going shouldn't. to have their utility to push MWZera off when they hit the site. And this timeout, भाई मैं सोया था ऐसा क्यों बोल रहे हो आप उठ गई अभी नहीं मैच नहीं हुआ अभी तक दोस्तों लेकिन हमारा एनालिसिस जरूर ये कहता है कि मैटर बहुत अच्छा हो रहा है मजा आ रहा है देखने के लिए MIBR यहाँ पे चॉम्बैक करेगी कि नहीं मेरे को जरूर ये देखना है और भाई ये इसका हाथ गर्म हो गया है फ्यूरिया के हैवॉक भाई का हैवॉक भाई अभी कुत्ते माफिक हाथ घुमा रहे शेकी शेकी एम है लेकिन भाई साहब एम तो एकदम मेजरिस्टिक कनेक्ट हो रहा है तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है top of the board, 10 kills and 7. Yeah. Doing his job and allowing here enough delay for Furia to go for these retakes and even his utility from the back of those staircases to really deny the pushes out from MIBR is his game's on point right now. And it's exactly the kind of recovery you want to see from a player, right? And as a Furia player, as a Furia fan. And I'm sure Havoc is very happy with himself too to be able to come out here and play this way the second time around. See if they can keep it up. Pressure's only going to grow here. ऑफ लगाइए भाई MWZera ने How passive they are for Furia and B just because they have इसको ड्रोन से पीछे ढकेल देंगे भाई in the shop. Middle's all. ओ भाई वो एग्रेसिव आ रहा है वो मार दिया भाई साहब MWZera got भाई that मार के pick भाग from गया that वो side angle, as we mentioned before. Like how deep that was. That's wall down. It's gonna be so hard for MIBR to hit a site. So they have to focus now. वो वाइपर रेड हो गई है जो सोलो कंट्रोलर थी Look too here after MIBR's time. भाई दोनों सोलो कंट्रोलर खेल रहे हैं भाई ब्रीज पे Traps, the more passive play. Havoc though to start us off. भाई इसका एम देखो हगरेगा Another headshot. And they're clean. Oh yeah. Last 2 guys, I mean, there's 44 seconds left. Everybody क्या भी एम कर रहा भाई वो 7-4 हो रहा है भाई वो for MIBR. This has to be a call to save for last. 7-4 incoming babies. Wild. You know, he is wearing his spectacles today. I don't believe Havoc was wearing 30 those seconds. this time around. He was just able to see through the game. रैड बड़ी चॉकलेट थोड़ी है हर्ष भाई दिला देंगे MIBR slowly getting hunted down here. माजिन भाई निकालो माजिन भाई आई बिलीव इन माजिन गेमिंग सुप्रीमेसी भाई लेकिन पीछे से वो हैवॉक आया देखो हॉल से गया राउंड गया 10 seconds This is left. important pushes. You have so much good money for भाई Furia. साहब As JZZ finally gets stopped ये भी by कनेक्ट Blue होने वाला था भाई लेकिन ये हैवॉक है ना भाई फील कर रहा है on that right side of your screen. There's nothing Last left for round before the MIBR. switch. Well, for Furia. हाँ ना भाई हैवॉक का भी है ना एम आ गया है भाई People are trying to say, hey, I'm वो going भी over नशे में 6600 for Havoc right now. Forced to buy. They may even start dropping themselves Odin upon other guns. And yeah, like you said, clean with these shots. And you mentioned earlier too how far back Furia is playing sometimes to receive these plays. क्या बोल रही मोहन भाई Know that there's going to be a few lurks from MIBR after MIBR does their rush rounds. You may see a round where we get Artscene or
FRZ lurking around. So FURIA's been adapting so well to which style MIBR brings to the round. Final one here for the first half. In and chaos as Artzine tries to break the crosshairs. That's an ult out from Azine. आर्टजिन भाई ने साइड यहाँ पे डैश करके प्लांट मिल गया है. चैट क्या ये 7-5 होगा या 6 नहीं 6 नहीं 7-5 होगा या 8-4. प्लांट तो बहुत इजीली मिल गया है भाई यहाँ पे MIBR को. प्लांट बहुत अच्छा मिला है भाई. वहां से लर्क अपना आ रहा है एल्बो से. फ्यूरिया का रीटेक शुरू. यहाँ पे फ्यूरिया ने 2 किल ऑलरेडी ले लिया है. 5v3 सिनेरियो. अल्ट खींच दी यहाँ पे डिफेंडिंग अल्ट वो भी टैग कर दिया है भाई. नो फ्रिकिंग वे इतना क्लीन जीत रहे हैं लोग. घंटा लाइनअप का मतलब है अभी. भाई क्या क्लीन निकाले फ्यूरिया ने भाई. ये वर्ल्ड भी क्या कनेक्ट किया है भाई साहब. ऊसा ऊसा हो गया भाई इनके साथ तो. ऊसा हो गया हाफ हो गया. अभी MIBR निकालेगी. चलो अब देखते हैं भाइयों. चैट तुम लोगों को क्या लग रहा है. अभी 7-5 हाफ हो गया बराबर. 7-5 हाफ नहीं 8-4 हाफ हो गया है अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन. 8 ऑन फ्यूरिया 4 ऑन MIBR. अभी MIBR करेगी डिफेंस. क्या ब्रीज डिफेंसिव मैप है. डिफेंसिव मैप है ब्रीज. क्या कर रही हो आप. Otsuka, everyone. Give it up. Otsuka has been co-streaming and has been talking to chat and has been here. I'm gonna ask you, how are you feeling right now? How do you feel like the game's going? I'm feeling very, very quite okay because I was a little bit nervous at the beginning, but I saw, oh, it's a MIBR. It's okay. I swear to God, every time I'm up here. Oh my God. So when you say it's just Sala. MIBR, I'm gonna need you to go a little bit more into that because you got if you said it, you got to dive into it. Now. Yeah, because I watched them play the off season in Brazil. We watched the Meg was off season champions and quite of champions, yeah. And they lost for a Brazilian tier 2, so that's okay. It's just MIBR. That's it. Just MIBR. Are there any MIBR भाई fans who disagree with that in अगर the इसकी audience? टीम को हराया ना भाई मजा आ जाएगा. That was not convincing. That was dead silence for like 3 seconds. All right, but I have to ask you, you joined FURIA in October 2023. How has it been being a part of the FURIA family? भाई साहब बोलता है भाई MIBR को tier 2 ब्राजीलियन टीम ने हराया तो भाई क्या टट्टी टीम है. अरे हगरे आप पहला वाला मैप हारा ही तो उनके अगेंस्ट. बज रहा है भूत बज रहा है भाई. पता चला जमा हो जाएगा. ये पता चला क्या मजा आ जाएगा भाई. ब्राजील में टॉप टियर बैंटर होता है. आ गया Right now. Just pick FRZ, guys. Just pick FRZ. It's just a MIBR, guys. Just do it, man. Just do it, guys. Come on. All right, everyone. Second day at work. Great work. I'm just going to toss it back to the distinguished gentleman at the casting desk. हग गई भाई. Please दीदी take it बोल away. रही है क्या बोल रहा है हगासा साला. Thank you, Liz and Otsuka. Liz, rather. And yeah, okay. Let's see if that's going to be the gameplay for FURIA. BR वर्सेस BR बहुत फन होता है. ऐसा है क्या. आज भाई आप WWE देखते हो क्या. पहला देखता था भाई बहुत मेजर देखता था. चलो भाई अब मेरे को है ना MIBR भाई फुल सपोर्ट. अभी फुल सपोर्ट MIBR को मेरा. चल भाई हुंदे कर सो. It's a win condition we'll keep track of for FURIA here. And भाई जेट लोग है ना हाफ शील्ड और ये ले रहे हैं पिस्टल. भाई दोनों को मार दी MIBR ने. ऐसा लगे क्या हॉल कंट्रोल सालो. भाई बहुत बोल रहा था वो. हाँ ना भाई हार ही जाए भाई. 2-0 ही दे दो. अभी गया वो उसने ही जिंक्स किया है भाई सबसे ज्यादा. At least for FURIA. his lurk. It's heard. It's spotted. ये मां कसम देखा ये इसकी गलती नहीं थी. उसकी थी भाई. Another player falls down. वो स्ट्रीमर की गलती थी Much भाई. damage being done against MIBR so चलो far. भाई फ्लॉलेस. And Conan's now last player ओ standing. भाई अच्छा एक मरा है. Gets dropped. चलो 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 It's FRZ. चलो भाई MIBR चलो. I mean Defuse here. गया फूरिया अभी. So focus to RGL. I think भाई the ऐसी Frags इसलिए ऐसा starting बचने का नहीं रहता भाई लोग third लाइफ में. points. The Viper just अगर बचते हो ना तो थोड़ा बेबी काम डाउन करके बचने का रहता है. इतना ज्यादा बजे ना तो ऐसा होता है मालूम अभी.
देखो See अभी MIBR control around with the Viper's pick coming up soon here. So defuse post plant success. 1-1 MIBR second half. Keep track. What's next? You're gonna have Havoc with the Sheriff, MW0 with the Ghost, just a little more utility and safety there. And we are gonna get the Outlaw Bulldogs, okay? Still pretty ऋषभ भाई decent थोड़ा buy from go MIBR easy. to keep some firepower अरे in their हाँ, ये hands, नई but गन भी not तो आई है, be Outlaw. too afraid if ऐसी they है. lose any of that arsenal. हाँ भाई आउटलॉ एकदम मेजर है भाई सब लोग ले रहे हैं मार्शल की जगह सेकंड राउंड में Comes in from Furia. ओह माय गॉड Good भाई timing. Fair I think enough. all he did was wait for the audio cue of बढ़िया the गन है. flash to get that और shot क्यों out ले रहे हैं मालूम क्या and सेकंड land राउंड में it क्योंकि onto थर्ड राउंड MW0. जो बाय Jump करते हैं ना spot from Azine, forced तो to अगर reload तूने that सेकंड took a राउंड long में time, तेरे but इको he राउंड में ठीक है does get the अभी pick up जैसे the field, फूरिया का trying to इको look राउंड towards है middle. अगर इन Azine लोगों ने continue to अभी push forward. He's एबिलिटीज ली है ना to Havoc, एबिलिटीज and ली है that's अगर really gonna foil the plans तो of उनका the थर्ड राउंड में attempt to surprise वैंडल के साथ the हाफ शील्ड defensive आएगा side of MIBR in the और A side. तेरा अगर तू ये राउंड जीत रहा है तो अगले राउंड में तेरा आउटलॉ कंटिन्यू होएगा Actually banking up to that operator if you Bonus really want में to think about तो it. भाई बहुत बड़ी गन है Economy for him. Also the Blade Storm Which- to come out. as स्क्रीन the को क्या हो रहा है saw him kind of just hanging out in mid last time where RGL कुछ टूटा found हटा him. देना. सॉरी 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 RGL चैट सॉरी considering that ये अभी again. ठीक है I अभी saw him ठीक है in mid शायद last time. Be ready for the lurk. Looks like Jay-Z. स्क्रीन को क्या हो रहा था ये कब से हो रहा है ऐसा Let himself getting pinged, and there you go. Easy tap. Converting the piss around. अभी नहीं होगा अभी नहीं होगा सॉरी सॉरी Already सॉरी has an सॉरी answer back. As they're moving in their bonus अभी round नहीं and होगा only अभी losing सॉरी one सॉरी player in वो the थोड़ा process. कैजुअल गेम प्ले हो रहा था मेरा ये राउंड हुआ ना ओके 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 I thought it was off the sound of the flash. He actually saw the player. भाई That's खेला reaction है time. यार I'm old like GB. खेला है भाई आर्टिजन Oh man. नाम क्या है भाई इसका कभी आर्टिजन बुला रहा हूँ कभी आर्टिजन बुला रहा हूँ So this is honestly you Arjun. would keep it because भाई Viper का Arjun नाम क्या है loves to इनकी? just snipe things, but Arjun really Mister. saving that economy for the भाई operator. क्या नाम है क्या नाम है भाई? JZZ With these weapons for bonus माजिन rounds, बढ़िया नाम है. हाँ no real upgrade माजिन ही नाम है necessary बाकी तो कुछ anyways. नाम भी नहीं है. Looks like it's gonna be एक a इधर 3-2 माजिन split if नाम they है can उधर make एक it to खलील tunnel नाम here है as well ढंग का as hit the बस site. बाकी है. MW0 has a ओ भाई pretty big हॉल drop डायरेक्ट branch पुश कर दिए ला भाई That pivot ये from बार कोई MIBR. They फाइट throw a करने recon आया ही नहीं dart इसको and हॉल्स didn't see में anybody and they decide to push all three सब लोग forward. बी के तरफ है Tried to सुबह को तो prevent इन्फो आ गया रहेगा भाई कुछ or really साउंड try नहीं to है go इधर for a ड्रोन fight, but ड्रोन maybe हो रहा they है saw the सिर्फ camera. Instead, Furia ओ भाई मिड से आई है फूरिया focusing पूरी on hitting towards this B site. Back at the site, this time the outlaw shot did not hit. FRZ in the back at Berlin. Recon dart does get a ping into some opponents on the other side for Furia. There's a camera actually, not a recon. अरे भाई सब Beautiful फट गया shot dart lands on to FRZ. जो गिरा है भाई वो As really for Furia, the protocol is to clear out the site before Yep. going for a plant. You know this is a bonus round for MIBR. भाई but Bulldog बहुत those प्यारी that गन do है have the better weaponry with the Bulldogs. ADSing for the shots finally connects, but not भाई, before RGL also तू fell. मेरा गेम प्ले Couldn't देखता है save ना his teammates. Recon in this site. Oh, NWZ eject. are pushing down. Player standing. JZZ felt it, but lost that fight. भाई फूरिया को राउंड मिल गया भाई लोग Furia went about this round. The side entry coming in from tunnels. 30 It seconds looks left. like they really took into consideration that MIBR lost FRZ. Plan नहीं करेगा क्या भाई आज? Switching but playing B with the Cypher, and that Spike Arjun planted. still had the outlaw. So if you actually start halfway through B and towards the back, what's ऋषभ भाई Arjun किसी gonna को do? रिप्लाई What's मत करो FRZ अगले gonna do? अगले 5 मिनट MW0 तक and the team explode in with the अगले 5 automatic मिनट नहीं bulldogs किसी को ही to रिप्लाई मत take करो down that lower buy. I think identifying that they would be covering B alone, or together, I should say. Just Mazine gets over under here. Havoc gets another one for himself. And 9-6 now for Furia as we move through our second half. That's going to be their bonus round. वैलोरेंट डाउनलोड करने के लिए उठा था पर तेरा स्ट्रीम देख रहा हूँ हेलो मेरे भाई तू डाउनलोड करने के लिए उठा है वैलोरेंट And लोग IGL, सुबह उठते हैं like पढ़ाई Conan वढ़ाई over करने here तू at वैलोरेंट Furia, you डाउनलोड करने definitely उठा है probably know that the op is coming if you're going Wow. to pull out an outlaw Right. that early. So what's the protocol coming back in this round? Round number 16 underway. Trying to flush out where the op could be. भाई MIBR को यहाँ पे टाइम आउट लेना चाहिए भाई टाइम आउट लो भाई प्लीज उनको डबल डिजिट मत जाने दो The op's going to be somewhere close. आर्जिन ने ऑफ निकाल दी भाई वो देखो ऑफ कहाँ लगाया भाई वो ऊपर Artzine's Mid playing पे। just like MW0 here. But as the knife doesn't see the ops, they're pushing in for an A plant. Yeah. भाई उसका एंगल नहीं दिखाया बहुत डेंजर एंगल लगाया वो How much cover can they get though? The great 0-point back. वॉल के ऊपर क्या? हाँ Was actually decayed there. Vulnerable by a snake bite. Easy kill for RGL. We have a 4-on-4 flank attempt. भाई स्पॉन पे वाइपर अच्छा वहाँ पे मेरे को लगा Missed a इधर couple of shots there, but still manages to get that pick. So he's set up for a pulse plant. ट्रेड फॉर Easy. ट्रेड
लाइनअप गेम प्ले Here for MIBR, 'cause Oh, they have हो good गया आप। position. ओ भाई ही स्मार्ट भाई ही स्मार्ट Shock dart misses. पहले ही उसने स्टिक कर दिया था हाफ So में there's that second one. So you know at least there was no support coming out from Arzine. He's really trying to save his op. Second Oh, shock dart. Oh wait, bro, he's they missed just it. won it. He's got it. हैं? No. The shock dart put him down to वाह 6 भाई HP. वाह मजा आया The assumption is that the Vipers और तो खेलो सालो और lineup- खेलो लाइनअप भाई इतना लाइनअप पे खेल रहे हैं ना पैसिफिक में तो इतना ज्यादा खेल रहे हैं ना लाइनअप पे सब लोग भाई वंडर किसको देख रहे होंगे भाई ये लोग नर्फ करने वाले भाई लाइनअप सभी भाई लेकिन सोवा ने देखा लिटरली जिगल करके That is insane by JZZ. भाई पर स्मोक भी था That is insane दो by JZZ. वो भी थे लाइनअप But- and और then you सोवा look at के the भी शॉट protocol. डार्ट्स थे नहीं नहीं How come after the shock वो darts that देख came भाई वो out देख here from the attack Why? side of Conan, why don't we just Why? push just to make sure towards A main? And System that hang, is भाई। definitely another mistake in this game on Breeze. That will कुछ भी था potentially भाई। not happen again. Now for Oh, FURIA, भाई कितना aggressive आके मार रहा है वो विंडो Sort of बच pushing गया down with the operator and drops the Jama. first Khalil the ball and Arjun W0 bhai। out the window to answer right back. Good trade, good Do trade। not want to give that momentum to MIBR. ओ ये बार हॉल्स No, they फाइट don't. नहीं लिए ये बार हॉल्स कोई देख रहा नहीं ओके साइफर का कैमरा देख रहा है Other side of साइफर the का site, कैम लेकिन no rotation in just yet from Conan. Still calling the shots that they have positioning and Havoc able to hear the movements just towards the back of the site. Luckily RGL on that hold shift right now. So वो कैमरा में कोई स्पॉट नहीं हो रहा हॉल्स कंट्रोल के लिए और एमएन में कुछ हलचल नहीं लग रही वाइपर को इसलिए कोई आ रहा नहीं है दैट्स अ बिग अल्ट बाय हैवॉक drop flash. It really is just to keep the players at bay. There was nobody really dashing out from that moment. डोर खोल के बस पीछे क्या भाई वो KO in क्या that बात है pulse. There's a jet that comes out towards orange instead. MW0 is pushing अब वो बोलेगा भाई लाइन अप मत किल अबे बफर हुआ towards the A main. So they can play that pulse plan. And they learned their lesson. Look, they're just staying towards A main this time and keeping Liazi in the sight. तो अल्ट तो है लेकिन इसका सोवा का Shock darts. Hunter's Fury as well. They're going to use it right now for the retake. Yeah, that was a lineup. Okay. They threw a अरे! knife and then the Hunter's Fury in that भाई वो spot lineup doesn't वाले get the spot ping, पे so ult that's कर रहा था। wasted. An opportunity for Fury to play the pulse plan. Havoc gets the pick up to Mazine. अरे गया ये round भाई For MIBR, advantage for Furia still as JZZ is trying to move in. His teammates right next to him. A tap on the spike. There's the attacker's Hunter's Fury. That this time, again, they do not want to make the same mistake twice. We're just using everything we can to confirm the भाई। round as Furia will score. भाई उसने अल्ट जो यूज किया ना सोवा ने डिफेंसिव है सोवा ने वहां पे थोड़ा सिस्टम हो गया उधर भाई उसको लगा भाई उधर लाइनअप गेम प्ले कर रहे हैं लेकिन हर बार लाइनअप गेम प्ले नहीं होता बच्ची क्या विषय हाँ? You put an op in the hands of MW0 and he's less likely to want to dive in here. So they just भाई अभी keep मेरे को ही going with बना this मेरे को ही flow एक्चुअली ना behind each सीखना other पड़ेगा and सिखाना now पड़ेगा ब्रो securing the post मेरे को ही line. सिखाना पड़ेगा इन लोग को नहीं तो ऐसा ही खेलते रहेंगे ये लोग चैट में जाऊँ क्या मैं जाऊँ मेरे को जाना पड़ेगा भाई Now we see FRZ with the Phantom, just a few sheriffs across on the rest. RGL Meister is kind of on deck, 2 points away from the ultimate. They have to start grabbing some rounds now. 3 more and Furia is going to bring us to a third map. Your rifle for FRZ here with the Phantom, the rest with Cheris, and you see the trap plays being set up. Chips already getting broken. The tag on the first. Aljo moves out on the attack. That's spiked down. हैंडसम लग रहे हो लव यू Your rifle back in the cam, sees a couple of players, throws the hat out. Big information, and all 4 players out towards A main. चाप्टी इको राउंड है भाई 11-7 होने वाला है भाई लोग वी आर गोइंग मैप 3 लेट्स गो पूरी रात अपनी तो भाई स्पैम नहीं हुआ ये पड़ी एक शॉट पड़ी उसको शायद ओ भाई नाइफ गया उसका This is precarious. This is really weird right now, and I think MIBR is like, What? okay, let it hang out. What? वो मिड से शॉट कनेक्ट किया अपना MIBR थ्रिफ्टी निकाल रही है अपना नो वे नो फ्रिकिंग वे ओके वो निकाले भाई पूरा राउंड वो स्पैम के वैसे निकाले मालूम मिड डोर से स्पैम किया उसने शेरिफ हेडशॉट Style there from Furia to they couldn't get in just close enough. भाई क्या डेंजर सीन भाई A bit of a touch onto the pillar so they couldn't get a plant. Oh man, and then being able to fire in there without having any ground, it's like MIBR knew Furia would just kind of be milling about right at the entrance of the cave.
shots connected. Into the unknown. It's going to be a very चलो भाई अभी देखना है गेम sorted by here for Fury. भाई अभी भी बाय अच्छा नहीं है MIBR का Guardians, Marshall, Classic, and their Blade Storm is up after the orb grab. अच्छा पिछले राउंड कुछ लोगों ने फैंटम बाई की थी क्या Also, that was उठाई थी ना सबने तो our last round, yeah. so And that breaks the economy of FURIA. मारा They have to try to play a ये little गिरे bit कैसा ऊपर contact चढ़ा है out ट्रेड there. लेने क्लोज एक्सपेक्ट कर रहा भाई वो Set up MW0 with the Blade Storm Oh, now. RC भाई। still finding great positions with खतरनाक this ऑप। blast cannon. JZZ गायब। vents away. भाग लिया भाई गायब Around the corner. अरे 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 बेचारा यार And now it's the Oh, turn of nice. FURIA to throw out the hat. ट्रेड है भाई Get ट्रेड है information with the 4 players around, but they lost Khalil in the process. अब भागा भाई Trying to वो win a 1v1. A walk forward, a run forward, a jump Fielding spot. उठाई थी भाई Smart उसकी। play by FRZ. शॉट भाई मारना भाई हो गया भाई आर्जिन का 1v1 at this point. आर्जिन का हो गया भाई मैं वो बोलता है भाई मुझे खत्म करना है गेम घर जाना है Allow for the economy to get built up. Conan still has a guardian though. Cannot use a recon dart as he just got nullified by a knife. Suppressed, looking forward towards the spawn. फ्लैंक आ रहा है You see a ऊपर flank coming out from आ गया RC with फ्लैंक this अब ये operator. जमा 3 2 It's 1 only a matter बूम of ये seconds. पड़ी अबे Jumping up, out into safety. It was close. His demise is still there. Players will soon start Chat closing in. imagine Wall out on the defense, Oh, separate good that wall. spot. Recon on the top. There's the upshot. भाई 4K भाई आर्जिन भाई निकाले MIBR only need one more. साइफरल डिस्ट्रॉयबल बनाना चाहिए नहीं वे so many 4Ks वो today. बहुत The players ज्यादा are being नर्फ हो जाएगा outside by power. भाइयों लाइक मारिए लाइक But लाइक man, करो the लाइक multi-kills are definitely coming in. Not even that they're required on the round. The teams are just behind each other, supporting. शॉट नाइस शॉट नाइस शॉट नाइस Big शॉट frags over at बूम A, बूम and they clean up over at B. So that money does go to the hands of Furia, just a little चाहिए extra सुहा cash. क्या है They're gonna go एवरेज full जोनस buy होता this तो जिता round. देता Our team just has to go low armor. That's really the only thing we're looking at. RGL Meister with an ult, as we were focused here on A. Gonna try to go for a pop flash peak potential here. ओ भाई सब पॉप फ्लैश है यहाँ पे दो पॉप फ्लैश जेट अभी भी क्लोज खेल रही है ओके नाउ शी गोज अवे Both teams kind of same idea there. Like, किसी you're पे gonna push ults us, नहीं है we'll यहाँ get पे back, so you cannot push. There's some sort of चलो contact. देखते भाई Conan's down to ये 5 भाई ये HP. सुहा 5 एचपी कैसे हुआ स्पैम लगा होगा शायद They back. सुहा को पड़ी गया शॉट ऑपरेटर की Also 5 coming एचपी in है वो from Khalil. Probably hasn't heard anything yet, but has had control. of कोसा का his elbow लेकर area to कोमा make sure no कोमा one's कोमा pushing. लेकिन Question यहाँ is पे how have they फूरिया learned how to deal सोच रही है with Furia's कि पी जाना abilities चाहिए here? पी पे हम जाएंगे So low. मजा आएगा लेकिन अगर इसके डिफेंसिव वाइपर को खबर आई तो वो अल्टी खींच सकता है लेकिन वो अल्टी नहीं खींचेगा अंदर आ चुके हैं फूरिया वाइपर के ऊपर पूरा गेम रिवील हो गया 2 बार रिवील हो गया मर गया ओ भाई एफआरजी ने ऑलरेडी एक किल निकाला इस पे Now another camera to spot the jet. MW0 Come on. is forced to fall Come back to on. the back of the site. Come Spotted on, different babies. camera. Trip on the flank. Spike planted. Furia's going to be aware of that one. हाँ हाँ खाया Shotgun खाया coming through. अरे Double swing out from the pillar. Furia takes the advantage. Double ओ swing again भाई at the सब pillar, डबल but स्विंग this घर पे time FRZ still ready with Mazin's on भाई the support. जीरा का पोजीशन अच्छा है जीरा का पोजीशन बहुत अच्छा है Nice, भाई। ओ भाई 1v1 The last player standing. Vandal picked up on the other end by Artzine. It's a 1v1. There's that. अरे माँ सब भाई my God MIBR ties the game. How did he hit that shot? By He was looking at a sub. different zip code. Holy crap! Artsine coming up with an भाई इसका amazing POV shot. देखना Also a swap of the op to a Vandal mid-run into the site so he could get a close fight with the automatic weapon. भाई फील कर रहा भाई आर्जिन क्या चापटी दिया है भाई उसने भाई मिड वाले ने हक दिया उसने 2 किल लेने थे भाई I thought that flank was going to be just a little too late. The fight Oh, in the भाई। site here, everybody was giving it आ their all. भाई क्या And शॉट not है even feeling pressure. It looks भाई like in this situation, साहब। Artsine just comfortable. The explosion from Bazooka, of course. 10-10 now. 3 there and the retake. भाई You see it साहब on your क्रेजी scoreboard. भाई क्रेजी ये MIBR The जीत past 2 जाएगा rounds for MIBR. और to टाइम आउट bring लिया it है back to even. इंपॉर्टेंट टाइम आउट है भाई फ्यूरिया का क्योंकि अभी भाई लगातार 2 मैच जीते 2 राउंड जीते ना हाँ टाइम आउट लेके उसको बीच में जाएंगे फूरिया वाले को अभी हार्ड सीन वही है क्या उसे कहते हैं उसका वो जो ऑप लगा रहा है ना
तो अभी वो लोग जो है वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि भाई ये ऑप अभी लगाएगा किधर, और लगाएगा तो उसको पीछे कहीं ढकेलेंगे। ये विषय अभी चल रहा रहेगा, ये कैलकुलेशन चल रहा रहेगा कि ड्रोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ड्रोन है भाई, फ्लैश है, ये सब है, पूरा गाँव है भाई। तो वो सब यूटिलाइज करके, ओ भाई सब शॉट 0.11 सेकेंड्स में उन्होंने फ्लिक मारा है। ओ जेजी के पास अल्ट आ रहा है, मैं आगे आ रहेगा नहीं, 2 ऑर्ब्स है, 2 ऑर्ब के बाद फिर माजिन के पास अभी कोनान पे भी आ रहा है उनके। भाई ये राउंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है बे, इनके अल्ट्स आने वाले हैं अच्छे। इफ नॉट ये राउंड, ये अगले 2 राउंड बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन इनका लोबा है फ्यूरिया का। Seems like they are unafraid of what is happening. अगर फ्यूरिया ये राउंड, ओ भाई साहब, सॉरी भाई, सॉरी भाई, क्योंकि जीतते ना भाई ये राउंड अगर फ्यूरिया तो हो जाता जीजी। भाई साहब नशे भाई, चापटी पे चापटी भाई, आर्टिजन भाई खुल गया भाई, आर्टिजन बुला रहा हूँ भाई उसको मैं। खुल गया भाई, वो खुल गया, उसका हाथ गर्म हो गया भाई, और एकदम डेंजर वाला गर्म हो गया। मिड वाला एक टाइम के लिए हॉर्स भाई बन गया था। आर्टिजन मेरे तेरा खेल रहा है, कुछ भी बोलो। तो ये देखिए, और क्या चल रहा है? और ये भाई हक दिया। Execution onto the Yahtzee. Now 2v4 अगर बीमेन वाला मरा तो भाई सिस्टम हो सकता है कुछ। So you can't really stick the plant yet. They were afraid of that spray through the smoke. अल्ट खोल दी इस भाई, इसने तो इसको एस लेना है। At least to get the economy out for Furia. सॉरी भाई, तू मत बोल भाई, मत बोल, गंदी से गंदी मौत मिल रही है, तू कुछ भी बोल रहा है। But JZC wins that 1v1. Mirror matchup won by MIBR. Khalil trying to trade it back. There's our run up. Oh, on by ramp. clutch. Guardian left, tap on the spike. It's not planted for him, Stick even कर though रहा है he वो। planted it himself. Has to go for the white swing. हो गया भाई। RC is there. And just like the story is supposed to happen, just like the script. तो अभी was अल्ट्स supposed वर्ट्स to आ गया भाई happen, फ्यूरिया पे, on the ये low 11-11 हो रहा है। Furia, नहीं वो भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है। हमको पता चल गया क्या होने वाला है। ओ भाई काउंटर अल्ट्स भी है भाई, काउंटर अल्ट्स भी है हैवी। अच्छा शील्ड नहीं लिया होगा भाई। Wait, how does a pointing elbow turn into a collateral? Is that the millisecond that passed was the final step that required both of them to भैया line up. लाइक मार दीजिए अगर आप नहीं हो तो। Firing that fast, almost pre-firing, honestly, but still finding them both in the situation where they were trying. ओ मिड पिक करते हुए 8 जिन भाई, मिड पे अब तक पीक नहीं किया था, ये पहली बार कर रहा है। दिया मिड पे। Operator still for MW0, now operator for Art Scene. One of the times we're going to see these guys. बहुत ही भयंकर डिफेंसिव वर्ल्ड यहाँ पे। Has been Vandal versus Op usually. वो लोग कितना पीछे से होल्ड कर रहे हैं सारे एंगल्स। चांस ही नहीं लेना फ्यूरिया को भाई, वो पूरा स्पॉन में ही अभी भी, जहां पे पैदा हुए उधर ही है अभी भी। ओ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। Let's go for that op duel, and Artzine always likes to be aggressive, but this time only it's a slight miss. फ्लैश पिक कर रहा है वो। ओके नहीं नेवर माइंड। Still staying posted up despite the dash disappearing. Ready here. भाई लोग पेशेंस है, क्या बोलते हो? पेशेंस है यार, पेशेंस है भाई। एमएन के पास 2 इतना पेशेंस रखे भाई। ओ भाई अटैकिंग ऑफ भी निकली है। Finally answered back with the Hunter's Fury, but he's going to be under What the? क्या? One headshot traded out by Khalil. And now being thrown on the attacker. 2 versus 2. Door opens up. And first he turns around. Khalil wins that fight. RGL Meister is now alone. And the second pick of the hat. क्या The शॉट second था? ping of the hat. Sees him still towards middle, so he's repositioning now back towards the spawn. Explosive action. सॉरी यार बिस्वा भाई, सो सॉरी यार, मैं अभी ऐड ऑफ कर रहा हूँ, रुको। Actually got their first kill. It was Furia, I think, playing towards contact, but also playing if anything happens, we go. Just kind of using that as a trigger to make the round execute. It has taken MIBR off guard. Plants down, operator watching. भाई चैट पे किसी ने तो बोला था टॉयलेट 11 ऑफ कर दिया भाई मैंने, ऑफ कर दिया ये। There's that 1v1. He does see his last opponent, Khalil, repositioning now between the pillars. Snake bite all around. नेवर माइंड भाई। The Red Bull clutch. वाह। The defuse. Clutch goodness. MIBR are at Yes. series point.
RGL Meister's job is to rotate over as safely as possible, be the last alive, be the one to clutch around. We saw it on the previous map and we're seeing it again 2-0 जीत रही है 8-4 था ना MIBR। स्कोर? क्या था? 8-4 था हाँ स्कोर। 8-4 था। भाई साहब नशीला गेम प्ले बाय MIBR द गोटी गेमर्स ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, ब्राजील। भाई तुम्हारा भाई वो वन टैप था भाई। मिड वाला नहीं दिखाया ना उन लोगों ने वन टैप। हाँ नहीं देखा है, तो सुबह ने मारा था ना। भाई ये लोग किल करने के बाद है ना आजू बाजू नहीं देख रहे, पहले सामने देख रहे सालो। अब बोलो वो साला स्ट्रीमर उसके सेटअप पे जाके बैठना चाहिए। वो पिटेगा बहुत जोर। It's up to FURIA though on the attacks to make sure they bring it to the third here, and they're going to be right into sight off of this drone. नहीं देखा इसको। नाइस भाई, आजिन के पास अल्ट रीटेक के लिए हो गया। ओ नहीं हुआ, 2 मारा भाई वो। 3v3 है ना। हैवॉक रिवाइव। व्हाट भाई यहाँ पे साउंड नहीं आ रही क्या? हैंग हो गया वो। लास्ट बार टाइम भी नहीं ओ है। भाई हो गया 2v2। Now Liazi hides within the pit. The retake is going to be एक हॉल से एक साइड है। operator. JZZ has a recon dart. Khalil's watching अरे across. रे Dream's still alive for FURIA. JZZ in a clutch attempt. They're going to let the pit down here for FURIA. Recon है भाई Pulling पे। back towards the outside, wasting that clock down. Decay, the peaks. Oh, well played भाई। भाई इसकी HP? What? उसका HP glitch हो गया। हाँ। उसका HP 40 के नीचे नहीं आ रहा था। हाँ 49-50 हो रहा था। ओ अच्छा अच्छा, मुझे समझा क्या हो रहा था। उसका डीके चले जा रहा था और उसको डैमेज पड़ रहा था मॉली का। समझा, डीके की वजह से वो लो था, वैसा हुआ। भाई मैं बोला ये क्या हो रहा है। हो जाता सिक, क्या मालूम वे। And it's just overwhelming the players right now, and we're seeing the errors. Khalil, however, able to pick it up, keep FURIA alive. And Havoc feeling good about that one as well. 2016 on top, we just saw him on your screen. We're gonna get a pause ये here. टाइम पे टाइम आउट लिया है। Is MIBR on game point, but FURIA is MIBR right ने there, bring us into overtime for Breeze. अरे ये कोई ग्लिच नहीं था, ये मतलब गेम ही था, मतलब ऐसा ग्लिच नहीं था कुछ। चैट क्या लग रहा है, ये उठी जा रहा है या MIBR क्लीन विन है? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अभी वो किधर है जो बज रहा है? हाँ ना साला, उसको दिखाना चाहिए। Flipped on the other end where MIBR is the one with a much lower bind. Just before we went into the timeout. लाइक मारिए दोस्तों, अगर आप नई हो अभी तो लाइक मारिए। Let's go. MIBR could still bring an operator no matter what, but this skill right here, pivotal moment right now in this series that could potentially clean win. keep FURIA Okay. alive. Dueling operators once again. MW, Zera, and Artisan there. Look at this. The Ops 2 buying down to almost 0 on the accounts. The economy is the last round. Unless we can get to OT here. Both buys from teams. It's just FURIA not looking to pressure right away. Seeing if they can get any tells from Util. चारचन यहाँ पे A होल्ड करते हुए। Positioned. And it's the mind games we talked about for FURIA's side. Will an operator come out from Ardzine? अर्जुन भाई एकदम आराम से होल्ड कर रहे हैं। अर्जुन भाई लेकिन ना एक पॉइंट के बाद पुश करते हैं, मालूम क्या? लेकिन ये लोग पूरा बी के तरफ जा रहे हैं फ्यूरिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है ये, लास्ट राउंड लाइक लिटरली। क्या यहाँ पे कुछ हो पाएगा? बहुत काम डाउन होके खेल रहे भाई। A little bit of hesitation. There's not too much of that pressure and that confidence in round number 24. Both playing to win, but also playing to not lose. It slows down things. एकदम सही बात बोली कास्टर ने। It does. It does. You cannot hesitate. भाई एक ही तरफ रिपोजिशन हो रहे हैं। ओह डूड, ओह पर कोई नहीं दिया। Rotating across and a smart play there by Conan to jump spot and bait out the off shot. Yet FURIA still wants to fight this. माजिन के पास अभी भी अल्ट है भाई रीटेक के लिए। टैग हो गया भाई ऑपर। नो वे डूड, ब्रो नो वे दे बिफिंग। ओके 2 बचे लास्ट 4v2।
push forward लेट्स गो against the world. जी गरी चलो भाई स्ट्रीमर आ गया साला 2-0 आ रहा है उसके टीम को 2-0 आ रहा है भाई 2-0 भाई ये क्रेजी सीजन है भाई फुल ऑफ अपसेट्स हो रहा है भाई ये तो ये गेम सब लोग बोल रहे थे भाई फ्यूरिया जीतेगी ये भी MIBR जीत गई भाई अलग ही गेम्स चल रहे हैं यार अभी सेंटिनल्स और 100T का है Yes. दोनों टीम में है कौन कौन सेंटिनल में रहने ना भाई और भाई अच्छी टीम है वो सैसी वगैरह बहुत अच्छा खेलते हैं भाई सैसी सेंटिनल्स में हाँ और 100T में पता नहीं कौन है लेकिन आंसू ना है उतना पता है Even it looked like it was going one-sided एक on एक that OG second सबने map है though ही। for FURIA there. They had such a strong defensive start. Even as we're criticizing Havoc on his results yesterday against QT भी, Energy to want to play वो है this ना? map again, saying we got the Yon reps QT in, नहीं। let's play क्या this बोल so रहा we can get क्यूटी भी तो push है in there for them. It's सेंटिनल्स में MIBR, as you see on the screen right लेकिन now, that's able भाई, to ये सब topple अभी भी FURIA Sentinels में है। and show that throughout the off season. भाई वो क्या खुश हो रहा है जो सामने बैठा था Now that you have लेट्स गो भाई वेल प्लेड MIBR वेल प्लेड an art scene with the Well way that played, he's bhai, showing the well operator played. that they have a recipe for success to go deep. भाई Yeah, इनका yeah, स्टेज है भाई इनका स्टेज है हैवी है ना अपने पैसिफिक से इनका स्टेज बहुत अच्छा लग रहा है भाई मेरे को पैसिफिक का थोड़ा है ना वो जो जिसने भी बनाया है ना स्टेज वो मंडप में लाइटिंग करते हैं ना वैसा किया उसने भाई बहुत झाक झुक किया है भाई उसने इसमें देख रहा कितना एस्थेटिक है भाई सब कुछ मैंने नहीं देखा पैसिफिक वाला भाई देख भाई अबे झाक झुक LED शो है भाई फुल FURIA, like those moments where स्ट्रीमर को कोपचे में चापटी मार रहे हैं फ्यूरिया वाले जाके बोल रहे हैं अगर तूने जंक्स किया हमारा गेम भाई साहब कंजेस्टेड है हाँ जगह थोड़ी कम मिली है हाइट थोड़ा कम है भाई क्या खुशी हुए भाई फ्यूरिया वाले मजा आ गया देख के मजा आ गया देख के मजा आ गया चलो एक बार ही मेरे को देखना है अभी कि टीम क्या क्या है 100T और सेंटिनल का जो मैच होने वाला है उसमें टीम क्या क्या है चैट ऑब्वियसली अभी 25 मिनट बाद तो गेम चालू नहीं होएगा अभी कुछ 15 मिनट में गेम चालू होएगा बराबर तो तब तक लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए गेम प्ले और जेल्सिस गेमिंग वाइटी है भाई जेल्सिस से जॉन क्यूटी भाई ये जॉन क्यूटी बहुत मारता है हाँ क्रायो भी है भाई इसमें क्रायो है और सुना है ये दो कोई जानता मैं बस भाई ये 100T का स्क्वाड मेरे को कुछ नहीं पता भाई चैट इनमें कौन कौन मारता है 100T में कौन कौन मारने वाला है क्या कौन क्रायो सेल क्या मालूम बे चैट ये कौन मारता है इसमें कौन मारता है ज्यादा एकदम मतलब बूस्टियो मारता है क्या इनकी है भाई मेजर टीम है असुना तो मारता है ये मेरे को पता है सारे सुने हुए हैं इनमें से असुना और वही असुना छोड़ के भाई बैंग और बूस्टियो बहुत मारते बूस्टियो बहुत मार रहे बोलता है ईजी का IGL था बूस्टियो बूस्टियो का जरा गेम प्ले देखते हैं कि मतलब कितना मतलब क्या ही मतलब मारता है तो कितना ही मारता है ना क्योंकि ऐसा मेरे से तो अच्छा मतलब एनालिसिस करने दो को लेव आसपास विद अ 4K बूस्ट योर लेफ्ट इन अवी तू भी सुनता सीज को क्या मालूम एकदम पहले सुना रहूंगा कभी मैं सब्सक्राइब करके रखा था तभी भाई ये लेविएटन ने ना 100T को 2-0 किया था नहीं सॉरी 2-1 किया था और भाई लेविएटन में ना ये अभी आसपास है तो आसपास ने भाई साहब 30-25 किल मारे थे भाई कुत्ते माफिक मारा था ये तो किसी और का हाईलाइट है आसपास का हाईलाइट है ये Everyone's blind. Literally everyone's blind.
Leviathan did such a great job entering towards the site. Plant then comes down, courtesy of Wingman, and there's only 2 players left for the Thieves. Slight मैं आता attempt, though. 5 मिनट में. हाँ Haspan चैट आसुना का एम काफी शेकी होता है ना. Save, guys, save. with the off angle. फुल ज़ाप ज़ूप ज़ाप ज़ूप ज़ाप ज़ूप. There's that first swing out from EU. अबे ये क्या नाम है बे? 100 टी You क्यों? save, you instantly save. One player left. The satchel हाँ चैट didn't work for Oscar. ये क्या नाम है भाई? 100 टी क्यों? ओ भाई क्या क्या है ये भाई? भाई वो ये का भाई. ओ ओके ये देखते बूस्टियो का क्लिप है. Range of Bustio. Recalled on the orb. The timing of that one. Triple swing out. Surprise, surprise. Arctic Thieves close down the lead of Leviathan. मुझे सब समझा भाई, मुझे सब समझा इसमें, सब समझा भाई. Regulation. अरे उसका पीओवी दिखा दो यार. हाँ दिखा रहे. Tom does have 8,000. एफएनएस का भी सिस्टम हैंग हो गया भाई. So we're gonna see some weapons drop. It may not be great armor around the board, but quick movement, great pressure plays. I'm just gonna go ahead and shut the fuck up. Regain this position. ओ भाई मारा वे, अच्छा मारा वे. बूस्टियो चैंपियंस फाइनल देखो भाई, देखो रात गई बात गई वैसा विषय होता है भाई वैलोरेंट में. तो तभी अगर उसका हाथ चला है तो जरूरी नहीं आज चलेगा. बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं चैट? बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? तभी जो टीम मचाई रहेंगी ना भाई, अभी वो टॉटी खा रही रहेंगी. बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? यही होता है वैलोरेंट में भाई, यही होता है वैलोरेंट में. बहुत डेंजर गेम है, बहुत डेंजर गेम. हटाना चाहिए गेम. गेको बन गया बूस्टियो. ओह अच्छा अभी गेको खेलता है. डीमन 1 को देख एंड आसपास का क्लिप देख. हाँ उनका तो देखा है भाई. हाँ C9 ऑक्सी का क्लिप्स देखे मैंने भाई. वो कुत्ते माफिक मार रहा था भाई लोग. लेकिन है ना मैं मजाक से हटके बोल रहा हूँ, अगर है ना भाई मैं ऐसा कुत्ता रहता ना, ऐसा दिखने वाला कुत्ता रहता ना भाई, मैं मतलब ये जन्म में, तो भाई मैं भाव खाता. मैं 1 करोड़ रुपए लेता भाई किसी के घर पे जाने, मजाक से हटके. ओ भाई कितना प्यारा सेटअप है. ओ हाँ ना भाई, केज में क्यों रखा है क्या मालूम. क्यूटी 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 क्यूटी. हाँ क्यूटी 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 क्यूटी. हाँ क्यूटी 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 को ना वे यार कितने प्यारे है भाई. हर्ष को मत बताओ. क्या क्या हर्ष को मत बताओ. आ जाओ तुम्हारे क्लिप्स देखते थोड़े से. ठीक है क्लिप्स 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 करके रो भाई यार. ऐसा माउस पैड, इतना बड़ा माउस पैड चाहिए यार मेरे को. Cutie cutie, cutie cutie, usa kale kale koma koma, usa kole. हर्ष
Last time I got accused of false rank. Let's see if you can get is right time. Shaky aim reasons. Sensi 2.7 on 1600 DPI. No shot you are about plat. No shot you are about plat. जेंजी का मैच देखा था मैंने, एस्क्यूरेट जो मार रहा था वो देखा था भाई मैंने। ओ नहीं होलअप, जेंजी नहीं मैंने नहीं देखा था। मैंने जेंजी वर्सेस भाई क्या कर रहा है, मैंने जेंजी वर्सेस ये देखा था, जेंजी वर्सेस कौन सी टीम थी भाई याद नहीं, टैलोन वर्सेस T1 देखा था मैंने। जेंजी वर्सेस PRX और उसके पहले और एक देखा था जेंजी वर्सेस कोई तो RRQ आई गेस, हाँ RRQ। भाई शॉट्स तो अच्छा मार रहा है भाई बंदा, और उसका क्रॉसर प्लेसमेंट भी बहुत क्लीन है भाई। इसका भाई कितना कम माउस मूवमेंट्स करना पड़ता रहेगा ना इसको, इसका सेंसी बहुत ज्यादा है भाई। 2.7 ऑन 1600 DPI बहुत ज्यादा होता है। रैंक गैस चल रहा है क्या? हाँ बे भाई अमन, इसका सेंसी क्या है मालूम भाई, बहुत अच्छा मारा ये बंदा। इसका है ना पहले 2 किल्स देख, सिर्फ दिख रहा है स्क्रीन तेरे को? हाँ इसके पहले किल्स देख सिर्फ, ठीक है। मस्त मस्त दिमाग लगाया इसने, ठीक है। तो क्रॉसर प्लेसमेंट देख काफी अच्छा है। इसका सेंसी बताओ तेरे को 1.2 भाई, इसका सेंसी है 2.7 1600 DPI। क्या? तो भाई ये ऑब्वियसली प्लेट के ऊपर जाएगा ही नहीं भाई ये सेंसी के साथ। भाई मैं तो गोल्ड बोलता हूँ इसको, गोल्ड है भाई ये। ठीक है भाई। भाई अबे ये सेंसी पे कंट्रोल कैसे आता रहेगा ना ब्रो। भाई जो लो सेंस में एक्यूरेसी वाला जो फील है ना, वो हाई सेंस में नहीं है मालूम। मैं DPI लगता है गलत है उसका, इसने DPI कुछ और डालना होगा। हाँ ना, कुछ ज्यादा ही हो गया वो। गेमर है भाई, अच्छा खेल रहा है। ओ भाई अच्छा खेला भाई, अच्छा खेला है। लेकिन उसने लिखा रिमेंबर आई एम नॉट अ वैलोरेंट प्लेयर। लेकिन मेरे को ये नहीं समझा ये थोड़ा स्प्रे कैजुअल था ये यहाँ पे, क्योंकि हाई रैंक प्लेयर यहाँ पे बर्स्ट करते, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये गोल्ड है भाई। भाई मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा गेस करता हूँ भाई MGEACS में। देखा वो मैंने लास्ट टाइम। अबे वो उतना चलता है भाई। भाई हर एक असेंडेंट है ना, कुछ कुछ क्लिप्स में ना सिल्वर दिखता है भाई, कुछ कुछ। Spike down B. भाई ये देखा था शायद मैंने, हाँ ये देखा है मैंने। सामने वाले टट्टी खाते हैं। हाँ इसका कुछ तो है ना फेक रैंक डाला है इसने, देखा क्या? तू बता इसका रैंक। गोल्ड 3, गोल्ड 1। तूने गोल्ड कैसे गेस किया? लास्ट वाला किल देख के।
अबे अच्छे मारे उसने बहुत भाई। भाई अच्छा मार रहा था यार, ठीक है। मोनित, चेक आउट माय वीडियो, वैलोरेंट कैप्चर आउटप्लेड। पर वो फ्लो में मार दिए ना उसने, फ्लो में तो मैं भी बहुत बार अच्छा मारता हूँ। बराबर। अरे ये लास्ट रैंक वाले है ही किल में नहीं। बहुत टाइम लग गया, फिर पूरा डिसीजन मेकिंग पे गया। भाई इसका नाम एसूना है, एसूना। नया बंडल है भाई पे। नाइस डिसीजन मेकिंग, गुड किल। भाई को एफपीएस आ रहे बहुत भयंकर। प्लैटिनम अंधा पैसा है भाई पे, अंधा। Last player standing. Spike down A. हाँ ब्रो ये प्लैट नहीं है, इसके मूवमेंट्स अच्छे हैं। One enemy remaining. रेस होने ब्रो नो वे डूड, 1 एचपी पे निकाला इसने। भाई ये 26 क्या है, 26-10 है। ओके भाई बहुत अच्छा मारा। ये प्लैट नहीं है भाई, ये डायमंड है। ये बंदा डायमंड है। डायमंड भी इसलिए क्योंकि इसने है ना ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट कनेक्ट, मतलब ये थोड़ा सा डेंजर था। और ये फिनिक्स है ना, फिनिक्स थोड़ा अंकल रिफ्लेक्स वाला था। जो कहा गया वो एक ये लिटरली 1 एचपी है भाई। Remaining. One enemy remaining. रेस होने और रेस को ऐसा वॉकी वॉकी करना ही नहीं चाहिए था जब 1 एचपी है भाई। तो भाई अभी तो मेरे को गोल्ड सा लग रहा है, लेकिन आई विल गो विद डायमंड। क्या बोलते? मेरा तो प्लैट ही लग रहा है भाई इसने अपना रैंक नहीं डाला है यार। क्या लिखा है इसने? इफ यू आर गोइंग टू ट्राई गो ऑल द वे। या प्लैट ही है भाई। अभी तो गोल्ड लग रहा भाई। ये चैट diamond में बोला है, तो। चैट में, हाँ चैट में है। ओ भाई भाई ये इमॉर्टल एक अमन भाई। इमॉर्टल है। मैं बोला ना इसका मूवमेंट्स अच्छे है भाई। Playing on 60 Hz Lenovo ThinkPad E15। पर ये बता तो मैं गोल्ड क्यों लग रहा था फिर? वो तो तुझे लग रहा था भाई। मुझे तो प्लैट लग रहा था भाई स्टिल। तो मैं तो डायमंड बोला। ये कौन बोला? मैं गोल्ड डायमंड बोला भाई, तूने नहीं गोल्ड बोला। चैट बताएगी ना क्या बोला तू। अल्ट करके जाना, पेल के आ जा, एक आध पीक निकाल के लेके आ। क्लेम आएगा भाई, क्लेम आएगा। कॉल है भाई का। ओ भाई एनिमी पीओवी क्यों देख रहा है? अच्छा ये 2 शॉट का क्लिप डाला है उसने सिर्फ। अच्छा मारा है, अच्छा मारा है, डिसेंट मारा है, लेकिन हो सकता है इसका बेस्ट हो तभी 2-2 हाँ पीओवी वही डाला है। वही इतना कि भाई साहब बस उतना ही डाल दिया उसने। अरे 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 भाई ये कौन सी लेवल का स्मर्फ है? ये देख इधर गोल्ड है और भाई ये ऐसे शॉट मार रहा है। भाई हैक वैक कर रहा क्या ये? भाई अभी अगर ये बोला कि ये सिल्वर है ना भाई, क्योंकि इसके ना शॉट्स में देख, इसकी शॉट्स में देख अमन, ये है ना टैप देने के बाद है ना एक जर्क आता है, दिख रहा है? यहाँ पे भी एक जर्क आया और यहाँ पे भी है ना वो टैप देने के बाद देगा, हल्का सा राइट को जाता है। हाँ एक जर्क आता है भाई। एक है भाई, कुछ तो है भाई। अगर ये सिल्वर निकला भाई, मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। अरे इनकी भाई और ये 60 हर्ट्ज प्लेयर है, क्या है भाई ये? नहीं भाई सूस है, सूस है भाई, सूस। क्लच भाई 1440p।
144 थोडी माहिती होती त्यांची. स्मर्फ कर रहा है. अबे स्मर्फ में ऐसा कौन टपली मारता है जहाँ आयला? ब्रांस. ओ गोल्ड बड़ी है इसके पास. One enemy remaining. Nice one, man. सिल्वर भाई, ये बहुत इजी है. 100% सिल्वर है. भाई ए नहीं, इसका पीक ये है मालूम, इसका पीक गोल्ड 2 है. अभी ये सिल्वर ही रहेगा. देखना है, देख अपन ट्राई करते हैं. कुंडली निकाले. अबे यार इसका है ही नहीं भाई. भाई इसका कोई है ही नहीं इसके नाम का. भाई इसके नाम का कोई है क्यों नहीं यार? हट. अबे इसका नाम का कोई है ही नहीं. मेरे को और एक ट्रिक पता है. इसके साथ जो खेल रहा है ना बंदा, प्रणय खेल रहा है भाई. प्रणय. मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद है भाई, जो लोग है ना सिर्फ अपने नाम, मतलब IGN है ना उनका. क्या होगा? प्रणय विद अ कैपिटल P. 3 प्रणय, 4 प्रणय यार कैपिटल. यार शिट, 4 प्रणय थे यार. हट. 400 होंगे भाई, क्या बात कर रहे हो? One enemy remaining. भाई कोई तो एक रहेगा यार जिसको मैं ढूंढ सकता हूँ. कोई तो यार भाई, मेरे को जानना है भाई. ये नहीं है यार. ये देखना, ये क्या नाम है भाई? अरे पीक होगा यार इसका गोल्ड 2. मतलब इस पे बड़ी भी गोल्ड का ही था लास्ट टाइम भी. सिल्वर. ये देख, ये देख, ये देख, ये देख. सिल्वर लॉबी में खेल रहा है भाई हगासा, और बोलता है भाई मैं गोल्ड 2. चाइला है जा. सिल्वर 2 है भाई बंदा जो उसके टीम में. हाँ हाँ, डोनट 1 के साथ खेल रहा है. मैच तो हो ही सकता है फिर भी. नहीं भाई यार, तो इलो लो है तो भाई क्या ये भाई, हमारी लॉबी में इमॉर्टल आते, समझा ना? असेंडेंट इमॉर्टल आता है. Smoke SYT, Valorant God mode. By the way, Hosh bhai, love your streams and current rank is okay. अच्छा, क्लिप का रैंक अलग है, वो करंट रैंक अलग है. सुप्रभात भाई, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. उठ जाइए, सुबह हो गई है. हे भगवान. Holy fuck. Alt. Spike planted. One enemy चेंबर को अल्ट करने बोल रहा है. ऐसा भाई से. गोल्ड. Last player standing. Fuck man, please. गोल्ड 3. ठीक है भाई. ठीक है, अभी भी ये सिल्वर 3 है. ओके, कुछ तो राइट आया भाई. माँ कसम भाई. ये भाई, ये गेको यही है वो. बुष्टियो भाई क्या दिखता है, देखिए. भाई इनका ये क्या जर्सी है भाई. इन लोग को स्पोर्ट्स छोड़ देना चाहिए भाई. भाई इनका जर्सी है टेक्सचर पैक.
भाई इनके कपड़े बहुत हार्ड होते हैं यार। Let's continue the conversation here because one individual. अरे 5 मिनट लगेगा क्लिप देने में, ये क्या बात हुआ मतलब? भाई ये कितना बातें करेगा यार, मैच चालू करो। अरे तो उनको सांस वास लेने दो भाई, किसी को भाई लगी रहेगी जोरदार भाई। अभी क्या सुबह सुबह गया नहीं रहेगा वो। रैंक डाल दिया है, गेस करो ना, देखते देखते। 120 चेंबर 1v5 with no recoil। One enemy remaining. भाई जी देखा स्प्रे ट्रांसफर। नहीं 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 50 बार तो भाई गन स्विच कर रहा है, माउस स्क्रॉल ये करे जा रहा है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये जो ऐसे करते रहते हैं ना, ये आदत होती है ना, वो लोग सिल्वर रहते हैं, वो लोग तो गोल्ड के आगे जा नहीं पाते भाई। भाई जी देखा स्प्रे ट्रांसफर। सिल्वर 2 नहीं नहीं सिल्वर 3। अब बोल, ये कैप नहीं कर रहा, बोल। नहीं 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 बोल, पता भाई। आई मीन बंदा फिजिटी भी हो सकता है, मतलब कि भाई बार बार स्विच कर रहा है, गन नाइफ। भाई यार इनका आता क्यों नहीं है भाई? भाई सबको एनीमे बनना है भाई। सबको एनीमे बनना है तो यार सबके नाम भाई कमाडो टांजिरो ही है। रुक, इसका नाम रहेगा ना स्टाप आउरियस। डेंजर नाम है, डेंजर नाम वाले कम रहते। एनिमी तो लो वाले लग रहे हैं। अबे स्टाप आउरियस कौन है बे? हट भाई, मैं नहीं देख रहा। चलो भाई मैं जा रहा पढ़ने। गुड बाय हॉर्स भाई, गुड नाइट, टेक रेस्ट। स्लो मोड बंद करो प्लीज, मुझे क्लिप डालना है भाई। स्लो मोड बंद किया तो ये बहुत स्पैम हो जाता है यार। हर्ष भाई मोन्टाज पे रिएक्ट करोगे? नहीं। पीआरएक्स और सेंटिनल है। पीआरएक्स ए पैक फॉर द विन। सीएसगो का तो रैंक में कुछ गेस नहीं कर पाऊंगा। ओ शिट, सारे मार्केट। अबे क्या है? ठीक है। I need to blow something up. हमें ब्लाइंड करके घुसना बस मार्केट में। कॉल सुना क्या भाई? चलो चलो चलो, स्मोक करने दो, ब्लाइंड करने दो। चलो तो अप्पू भाई आप एडिट कर सकते हो वो मैसेज। अबे सोवा सुध गए जीजी भाई। नहीं एजी आई कांट वॉच द अदर गेम्स क्लिप। प्रेजेंट ऑफ माइंड। One enemy remaining. Nice one. 4. लो है वो। अरे माँ सर फोड़ दिया भाई। भाई लेकिन सबको आना था भाई, मुझे अकेले। भाई ये है डायमंड पे आता है। हाँ बहुत अच्छा खेला। चलो चलो चलो, स्मोक करने दो, ब्लाइंड करने दो। चलो ये एक्चुअली असेंडेंट भी हो सकता है बे। अबे एक्चुअली ये असेंडेंट हो सकता है। इसने सैचल काफी अच्छा क्लीन किया। बट ये इसका एवरेज गेम प्ले नहीं है ना, वो भी तो देख। हाँ भाई सोवा इधर क्यों नहीं देख रहा था? फ्लैट 3 तो नहीं भाई, पिछला वाला बंदा फ्लैट 1 था यार। नाइस वन। अल्टा तेरे पास है। ना आई गो विद असेंडेंट। नाइस वन। 4. लो है वो। असेंडेंट या डायमंड 2। अगर ये इसका बेस्ट क्लिप है तो डायमंड 2 या तो फिर असेंडेंट। यस सर। अभी ये वही बंदा है, अप्पू भाई ने यहाँ पे रैंक तो डाला है लेकिन क्लिप नहीं डाला है। इसका रैंक मेरे को पता है, चल तू बता। शरीफ दे इधर शरीफ दे। नहीं चलेगा चल
कंडेंसेशन नहीं मिल रहा है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिल रहा है। चले अबे कोई ना बे, चल जाएगा कोई ना, मिल ही जाएगा, वैसे भी लास्ट राउंड है। बहुत बढ़िया एस कर। Spike down B. चलो भाई तेरे था मैंने बता। ला शरीफ दे ये दे दे इधर आ, शरीफ दे दे। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, चल 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 चलेगा। बताओ हम भाई, चैट इसका रैंक बताओ। तुम लोग को चैलेंज, तुम लोग को चैलेंज। प्लैटिनम 3 क्यों? पता नहीं, मुझे लग ऐसे रहा है ऐसे ही। इमॉर्टल साले, प्लैटिनम 3 क्यों बुलाएगा तू इसको? भाई मैं 6 महीने से गेम नहीं खेला हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता है। मैं उसे बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ। न्यूक कर 30। अरे यार शॉर्ट्स। मैं भूल गया हूँ अच्छा गेम प्ले बुरा गेम प्ले क्या होता है। टीम देखा कर। बुरा तो देख लेता हूँ फिर भी, मतलब वो क्लिप्स आते हैं ना मेरे पास, तो बुरा देखना पड़ता है। भाई क्या स्पाइक रश चल रहा है क्या? नहीं नहीं वेट कर दी इस भाई। गन स्किन नहीं है तो सिल्वर या गोल्ड। देख बड़ी गन्स निकाली उसने। मैप सिलेक्शन हो रहा है, शुरू कर दो। 6:30 हो गए, 6:15 बजे दिखाया था उधर। Sentinels, you have map ban? Icebox. अच्छा 6:15 हो रहे हैं। Icebox. भाई मेन्यू लिख रहा है ये। And your map pick? Lotus. Lotus. And your side? Pick attack. Attack. And your map pick? Pick bind. Bind. ओ Thieves भाई or side pick? बाइंड देखने मिलेगा। लेट्स गो। Attack. Attack, okay. And Thieves, you have map ban? हेवन दिखाओ भाई। हेवन तो बंद हो गया ना। Breeze. Breeze? हैं? हाँ वो इसमें नहीं है। Innocent. Go to split. Yep, sounds Pool good. में नहीं है। वो हटा दिया, ब्रीज हटा And your दिया। side? 100 Thieves? Defense. Defense? Split, right? Yeah, for split. तो बढ़िया, Okay, अच्छे मैप रखना। let's run again. So Thieves ban Sunset, Sentinels ban Icebox. Thieves pick Lotus with Sentinels on attack. Sentinels ban Bind, or sorry, pick Bind and Thieves on attack. Thieves ban Breeze. 100T का रोनाल्डो और लेविएटन का मेसी बहुत मारता है। With Thieves on defense. Good luck, guys. Good luck. Thanks. Good luck, guys. शॉट चालू हर्ष भाई, बूमबोर्ड क्लच का हो नहीं। The most anticipated elimination game of Kickoff is finally here. Vikings Arena. Are you ready? भाई ने जगा दिया मुझे। मैं चाय बना के आया। हाँ भाई साहब यार। And we know Sin City is always the loudest city. Give it up for your Sentinels! भाई टेंस का मुलेट है, लेकिन ना टेंस के बाल बढ़ गए वो मुलेट से। अरे यार काम आ गया भाई। Throughout
throughout the offseason, all eyes were on these two storied organizations and what moves they were going to make. And coming into this one, everyone wanted to see the clash. 100 Thieves versus Sentinels. भाई साहब Zelsis vibe में यार. Zelsis vibe में भाई. The highest expectations. It's two star players turning to सुना का भाई क्या expression change हुआ है भाई. Bro, what the? To be a clash, but only one of them can continue on and survive in this lower bracket. अच्छा वो टेंस ने स्ट्रीम पे भी दिखाया था ना वो उसको ये दी थी कार्ड दी थी. वही है वो. So interesting. I think we're gonna get an opportunity to see what 100 Thieves is cooking. They've already really Like करो सब जी हाँ like करिए दोस्तों. And we get Lotus, Bind, and Split. You might get that on all three. Yeah, I love all three of these maps. I think going into this Lotus, I'm gonna be so excited if I do get to see that Gecko Fade combo. Only because if I see another solo Sky, I'm gonna lose it. I think especially on Lotus with these new changes, the Sky changes, the flashing, it's impossible to have a solo Sky. What would be the alternative? क्या कर रहा That's भाई? what I'm saying. I love the idea. भाई उसने मॉनिटर घुमा लिया अपना. अब गया ये. मॉनिटर घुमाना नहीं होता भाई ऐसा. मॉनिटर घुमाना नहीं होता. गया अभी इसका एम गया. एम गया इसका एम गया. You pair him up with any flash initiator. I think you can even do it with the मॉनिटर Sky. घुमा लिया And उसने. it is गया ये. good. Most teams will probably still consider that double controller. Poll combo. डालो भाई, डाल रहा हूँ, Love डाल रहा हूँ. running Viper really helps you out at late. week Sentinel game, ले, but we have और seen some squads in the off season. Sentinel ले और कौन है? That for the double initiator, Unrated. just because the Gecko initiator combo is so strong right now. And I see a chamber. There's a chamber Who there? is it? Chamber? No Who Gecko? is it? ओ It's भाई लोटा पे चेंबर खेल रहे. Oh my! Both teams running a no डबल कंट्रोलर. flash लेट्स combo. गो सिंगल डुअलिस्ट. सेकंड बाइट डुअलिस्ट खेल रहे हैं. Fnatic comp of last Tens year. Gaming on Sentinels is Omen. running. It is a भाई time सब चेंबर proven खेल रहा भाई इधर ये. composition that still very much works on this map, but we're giving up the kill Chamber खेलीस to lock भाई. in the Cryo. chamber for Cryo. That is going to be so exciting to watch. It's 100 Thieves Sentinels. Only one can survive. That's right. It's one of the hypest matches, if not the hypest matchup in this elimination round. Riot Games Arena. भाई एलिमिनेशन राउंड है. As we send it over to you. इनमें से कोई एक घर जाने वाला. भाई साहब इसका हो गया है. ये अभी टेक ऑफ करने वाला है इधर से. For a match like this for quite some time, elimination here between these two teams. भाई कौन घर जाएगा चैट. कौन घर जाएगा. कौन घर जाएगा. क्या लगता है. क्या लगता है. क्या लगता है. मेरे को ऐसा कैलकुलेशन के हिसाब से लगता है कि 100 Thieves घर पे जा रही है भाई. चेंबर ऑन लोटा इज न्यू मेटा. ऐसा है क्या. वन ऑफ द बेस्ट मैचेस. नो फ्लैश गेम. अबे हाँ पे फ्लैश नहीं है किसी पे. Really does feel Gecko Wecko भी नहीं लिया बे कोई. roads lead to this matchup. They've played against each other so many times, but not with these 100T winning? specific iterations of the rosters. And these compositions are interesting. Teams defaulting towards what Fnatic were doing last year with the phase चलिए, instead of the scuff let's of the nerfs. But I go. love उसका the लेकर chamber कॉमा. pick. I really feel like teams can make this work. And when you have someone like Let's Cryo on the squad, why not? ओ भाई आसुना हैं. That's great by Asuna. He just went for the वो रिवील होते होते मारा है. ब्रो नो वे. नो वे. the attackers back. नो वे भाई. बेचारे को और लेना था सिर्फ भाई. कोई हेल्प कर देता यार. Going in the direction of Sentinels towards C, anticipating a refight here. You can see that's why Tens is holding that power. बैंग भाई अकेले सी साइड पे खेल रहे. उनके लिए हेल्प के लिए फेड आ रहे हैं. Towards the back, that's Bang. He's got a lot to do here with the orb up to stop in the plans of Sentinels. फ्लैश रेडी किया है. टेंस ने फ्लैश डाल दिया है. एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे. बैंग भाई पे नेट. Into the smoke, that's Bang. That was a right click. Blaming an easy one apparently from that range. Still, few more players to meet him, and eventually with the jump spot. ओ भाई यार मरो मत भाई. जीतना है तो मरो मत इतना. Spike, we planted momentarily, but with the door opened up. Cryo Gaming Whitey with his chamber and a deagle. Through and pass, but can he find this one? Kill Zelsis. He's low enough. Buying time for the rest of his team to get into position. The damage भाई लो done कर to him. दिया भाई इसको जेल्सिस ने. भाई जेल्सिस खेला है भाई ये राउंड में. अकेला जेल्सिस खेला है भाई. One player now, all up to Boostio. Look at this setup. Inside a low smoke towards the ground. What is going on here? Doubled up. Could Boostio possibly make anything happen? कोई मुझे उसके पीछे का साइंस बताएगा कि वो लो स्मोक क्यों किया वैसा. जमीन में देख के 10 स्मोक क्यों किया वैसा. कोई मेरे को उसका साइंस बताओ. अगर स्मोक हाइट वाला है, नॉर्मल स्मोक है, तो जब मैं एंटर कर रहा हूं स्मोक में तो मेरा विजन डायरेक्टली आएगा. लेकिन अगर मैं
अगर स्मोक लो है तो उसका कर्व ऐसा रहेगा और जब मैं एंट्री कर रहा रहूंगा तब स्मोक यहाँ पे रहेगा. सो इफ आई एंट्री तो मेरा विजन ज्यादा देर तक ब्लाइंड रहेगा, ऐसा कुछ है. They're not going to invest in this round, but I'm still going to be watching it like a hawk because we've seen so many of these. अच्छा, ऊपर से मार सके पीछे वाले. ओके, Teams are just different with the classics. Not sure what's changed, but मैं ज्यादा दिमाग लगा लिया. teams just seem to be taking them much more seriously these days, realizing that every round is winnable. लॉन्ग का डिफ्यूजर छुप जाता है हाई स्मोक से. राइट. Cryo still has 3 shots in the headhunter. You wind back the clock, and old Cryo, that might be 3 kills. We'll see whether he's capable of. बस हर्ष भाई बस कुछ समझ नहीं आया. सॉरी भाई, सॉरी. Since we've seen this guy. एक स्टैंडिंग एक सिटिंग एम शिफ्ट मुश्किल करने के लिए. Partially deep line right down. चापटी दे दी, चापटी दे दी क्रायो भाई ने जॉन क्यूटी को. 3 जने पे खेल रहे हैं यहाँ पे. 100 ठीक है. Now they'll start rotating. This is a buy round for Sentinels. There are so many spots that Cryo is going to be able So to they are supposed to win this. लॉन्ग प्लांट यहाँ पे इजी. 2 जन फ्लाइंग आ रहे हैं. ये 2 जन जो फ्लाइंग आ रहे हैं इनका गेम प्ले ओपी हो सकता है. 2 जन सैंड्स की तरफ खेल रहे हैं, 2 जन साइड. ओके, नाउ 3 जन. 1 bullet on his deagle. What a blind. Paranoia, but that's why Zekin's there. Never mind. Just to help him out, just in case. And Never mind. टेंस ने फैंटम ले ली भाई. असुना भाई अकेले बचे हुए और मर गए. And I think Sentinels are going to be the team that's having to adapt and react Chambur quite a diff. lot in this series overall. 100 Thieves were having their success against Leviathan by bunching up and brawling, really trying to almost team fight in Valorant. Sword by sword. Style, but I think Sword. partly inspired by Boostio just trying to get confidence injected. मेरे को तो अटैकिंग लगता है लेकिन टेंस बोलता है डिफेंसिंग है. In 2023 and Sen 3 मैप पे तो अटैकिंग है ऑब्वियसली, बट टेंस भाई बोलते हैं कि डिफेंसिव मैप है. control the game down, find the right mid-round call. Might see चलो बोनस राउंड सेंटिनल्स का. बड़ा weird मैप है approaches to यार. these 3 maps we've potentially got coming out. two teams have been trying to reinvent themselves into 2024. Oh, they'll take the door now. They'll take the door. Sentinels to take it straight through into B. Molly, Oh, your bhai. Holy, what a Oh, setup. टेंस मर गया बी मैन पे. Turn though with the fire. Asna's there with the door rotating. They've got themselves into B main control. They're going A, okay. Over towards A. What a call. And look at it. Wow. It's completely empty. They picked up Bang with a beautiful setup. अच्छा, टेंस ने कॉल दिया रहेगा कि भाई डोर पे 3 जन थे. Second is pretty far forwards here. एटलीस्ट 2 जन तो टेंस ने स्पॉट किए रहेंगे, इसलिए वो लोग ही गए. ऐसा कुछ रहेगा. सेकंड का पोजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्चुअली. ओके, Only planted for them. Just the one section of the box. They're still worried about rubble. कम ऑन सेकंड भाई. ये किल. ओ भाई नाइस. अल्ट आ गया सेकंड भाई का. इजी राउंड फॉर सेंटिनल्स. बोनस जीत लिया भाई साहब. as well, rebounding off of it with the tap there. Boostio lucky to get it, but instantly you can see the players, the positioning is क्या बोल रहा है? Sentinels. मौसम कैसा है मुंबई में? ठीक ही है, नॉर्मल है. And I think these first इतना गर्मी नहीं है, बट तेरे को गर्मी होएगा बिकॉज़ तू विजिट नहीं किया कभी. अब हमारे यहाँ तो आज अभी थोड़ी देर पहले बारिश पड़ रही थी. Anticipating somebody to be playing in that area, and then both of the post plans. भाई इजी है भाई सेंटिनल्स को ये तो गेम. They've had very nice ideas of how to neutralize. हाँ चैट, जीजी है क्या ये? Remember, 100 Thieves Bind वाला देखना है मुझे less मैच. practice than Sentinels over the course of this offseason, so that could be a difference maker. If you enter in the smoke and opponent sitting in smoke can see you first because your head will be outside of the smoke. Got it. समझा. हाँ मैं वही बोला कि सर बाहर रहेगा स्मोक के पहले. ओ भाई साहब पिंच कर दी इस भाई. That's a beautiful textbook protocol of how to clear an aggressive mount control there by Sentinels. Taking B control, you saw जिंक्स मत करो. अरे क्या जिंक्स भाई, ना मचा रहे भाई ये लोग. देखो 4-0 हो गया. Fighting them on B. I think 100 Thieves had the idea भाई there that it was just 3 जन कैसा होल्ड कर रहे हो. And they didn't realize that Sen were actually wrapping around to pinch the mount players from both sides. Yeah. Got a bit of time to talk as well. पत्ते क्यों डाल रहा है भाई 100 Thieves को हेल्प करने. Over the despite, to be honest. पहले पड़े हैं साइड. Take out a gun or two, but he will be going down. It's a round loss. And not just that. 100 Sen are TR now shot. gonna be up into the next round, a Shot? rifle round,
where the economy of 100 Thieves. Chapty. Oh. Look at the ults they have to play with. I mean, showstopper, Nightfall. You can combo this into अपन ऐसा रुकेंगे anything अभी you वाला wish. परफॉर्म Especially मतलब considering they had a set round. इसको बोलो सी प्लांटेड है पता था भाई उसको पता था उस पे गन नहीं है बेचारे पे चलो भाई सेकंड के पास अल्ट है अभी अटैक के लिए A lot of these teams are going to have scripted beginnings to maps. Assuming things go well for us. Good up, Blood. Let's go. We have good odds. We could do the A thing. Get some hints there. Yeah. क्या बोला वो they did the A thing बोला क्या कुछ ऐसा Counter called unless they're going to take C control. भाई A पे अल्ट कर रहा है वो A पुश कर रहे हैं ये लोग Extremely viable kind of ओके डिफेंस अनरेटी का है सॉरी He's going to be walking down that deep A angle towards A रबल कंट्रोल ले लिया 100 ने ऑलरेडी towards C mound. बट सी ट्राई कर रहे हैं सेंटिनल्स जस्ट लाइक द लास्ट राउंड यहाँ से ये बार कुछ डोर से हेल्प नहीं है दस रिजल्ट दस ओ भाई So 1-for-1, Bang's good for it still. TP forwards, 10, who's vulnerable duck. Oh, again trades 3v3. 3 versus 3, do they still want to commit into this one straight through? Okay, ये kill, oh okay. Respect that. The Util laid down at his feet, so the plant's still going to get off. असुना का अल्ट आ जाएगा अगर वो एक किल भी ले लिया तो Zelsis is low तो ये राउंड 100 का हो सकता है Oh, this is a big flank भाई ये important kill है Important fight. A vital one at that. Celsius peeks it out though. That's a 3v2 now. Double face on the Get high him. low. John Cutie just trying to drop down and survive. 100 wins this. We're being threatened from multiple angles. Sorry? Don't know where to peek from. EU though removing it. Oh भाई क्या मस्त स्प्रे करते हैं भाई ये लोग बर्स्ट करते हैं वो निकाल लिया था ऑलरेडी इसको यू को That battle over towards Mount so important to allow Cryo to get that pick and get back in. You saw Sentinels on the attack side. There were definitely challenges there, but this paranoia, keeping the rest of the team back from Boostio and baiting out the teleport play from Tens by throw कर दिया उधर created that player advantage situation. Tens ओमेन क्यों खेल रहा है? Then वो कंट्रोलर खेलता है अभी the 3v3 retake to happen. उनके नए कॉम्प में बुढ़ा हो गया क्या? Huge round to save 100 Thieves economy. Yeah, we're looking like a big brawl actually. As soon as this get out of the replay. Straight towards A. Look at this. सब स्किन है क्रायो के पास लेकिन ऑफ पे प्रिज्म लगाया है तो क्या भाई कोई भाई मैंने शॉट देखा ही नहीं ओ भाई टेंस गेम प्ले कर दिया ये पैसिफिक में भी ऐसा कोई तो किया था भाई सी पुश किए बहुत फॉरवर्ड 100 टी ऑलरेडी Front section of Mount, how are they going to fight over this one? Doubled up and players low enough that it's short work, quick work for Bang. Finish gameplay 1v4 मैं तो निकाल लेता लेकिन जेल्सिस भाई का पता नहीं शायद नहीं निकाल पाएंगे रहने देते Picks the right timing, wrong timing I should say. It is okay Jelsi's gaming 100 Thieves will be It is so okay happy if Sentinels तनिष्क opt भाई into या तनिष्क I feel like what we saw दोस्तों from 100 लाइक Thieves मारिए against Leviathan हाँ यहाँ पे क्या हुआ देखना है मुझे There's a series of big ult plays being used, or if they can all brawl together, that's where 100 Thieves really look like they were at their best. ऐसा one tap अभी ऐसा Definitely what they were trying to lean into. Good morning दोस्तों good morning उठ जाओ Like you said, the big 20 सेकंड में 4 वाइप पाइस 100 Thieves though did burn some really big ultimates there to try to keep back Sen. And that teleport play from Tens almost अल्ट कर दी यहाँ पे 100 टी के वाइपर ऑन सी सेकंड घुसी घुसी करते हुए ऑन बी टेंस ने टीपी मार के ले लिया साइड तो अब तक खुला हुआ नहीं है ओह क्रायो ओके अब 100 टी का रीटेक भाई लोग को लिंक मिल गया ऑलरेडी टेंस और आसुना टेंस और सेकंड सिटी होल्ड कर रहे हैं He's wondering whether he should commit. Lockdown now. A little bit later. Being delayed. What a beautiful lockdown. Players who are still sitting here into main potentially if they choose to fight. Over, across into the side. That's 100 Thieves. And look at that. The timing's excellent from EU. Asuna is going to be sticking this one with a lockdown defuse. Asuna stick कर रहा है. वही stick कर गया वो. जीत गए. भाई लॉकडाउन कैसे ब्रेक हुआ? अच्छा वो बीमेन पे लॉकडाउन था नहीं लेकिन एक सेकंड मुझे याद ही नहीं क्या हुआ है हाँ लॉकडाउन तोड़ा तभी तो वो स्टिक किया स्पाइक मैंने देखा नहीं लॉकडाउन कैसे ब्रेक किया भाई अच्छा बैंग ने तोड़ा है लेकिन
भाई वाइपर बी में था, वाइपर ने रुकाया नहीं उसको, मारा नहीं भाई। क्या क्या मालूम क्या हुआ है। अच्छे से POVs दिखा देते हैं। Trying to push anybody away from fighting Mound at the start of these rounds. Opening the door here is going to push Cryo off the angle. He pushes forward. ओ भाई सब डोर कंट्रोल ले रहे क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई। ओके। That was a bad flash, but he still got him. As the door opens, you gotta leave. That's a mad play. डोर बहुत डेंजर है भाई। But another sign perhaps that 100 Thieves have not Thieves हग रहा है had the आजकल time to भाई। really अभी find those कितने ही राउंड हुए? protocols in the 7 same राउंड way हुए। that Sen has. Doesn't necessarily mean that Sen are gonna win off the back of that. What a potential play by Bang. He backs up. A little bit too deep there, does Prowler. Now the nade as well. Snake bite towards your feet. What a shot by Bang. EU still. Nice shot Bang भाई। Bangis कर दी उसको। Call to cancel. Sen are so reactive with this one. भाई क्या इंस्टेंट ट्रेड आया है लेकिन अभी देखना 3v3 है भाई। What is the decision? They flip the switch and it does pull players away from C. What a call in the moment. Yeah, Sen going for the freeze in the round. 100 Thieves super reactive. 30 seconds trying left. to find Sentinels. Face your Putting the Nightfall now. Zero tags onto this one. You only have to worry about the back of the sign. That's going to get cleared by the ice. They realize it's C. Open for the take. We have seen 3v3 retakes work for 100 Thieves. They're going to open the door really early on. Viper's fit with his plan for John QT. But they don't have very much space here, do they? And 100 Thieves are already in. Look at this. Already in. Boostio, he's not wasting any time. Forward here with a nade to push them into the भाई angle. सब अंदर घुस गए ऑलरेडी। ओ लेकिन भर दिया भाई। मेरे को लगा मारेगा वो बूस्टियो, मालूम क्या बहुत जल्दी चले गया था अंदर। He's got to pray now. Maybe a few stray bullets connecting, but he's नहीं realized. चलो सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, सेव हो रहा है। That is unwinnable. आज दोपहर को स्ट्रीम होगी? Yes baby. सो जा हर्ष भाई मैच तो होने ना फिर सोएंगे। that are really interesting. The first is that these execs from Sen have 10s committing extremely 100 will 100% go They're home. not trying to bait out defensive utility as much and keep the whole of the team tight. ऐसा लगता है तुम्हारे को कि 100 घर पे जाएंगी? And then 10s teleports in with भाई मेरे को तो लगा बहुत वन साइडेड होएगा लेकिन 100 Thieves अभी मारने लग गई है, ठीक है ना? That time 10s got picked off by EU. So it's an interesting style, but it's not actually getting results at the moment. टाइम आउट आ गया भाई। अल्ट्स किसी के लोड नहीं हो रहे तो विषय चिल चल रहा है भाई। ये डोर बहुत बेकार है भाई, बहुत डोर बेकार है भाई। कुछ भी बोलो बहुत बेकार डोर है। ये अल्ट ने निकाला है पूरा राउंड, अल्ट ने भाई साहब। आज भाई आज ऑल नाइटर। यस बेबी। And they tend to make the right moves a lot. I mean, these mid-round calls, I don't know if it's John QT or what, they have a lot of vocal callers in Sen. But लाइक मारिए भाई लोग। मेरे को बताओ सेंटिनल का ये कौन है? And yeah, Sentinels का both these teams in elimination आजी वाले कौन है? That speaks to the caliber of the teams in Americas, but also भाई साहब क्या कर दी है। We knew it would be absolutely brutal. But frankly, I think both of these teams have been playing at a pretty good level so far. Yeah. 100 Thieves in particular exceeding expectations, considering that they haven't been able John to play QT, okay. an extended portion John of the QT offseason. gaming I whitey. was trapped in jail. Key thrown away. Yeah. To the very last ये moment. कौन है बे? But after they busted him out and were able to do a bit of practice, they've certainly been cooking. भाई टेंस का भाई लग रहा था वो। And they've got decent team coordination too. Chances for 100 Thieves still. अभी अडैप्ट कर रहे हैं 100 T। अभी तो सेंटिनल्स का भी अडैप्टेशन होगा बराबर। Isn't that bad? Cryo's still able to get. क्रायो ने ऑफ निकाला है और वो ए पे लगाया है एंड ए पे ही आ रही है सेंटिनल्स। चलो देखते हैं अभी भाई ऑपरेटर गेम प्ले देखते हैं। आ जाओ। क्लोज लेफ्ट जाके ऑफ लगाएगा वो। Cryo facing down. Target rich environment is here. going to spam this. Yeah, with the Odin. Trying to block this one off. It's slightly off here. TP's all over the place. Second. Just on top of the mound there, revealed. Asuna close to the corner. Does this get cleared behind the box? Everybody running right past him. A great chance. A great opportunity. भाई क्या चलाया है भाई ये स्टिंगर इतना क्लीन। The equalization. Showstopper fired. And another one claimed. 2 players left standing for 100 Thieves with the judge in hand for Boostio. 3v2 एक फ्लैंक आ रहा है। Quite difficult, but there's the Zelsis रबल पे खेल रहा है भाई ओडिन के साथ। If anything, isn't it? Yeah. He's trying to make his way over to the rifle. He's got to suspect that Zelsis is still here. Look at him trying to clear this one out. The flank timing though. Bang! Spots it. 2v2 now. 2.
Tens के पास shield नहीं है. Want to play this one. Smoke was laid down a little bit higher. Ice and flying straight forward. Nah, bro, he shouldn't have pushed that like that. Leave it just to the one. No more sound cues. That's like Utah from Sassy, but he's just poking his head out. Nah, bro, he shouldn't have pushed that. The shoulders. No mammoth clutch today from Bang, at least not yet. But he's doing all right. शायद उसको लगा हेवन से वो सीज आया इसलिए वो हेवन पीक कर लिया रहेगा. I was excited to see कुछ तो communication कुछ ये हुआ रहेगा. He's on chamber. That was the role that he's known for. But this is now twice where he's been punished at the start Good of these night, rounds Kalyani. for just being a bit too aggressive. आज दोपहर को स्ट्रीम होगी हाँ. दोपहर को नहीं 4-5 बजे होगी मतलब. Getting punished by Sentinels. There was that round over on C where they opened the B door. Hello Zaid. No, it's fine. I literally will just kill him. Trust. The round's already started here. क्या बोला? Opening seconds. The exchange of util here, but this is of course just the eco kill. Stinger though, still some danger towards it. Damn. Tens returns though. एक ट्रेड नहीं निकला है सिर्फ. That's a 2v3. Sounds like that's Sentinels trying to just Will, get a bit hello. of a handle on Tens. Like, dude, can you just play the percentage play? And he's like, no, I'm actually feeling it, and I'm just gonna go run around and kill everybody. Ah, only if he hit. Boostio. Oh भाई. Lined as a भाई अगर वो शॉट कनेक्ट करता ना, So win versus the जॉन half क्यूटी था bar. शायद. अच्छा जॉन क्यूटी बोल रहा अपना ये था बैंक था शायद. बैंक अगर वो एक शॉट कनेक्ट करता ना वो टेंस भी मिल जाता उसको. अब तो जी भी जीत गई. अब तो सेन को जीतना पड़ेगा ऐसा क्या? They're opening up space for the attack side, right? And so, if you're in a 5v5, you can actually control most of the map on defense. But if you're in a 3v3, and Sentinels know that there's no players A, now the defense is at a big disadvantage. Yeah. So, going even in these fights does not favor Thieves. They need to be decisively winning them. बैंक को देख के मैंने रिकॉन लिया. गेम प्ले तो नहीं खरीद सकता ना लेकिन भाई. Section of C. I thought Tens was going to take the orb there. चलो असुना का अल्ट आइला है भाई. असुना भाई थोड़ा अल्ट दिखाओ डिफेंस का थोड़ा अच्छा. This is one of the first rounds where Cryo's got established on a really deep angle, and if Sen want to go back to B, they're going to need to use good utility to clear him off. The wall is certainly helpful, because now Cryo could get peeked from a variety of different angles. Oh my, what is that? ऐसा मारा मैंने देखा ही नहीं. We've got to see a replay of that at the end of the round. I don't know whether that was through the smoke. It looks like Asuna was jump spotting, and Tens hit an outrageous headshot. That's what it looks like, but I can see at the end of things anyway. 3 जन C पे यहाँ पे B clear और यहाँ पे second by घुसते हुए B में. Boostio gone. This is सैसी ने B push वाले को मार दिया. शायद स्पैम में मारा. I am not sure. और यह स्मोक नहीं था और ऑपरेटर शॉट कनेक्ट. Tens kills all over the bloody place. कुछ भी मार रहे अभी भाई. What's the call now? 30 seconds left. Run over to A, realizing that Bang has been भाई playing. मैं भूल ही गया अमन बैठा है. Good awareness from Zekken. अमन चले गया. Right out though, so Bang, there's chances here. John QT is weak. Bang's got a little smile on his face as he shoots Zekken's body, just letting him know in the 1v4. It definitely feels like Sen. इसीलिए किया मैं. हाँ मेरे को याद ही नहीं तो था. Sent this play for Bang. It hurts, but saving the gun has to be it with only 350 credits. Good morning, Ayush. Actually tough too because he'd love to get another kill or even die if he could keep the rifle in some way. Because और यहाँ पे सेव करेंगे 100 TK bang with a bang. कॉम्बड़े कॉम्बड़े शामड़े. अभी भी असुना के पास ऑफ है. अगला राउंड सेव होने वाला है 100 का. तो इसका मतलब ये 8-3 और पूरा गेम जाने के कगार पे है 9-3 के. तो क्या हमें एक 9-3 कुर्से देखने मिलेगा दोस्तों? गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग. सब लोग उठ जाओ. आ रहे हो स्ट्रीम पे तो सबसे पहले लाइक मारिए. चलिए चलिए चलिए. शी यार मैंने देखा ही नहीं. मैंने देखा ही नहीं यार. Yeah, okay. Last year, यार मैंने देखा ही नहीं. हट. Level of quality, the on paper ability of this. यार मेरे को शॉट देखना था मैंने देखा ही नहीं भाई. हट. But this year it's really showing itself. Now that they've got the foundation. JM Harsh bhai, good morning. We miss your Hagasa gameplay. Tomorrow at 4 or 5 PM we will do the Hagasa gameplay. State of the economy. Asuna does have a showstopper here, doesn't? Bro, what is that recon? Just dropped down, but does do so for the eye.
Information going to be called out here by Sassy. Knowing that there's players there popping up. Tanish Gaming Whitey. There's a gap. Just able to wall the jump spot. Bang. Does not want to dance with death. Not quite. I'm backing away. Sentinels, they don't really like what they see here. The door was opened up towards mid-B. There's going to be a fight to be taking place if they choose to really collide into each other. But no, just parting ways once more. And I'm not sure that 100 Thieves... असुना खोल दे भाई, असुना खोल दे, मेरी बात सुन, मैं कॉल दे रहा हूँ भाई. वो सी जा रहा है यार, उनका रीड है सी का. Not using the boom bot, just making sure that they're utterly silent. Cryo. John's hearing all this. Yeah, it's got to be surely. 40 seconds left. जॉन को आवाज है, उन लोग ने ये छोड़ा. ओके, वो ये जा रहा है वापस. बैंक का हाँ, never mind. भाई अभी अकेला ये पे था, वो मर गया. Look at this, no armor, running into the Cryo. He wants to be a playmaker, and this is the time to do it. Second. Taken out, guess what? Sentinels be paranoia now, flying out through them. Players into heaven, they need to clear this one. Showstopper, this could be the winner though! Straight into the wall! Plants down though. It's 2 versus 2 and 1 through main. Satchel, preventing the repeat. Dropping down now. भाई प्लांट रुका देता, सुना. Really disciplined. हगीज कर दी. But it's just EU. 7 John QT into the pit. भाई क्या राउंड निकाला है जॉन क्यूटी ने भाई. कॉल दिया है, 4 के लिया है भाई, सब फुल कैरी. हाँ कसम. Crazy luck, crazy info by for the team. Really not finding it. Beefed the satchel movement and was unable to find the rocket. I think he just launched it into the door frame. बेचारा आसुना थोड़ा ये हो गया यार. वो ये हो रहा था ना, क्या उसे कहते हैं, सीज से वो चूस रहा था ना, तो इसकी वजह से उसको लगा कि उसने ट्रैवल कर लिया है ज्यादा एरिया, लेकिन उसने ज्यादा एरिया ट्रैवल नहीं किया था क्योंकि वो सीज था नीचे. ओ भाई गुड बाय कर रहा है. Unfathomable difference. Now, I'm surprised that I'm saying this, but let's send this down to Golden Boy, who's standing by in our audience. What could possibly go wrong? तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले चलते हुए आसुना भाई ने अपने अल्टीमेट खोला, लेकिन उनका अल्टीमेट तो उनके ऊपर ही वापस आ गया था. लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगली बार आसुना भाई पे अल्ट आएगा तो जरूर वो कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. अभी तक पूरे गेम में जॉन क्यूटी जो है वो कुत्ते माफिक मार रहे हैं और सामने वालों को क्यूटी बना रहे हैं. टेनिश गेम प्ले हमें अब तक दिखने नहीं मिला है. मेरे को टेनिश भाई का गेम प्ले देखने का है और अच्छे से. और ये भाई क्या कर रहे? Anaheim? Okay, Anaheim. Shout out. Anyone else from Anaheim in the house? Okay, we got about 5 of you. Okay, what sign? What sign do you have here? I'm curious. Oh? It's John QT with Absolute Cinema. Absolute Cinema. Love it. Thank you so much. That was an awesome sign. All right, let's see. Okay, चश्मा उतारो ना. Ladies over Never. here. Hello. What's your name? Where are you from? I'm Leslie. I'm from Orange, California. Orange, California. क्या नाम बोली वो? I'm Kiana, and I'm also from Orange, Leslie. California. Okay, so we got 2 people from Orange. Anyone else from Orange in the house? Yeah, right behind. Okay, that's what's up. All right, what signs do we have here? Celsius, just one chance, please. I'm begging. Half Moon Leslie, Instagram, Twitter, please. Just once. Shoot your shot, Queen. I appreciate that. Okay, so are you guys friends here? You also cheering for Sentinels? You're sisters. Okay, and you're cheering for Sentinels too? I'm cheering for 100 Thieves. I have a Let's Go 100 Thieves sign. And then brought to you by Bang's mom and dad. Yeah! You know what? I love this. Good, clean, wholesome signs. That's what we like to see here at VCT. Guys, give it up one more time for these amazing people. Give it up for yourself. And let's get ready to send it back over to 2 casters who have contractually obligated to commentate every Sentinels game for the Vibes and the Cloud. It's Brennan Sideshow. Yeah, definitely needed the followers, of course. Auto included. Had the lawyers drafted up. That was a much better attempt at that segment compared to yesterday. It certainly was. Say. I mean, you know. Nice gameplay by Sentinels indeed. अभी देखते हैं कि 100T अटैक कैसे करती है दोस्तों. 9-3. Sen in the lead here this time on the defense. सौ चोर. This is a सौ चोर और Sentinels. And now the pressure is going to be on us. जिम आ रहा क्या? जिम हम जाएंगे शाम में. Trying to open up these sites, blast open choke points.
Second joining the defense. क्या देख रहे भाई? मैं तो हाईलाइट देख रहा था. I don't have second doubts about this one because 100 Thieves in a way over towards A now. अकेला C पे छोड़ के आ गए भाई उसको, तो दैट वो इन्फो ले, लेकिन वो भी रिटर्न आ रहा है. मेरे को लगा इन्फो लेगा वो लोग, सो दिस गाइस कैन रोटेट अगेन, बट नो, दिस इज अ डिफरेंट प्लान. दे आर जस्ट पुशिंग ए. और किसको तो डिंक पड़ा मैंने देखा. जेल्सिस इज ब्लाइंड जो साइड पे है. सासी वेव्स. Celsius get away with murder onto the side here. EU eventually going to be removing that pesky anchor in play. A nade rebounded though. That'll force the spike to be planted in a different direction. Drop ho gaya ek. And oh my god, huge kills by Zekken, bro. 100 Thieves forced to be active in that post plant, trying to salvage what had happened as everybody just ran into Celsius and got mowed down. Pretty tragic. A little bit of lost coordination there again. Asuna coming around one side of the pillar on his own, actually won the duel, didn't have other people to play with, and then this side, भाई खतरनाक यार, खतरनाक. Surely for 100 Thieves now. Bro, this guy is so passionate. Yeah, committing to it. The force. You have to at this point. The map's getting away from you. Trying to go for the fast play at the very start of the भाई round. देखो मैं ना वॉच पार्टी कर रहा हूँ ना, तो अब तुम लोग देखते हो कि मेरे को मैं अभी है ना रिसेंटली लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, रिसेंटली 1 महीने से है ना अपने को व्यूअरशिप थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा है. ठीक है, तुम लोगों की दुआ से, तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो इसलिए. और अभी VCT असेंशन नहीं, अपने रीजन का VCT चैलेंजेस चालू हुआ था, तो उसका राइट्स मैंने मांगे, फिर मेरे को लकीली इसका भी राइट्स दिए राइट ने. सो मैं स्ट्रीम इसलिए कर रहा हूँ वॉच पार्टीज, क्योंकि है ना मेरे को भाई ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई ये गेम ने अपने को इतना दिया है, तो एट दिस पॉइंट अगर अपन ये गेम के टूर्नामेंट्स को लोगों को और दिखाए तो लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ेगा. अल्टीमेटली लोगों का इंटरेस्ट वैलोरेंट में और बढ़ेगा अगर मैं वॉच पार्टी करता हूँ तो. ओह माय गॉड ब्रो, 3 people pushing up CT and John QT easily spraying them down. 3 players fall just like that. 100 Thieves. Nashi clock soon. Try and take some risks here. Fight taken towards into the back of the spawn, but the discipline from Sentinels is just sublime. Always doubled up. Boost the yo. What a shot, baby! To the brain now. Maybe he can make it a few more potentially. A tap. Sassy. Wow, bhai. Wow. वाह भाई. And if the pistol round wasn't enough, being able to dismiss the अचीवमेंट एक्सेस मिलना, उसे यूज करो, उसको प्लस सीख ही रहे कुछ. हाँ वो तो है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब चैलेंजेस स्ट्रीम कर रहा था ना, चैलेंजेस के पहले वैलोरेंट अपने चैनल पे स्ट्रीम कर रहा था ना, तो आई वाज गेटिंग द सेम व्यूअरशिप व्हेन आई व्हाट आई वाज गेटिंग बाय व्हेन आई वाज स्ट्रीमिंग चैलेंजेस एज वेल. तो बट स्टिल आई वाज चूजिंग स्ट्रीमिंग द वॉच पार्टीज वाज बिकॉज कि आई वांटेड माय पीपल टू वॉच द टूर्नामेंट्स जो इंडिया में चल रहे हैं चैलेंजेस के टाइम पे. सो या अच्छा लगता है भाई, मतलब ऐसा मेरे को करना है भाई, मेरे को करना है कि अपने गेम ने अपने को इतना दिया है तो वो गेम की कम्युनिटी और स्ट्रॉन्गर बनानी है और बड़ी बनानी है भाई. मतलब मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि बड़ा बनाने के लिए, पर भाई ट्राई तो कर सकता हूँ ना जितना हो सके, जितना अपने से हो सके. Extremely execute heavy on their attack side. Didn't really have too much differential in pace. But once again, 100 Thieves kind of came late into the off season. harshkhel क्लिप्स वाला कंटेंट रिकमेंडेशन में क्यों नहीं आता? डिपेंड्स. बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे नहीं आते. जो क्लिकेबल रहते हैं वीडियोस वो रिकमेंडेशन में आते हैं, जो नहीं रहते वो नहीं आते. सोता कब है? अभी इसके बाद सो जाऊंगा ना. Last chance to be able to make it to Madrid and a long road ahead, even if you wanted to. भाई कम बैक दिखा दो यार, अनरेटी भाई, कम बैक दिखा दो, मजा आ जाएगा. Certainly are. Zekken भाई
ऊपर चढ़ते हुए, There is the answer. बहुत ही Maybe it's अच्छा heroic अंगुलर individual. लगाते हुए। Somebody to step up to the plate. बोनस राउंड है यहाँ पे, नहीं बे फुल बाय है। नहीं बे ये बोनस राउंड है ना इनका। Question all over the front section. B and C, 100 Thieves. Cryo in each of these 3 rounds has been trying to get a look. भाई तो आजकल पूरे दिन लाइव रहता, सोता नहीं है क्या? सोता हूँ। He got denied by 10s in the second थोड़ा round, ऊपर denied नीचे by हो रहा है बट Sassy's utility. सो रहा हूँ। And it looks like he's going to try to make something happen again. Forward on the angle here. Now Zekken, when we got the Guardian, is going to have to be precise and surgical. Good nade, big nade. Oh my god, bang! Huge kills भाई। और ये भाई क्रायो का पीक थोड़ा सा अर्ली रहता ना तो वो मार देता सैसी को। पर क्रायो को फ्लैंक बहुत अच्छा मिल गया है। ही इज ऑलरेडी अपर्स। ओके अपर्स नहीं जा रहा है, वो सिटी गया है। नहीं यार थोड़ा ओवर कुक कर रही है यार 100 टी अभी। लोगों को ये मिल गया था ना चैट। पता नहीं भाई समझ रहा नहीं है। With the mid-round call because he used both of his smokes on A. Didn't have anything to obscure that sight line. Asuna might have just bailed them out there with that kill on Celsius. That's huge. Yeah. Big, big kills. They To won the shut round. down any danger of a retake coming through. 100 Thieves destined to get up to 4. They got the round. So overcook नहीं था, वो बराबर कॉल था। This will be round win for 100 Thieves, like you said. अर्ली स्ट्रीम लैस का फनाटिक वर्सेस लाउड में भी 11-3 कमबैक हुआ था, वही हुआ था भाई, उसके बाद में कोई हुआ ही नहीं है। 100 टी ही को विद द डेज। हाँ भाई मैंने भी लास्ट 100 टी का वो तभी गेम देखा था। अभी भी पैसे बहुत है ना सेंटिनल्स पे या नहीं है? This fight in rubble defined whether or not really the round was successful. One enemy remaining. वैसे तो रहने चाहिए सेंटिनल्स के पास अभी। ओके नहीं है। They are saving this. आसुना के पास अल्ट है। They are fighting A. Okay, both of the teams are fighting A. Let's go. डोर से फ्लैश आएगा। Okay, Tens one way कर रहा है वो। B, the safety policy. Satchel's through now. Fade eyes exchange. Lighting his players up. Nade rebounds. It's going to be forcing them out wide. C's on top of it. It's all being combined. Asuna भाई के अल्ट थोड़े केस वाले। Asuna uses his ult already. That's an enormous tool for them to try to get into the site and to burn it so early on in the round. On an anti-eco as well. Not what 100 Thieves will have been looking for. बहुत जल्दी अल्ट यूज कर लिया यार वो। थोड़ा अगर उसका वैल्यू निकलता तो। Same spot again from Cryo. Every single round on the attack side. क्रायो ने दिखा दिया है ना अपना फेस कि वो बी पे लर्क कर रहा है, तो वो सी पे जा रहा है भाई लर्क करने। भाई डेंजर प्लेयर है यार। Making the noise over towards A. This is keeping a lot of Sentinels over. But guess what? The bodies are just moving now. Look at it. Reinforcements sent to B. They're going to a C. Worried about it now with the noise being cut, and it seems like the read is almost correct here. Just retake onto A and might pay off for them. But the turret broken. That's the signal. आसुना भाई और फार्म कर रहे हैं। अल्ट अपना गला है, अभी और फार्म कर रहे हैं वापस। No major flank coming through. No pressure onto these mountain players, and that's where the plant is for. What a shot, bhai, Boostio. Boostio has been a little out of the action in this game so far, but that's a good one for the confidence too. The rifle. Paranoid with a satchel forwards here, but Zekken can't really escape it. Good round by 100 Thieves, bhai. Only 2 players remaining. Celsius just crazy round. With the rifle. Tens. TP trying to get out, but no. भाई try तो किया था भाई Tens ने वो। Celsius scurries away with what little reward he's got from this round. Expected result here then, as 100 Thieves managed to win on their anti-eco. But it took them a fair amount. You think about it though, at the beginning of the round, Asuna used his Raze ultimate. He's already got 4 points towards it. Being able to collect an orb, go forwards, collect a couple kills, that kind of thing. Asuna के पास already 4 orbs आ गए। For that. Having been invested early on. Danger है भाई थोड़ा आसुना। These are the rounds that really matter though, when Sentinels gets back up to rifles and things are more even across the board. And these are also the rounds where 100 Thieves don't have that snowball available from the उसने और लिया 2 किल लिए और एक बार मरा, तो 4 orbs आ गए भाई।
ult into ult as they got to the important round. Yeah, save our guns. Good shit, boys. Yeah, good shit. One round at a time. That's how you got to approach these moments. Yeah, right mindset. Understand that it's still winnable for them. Into Thieves. बारिश अरे थोड़ा सा जेल्सिस भाई थोड़ा सा लेट हो गई आप भाई लेट ही जो रही है अरे भाई खोल दिया fast. There's no one really to help him out as the spike dropped down. He used the only one contesting. How can he get one still? What a nade. No chance of a swing. He's got to wait. He's got to wait for teammates. He really does. Paranoid as well, though. This is an onslaught with a util. And finally, oh my God, Zekken. भाई drop करके टपली दे दिया आसुना को उसने. Takes the head clean off. Cryo's lurk towards B once again in the round has actually allowed them. Oh! What a spray down from Cryo! He found them the B site. And that's nasty. Some major impact there. Vision force into the box there from Bang. Was getting the one, but Cryo surely. 2v3. Surely he's done enough. Still, it's a man disadvantage. Boostio. Shot, bro. This guy. क्या clean है भाई ये. Zalsis is coming through the door again. Cryo's covering it, but now with the flash. 2v2 है. That one is just perfection. 1v1. Omen versus Omen. Looking around, waiting for the timing. Oh भाई. That's all him with the Guardian. Boostio versus Tens हुआ था भाई. Tens ने Guardian से चापटी दिया इसको. Damn, let's go, man. Differential picks up the Odin and let's go, man. With map point. Map point आ गया है. After all that Cryo had done there with that push in, one of the first rounds with that B-lurk actually. भाई Guardian से चापटी दिया. Tens का POV दिखाओ भाई. Really scattered even before that. Bro, Cryo played so well. These kind of kills as 100 Thieves scurried from A to B. Yeah. Ended up being a bit of a backbreaker. But it did come down to a 1v1 that was winnable for both sides. Hello, Villa. मरूंगा पर 100T को सपोर्ट करूंगा. Oh भाई साहब. Up to 12 for Sen. One more round will do it in the ult to be built up. Big fight. 4 players. Good control by Sentinels on A. Zekken के पास ult है. It is fairly quick. This भाई easy win है भाई Sentinel का. चलो GG. May choose to just whack this down and अगला मैप है Bind. Still to be dealt with. This is just giving them that space to choose to contest this one. Waiting for the full retake, and it's a smart play to do with the amount of ults that they've got online. It should just Bind देखना, Bind में मजा आएगा. Thieves, they're the ones that still have to take it the extra mile, even with the spike planted down. That's why they're playing deep into spawn here, just with Bang though. And he's got to really come up big though. Blinded. भाई क्या util किया है यार, क्या util usage है. Fade ult, what a good flash. They don't have a bloody clue. And now with the lockdown on top, it's all layered perfectly in between, and the reposition of Boostio. Just out of dodge, but it's just out of Cryo. And what can you really do? Not much. Flawless. Okay, एक ही kill हुआ. GG. Once again, those ultimates coming online. भाई 2 घंटे में बोर्ड से भाई हंसने पे ले रहा है भाई. 10th का या 12th का है? And honestly, all of the threats that 100 Thieves threw at them really nicely dismissed. This 10th board से या 12th board से? Good reactions, great mid-round calls. हाँ भाई 2 घंटे में तेरा बोर्ड एग्जाम से 10th का है या 12th का है? 10th का है भाई. मेरे को याद है जब मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था ना, तो भाई मेरे को कुछ सूझ रहा नहीं था भाई. मैं बहुत नर्वस था. शायद तू रिपीट कर रहा रहेगा इसलिए. ओ भाई भाई शॉट्स तो पड़ रहे हैं, हैवी शॉट्स पड़ रहे. इतना डेंजर मूवमेंट्स नहीं हो रहे, क्लचेस नहीं हो रहे इतने डेंजर, लेकिन जो शॉट्स पड़ रहे हैं ना कुछ कुछ वो बहुत डेंजर हो रहे. ये मेरा स्ट्रीम बंद हो गया था क्या? चालू है बॉयज. अच्छा मुझे बताओ पूरा सीरीज कौन जीत रहा है अभी? क्या लग रहा है? अगर सीरीज मत बताओ. चलो सेंटिनल अभी जीती है राउंड. इज इट गोइंग टू बी 2-0 और इज इट गोइंग टू बी 1-all? 2-0 या 1-all? Congrats Villa भाई. 2-0 या 1-all? I guess I'll go with 1-all. मेरे को ऐसा लग रहा है ये 1-all होने वाला है. हाँ बूस्टी और बैंग भाई मेरे को लग रहा है अभी उनका हाथ गर्म हुआ है. अभी अगले राउंड में वो लोग मारेंगे. ओके सब लोग 2-0 बोल रहे भाई. रुक क्या लिख रहा है ये?
इट्स अ ओल्ड क्लिप, गेस द लॉबी। ठीक है। अबे स्पाइक रशे टट्टी। लॉबी गेस करूं? भाई वो रेना लिटरली सो गया है उधर। क्या है ये भाई? आए रे भाई, हट, मेरे को देखना ही नहीं है पूरा। That time right now. हमेशा बॉटम नाम है भाई इसका। भाई हमेशा बॉटम नाम है इसका भाई। ये सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड भाई। स्टिल ही इज हिटिंग हेडशॉट्स ब्रो। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो मैन, लेट्स गो। गुड एम, गुड फ्रीकिंग एम। अभिषेक भाई ने 40 रुपए दिया है और बोला है कि 2-0 होगा। ओके ओके अभिषेक भाई, ओके बेबी, आई सी यू, आई सी यू। लेट्स गो, लेट्स गो। थैंक यू फॉर द 40। भाई बहुत अच्छा मारा इसने, और इसका कॉल भी मतलब कॉल्स भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ओह शॉट, ओह शॉट। मतलब अगर कोई है ना अच्छा रैंक वाला प्लेयर रहता तो वो ये एंगल है ना ऐसा डायरेक्टली पीक नहीं करता, ये इतना वाइड पीक नहीं करता ये वाला एंगल। ये देखो, ये देखो, ये ऐसा पीक नहीं करता कोई। तो आई वोंट से दिस गाय इज अ प्लैट, बिकॉज प्लैट इज क्लोज टू डायमंड, एंड वो प्लेयर्स ऑब्वियसली वैसा पीक नहीं करेंगे इतना वाइड। तो आई विल गो विथ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड के अराउंड कुछ। तो 2-0 shushing face. अभी एक प्लैट है, अभी एक प्लैट है। दैट टाइम वो सिल्वर 2, नाउ इज प्लैट। ओ भाई, भाई सिल्वर 2 में तू ऐसा मार रहा था बच्ची। भाई सिल्वर 2 में ऐसा मार रहा था ये। नहीं नहीं भाई, ये मेरे को नहीं लग रहा सिल्वर 2 है ये। यार एक तो ये बंद है भाई, हट भाई, मेरे को देखना ही है। 2 रुपए का वेबसाइट। वो हमेशा का स्पेलिंग बराबर लिखा है क्या मैंने? नहीं, क्या रे असेंडेंट बोल की शेमड़े है। 30 प्लेयर वाईटी। ओह ओके, 0.1 1600 DPI। ACP पादुमन बोलते भाई को। One down. अबे बॉट। Duck. शॉट। Spike planted. 3. Blocking sight. दूर है बाकी। मिड पे एक टॉप ट्यूब अब पास आ गया होगा। One enemy remaining. भाई ये सिल्वर है तो मैं आयन हूँ भाई। पीछे गया तेरे शायद टीपी करके। ये बंदा डायमंड है। स्नोमैन है भाई, स्नोमैन। नहीं 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 नहीं, बहुत बैक सीट हो रहा है भाई, बहुत बैक सीट हो रहा है। अरे स्नोमैन है भाई, स्नोमैन। भाई लेकिन क्या मार रहा है भाई ये। Tried. क्या शॉट्स मार रहा है ये ब्रो। दैट्स असेंडेंट, दैट्स असेंडेंट ब्रो। ना ब्रो, फ्लैट कैसे हो सकता है ये?
Spike planted. 3. भाई उसने क्या खेला है? मिड पे एक टॉप ट्यूब अब पास आ गया होगा। One enemy remaining. मिड खोल ले। नहीं भाई अल्ट खोलने वगैरह कॉल्स दे रहे भाई हट, इसलिए मैं डायमंड बोल रहा हूँ, इसलिए मैं डायमंड बोल रहा हूँ भाई। क्या 2 रुपए के कॉम से भाई, डायमंड डायमंड भाई। मैं सही बोला था यार, मैं सही बोला था। क्लिप वाला सेक्शन इसको नहीं दिख रहा है ना? क्लिक ऑन दिस। Enemy spotted. B. Sova removed. Return to dust. My ultimate is ready. Your duty is not over. One enemy remaining. This is crazy. For you. I have the spike. Placing alarm bot. Scanning ahead. Next side. Wall raised. Last player standing. नहीं सिल्वर तो नहीं लग रहा है, ये अच्छा प्लेयर लग रहा है। डायमंड असेंडेंट प्लैट। रैंक किधर डाला इसने? डायमंड। भाई बराबर गेस करता हूँ यार मैं एकदम। ओ भाई एनालिटिक्स चल रही है। शिट यार मेन पार्ट मिस कर दिया हमने यार, मुझे एनालिसिस देखनी थी यार। Hey, buddy. It's in the mid-round. Well, you know, you guys decided to go and have some fun without me, but I do respect it. Analysis And देखनी an थी excellent यार, breakdown as बर्बाद हो well. गया And I think it मैं। just illustrates so well as we क्या मिस talk कर about दिया the rest of the मैंने? Sentinels. Second, I think, is a good place to start off here. That this team feels comfortable. They feel free to do what they need to. हौस भाई मैं बता रहा, बैठे बैठे सो जाओगे, चश्मा लगाया है पता भी नहीं चलेगा। बात तो सही है वैसे। They were so ready for their protocols. It felt so solid in those. ऊसा का ले कले। Fire in the hole! It's garage push. Help. You should run. ओ भाई क्या हो रहा है? तो Fire in the hole! ओ भाई ओ भाई Is there one? Yeah, let's go, bhai. Tens on Yoru. Bhai. To get those double flash kind of synergy there. Yeah, I feel like it definitely is a little bit weird. I mean, that dog Let's does get go. that information, but yeah, Tens the Gecko on goes Yoru, crazy. I mean, baby. actually, you get that wingman being able to plant. You get the Molly, so much delay, and you just pick up your flash and get that information. But I guess they are Single kind of lollies खेल रही है 100 veering a teams. little bit more towards that old meta comp. But the Gecko and the Fade on the other side. Bye, is something let's that I go. love Majoristic to see. gameplay. No Sentinels क्लर्च को on बुलाओ, either क्या side, मालूम but भाई they do किधर have है those क्लर्च double भाई? controllers, which I think चैट में works आ जाते really अगर well रहते on तो। defense on bind and allows more aggressive plays on both sides. It absolutely does. Saucy on No the Sentinel solo comp, initiator yes. here. दोनों साइड पे Again, नहीं looking to see कोई what comp he नहीं है ना? learned from the issues भाई Sentinels योरू का had फोटो on नहीं मिला इनको split. full। Can 100 Thieves exploit that? Can they call the यही attack फोटो side है क्या they योरू need का? to छी stay in कितना this बेकार लग series? रहा था। It's fine. So you think this is their best shot to bring it back?
All right, folks. Well, it's time to farm some impressions for this elimination matchup because time could be running out. Does 100 Thieves have it in them to be able to force this game 3, or will Sentinels end it right here and now? Let's send it back over to Brennan Sideshow. There's so much हाँ on the line, कसम isn't there, जेल्सिस TB? भाई I तो mean, मचा listen, रहे भाई this is it. मजाक से Elimination हटके game for both कोई these भाई teams here, but जेल्सिस Sentinels भाई on the अगर जीते precipice ना really of जीते being able to जेल्सिस survive भाई that one एटलीस्ट day मचा रहे longer. मालूम Fight for that battle of और the मचा रहे तो 100 ऐसा Thieves. I सादा mean, सुदा नहीं they're भाई losing एकदम this हैवी now. This मचा map रहे right here, it's April जिंदगी when में they'll कुछ next करना है play. तो That's a जेल्सिस भाई while जैसे away, and that is a heartbreaker for them, but they have क्या to अपडेट stop it अभी here भाई on डिसाइडर that. मैच That's an absolutely नहीं डिसाइडर मैच नहीं है सेकंड मैप पे 100 Thieves. भाई लोग मैं थोड़ा कुछ है ना देख के आता हूँ कि कुछ खाने को है क्या क्योंकि थोड़ा सा नींद आ रहा है ठीक है And they use that double initiator utility to go crazy on big execs, especially down short, sometimes going for hookah floods, generally ignoring the more outside areas of the map like B long. But that's where we're going to see the fight on the pistol. Tens is facing. Decoy sent in first, baited out the shots. Knows that someone is lurking around here. Wall is interesting through the TP. Some work up onto alternate angles. Now the dog's being committed on top of that one. Spots 2 players. Now, 100 Thieves know that Sentinels plan on this map because they've seen it in the off-season, and towards the end of last season actually, is to try to pressure B-Long and Showers really heavily. They're not going to try to defend short that much. And 100 Thieves are just walking down. Attempt here with the plant. Nado rebounded. Stops it in its tracks. Rest in peace, little bro. Yeah. You did good. No cheers from the crowd. Put it up with the orb here, but Boostio now going to attempt to plant this one. He will get this one off, so 5v5 retake. Look a bang at short. And this is an important one. Many players to meet him. So many players here on the flank. To the side. It's all about this, holding this angle. You get the first one. Sassy's got util out. Okay, मेरे को चॉकलेट पसंद नहीं but मुझे चॉकलेट खाना पड़ेगा Just going wide here. Battle on 2 fronts though. Out towards the side. That's all Boostio. भाई क्या मार रहा बूस्टियो Off on a mad one with that one. 2 kills. ना हो रहा टेंस भाई से ओ भाई 100 टीम मचा रही है क्या 2 left standing. John QT in second, doubled up now into lamps, but time ticking away with that spike. One enemy remaining. Fading away. No Bhai chance saab. at all. This is 100 Thieves. राउंड निकाल दी इस भाई 100 टीम ने राउंड Okay. सॉरी भाई Okay. सॉरी भाई Not going to make too much difference क्या मार in रहा this है one. Yeah, great क्या मार रहा है pistol भाई? from 100 Thieves. That is a really interesting Viper wall that they used in the middle of that round as well. So the way that they are planning to create pressure over towards Showers was with the Viper wall and then with a haunt. So if you've got Zekken and Zelsis fighting over Showers, as they often do in this defensive setup, भाई इनके राइट लीग अलग ही चलते हैं भाई अपना कभी ऐसा नहीं चलेगा everybody pathing down short. It's the eco for Sen. They've stacked with 5 over towards B-Long. Guess what? So has 100 Thieves. Okay. Oh, bhai. Farming up the orbs. Boostio मचा रहा है भाई Choose to commit into this one. Satchel. Oh my God, bhai. Nade on top of it. Sassy, he wants seconds. Greedy boy, but gets punished. That's clean from 100 Thieves. And Boostio is getting मचान चल रहा है भाई ultimate as well. मचान चालू हो गया भाई वो भी Got the classic on the pistol round actually coming in. मेरा राइट लीग ऐसा क्यों नहीं चलता भाई एग्जैक्टली भाई अपना अलग ही चलता है भाई If you want to go around the map and farm orbs as 100 Thieves, then पहला मैच those कौन are the जीता areas the सेंटिनल Sentinels like to fight over the most on defense. If you start going towards Showers, there is a serious potential that you're going to have a Skydog in your face, Tens flashing through the teleport, and you're going to get crunched. So I think 100 Thieves, their best chance is just to stick to the middle lanes of the map and go for these big burst executes down short. Double faced up. There's a mosh pit behind them. You've got to respect this if you are. चार जन एशॉट इन आ गए और भाई यूटिल हाथ में आ गया यार उसके Still holding their ground onto the top of the box. Tens but got Tens is two. still alive. Right here with the decoy sent forwards. Cryo. He knows it though. Holds his ground. Gate crash. bro he to TP'd away on the evacuate. time Close one. But now that ult is online, Boostio, having got the plant down, कोई साइड खेल रहा नहीं है तो इसके अल्ट का कुछ मतलब नहीं है They're in the way. Spots it though. Sends it flying. Bang. this is so aggressive. Vacuums up the space, doesn't he? Shows a little bit of respect though.
tail Okay. end of this one. 3 versus 3. Flank attempt by Tens right from behind here. Cryo. Bang मरने वाला है. Back to all of Yeah, it. he dies. All of it indeed, and he does not know it. भाई well played by Tens भाई, well played by Tens. Tens ने वो क्या TP किया भाई B पे और and he decided to flank. That was super good. Showers and then disappeared. They had no idea where he was coming back from. And you saw multiple people on 100 Thieves looking towards Showers, expecting him to appear from there. He says peekaboo to Cryo and a bullet in the back of the head. Cool ideas though from 100 Thieves. You can see that they are trying to path down short in these rounds while still applying pressure to Showers. They have fade utility from the front, mosh pit in the back. भाई बहुत अच्छा खेला Tens. बहुत अच्छा. भाई साहब चुम्मी. To deal with what 100 Thieves are throwing at them. I think we're going to see tons Tens of के बाद अभी retake 2 attempts और में ult because आने वाले 100 Thieves are dumping major utility into these execs. It's really difficult to anchor. The major game plan when they were playing against the Vietnam. So what do you two try and get the plant down into the post array? Bang अकेले खेल रहा है यहाँ पे. Standard take over towards B long. Using the same tools now. Ice and flying. Boostio facing the side as an anti-flash, but now he's walking his way up with the rest of his team. Asuna one step closer to the big rocket. Free clear. Free clear. Chen flash through. It's anti-flash from Asuna. The rest of his team combined, but how are they finding these kills? I mean, right behind him in second, and he wants even more. Look at this, just walking right round the corner, almost catching with the util. That was 72 health, backing away. It does seem ridiculous that किसका pick है ये Sentinels का. Through the teleport, and Tens is in cave, taking up residence deep into enemy territory. There is just no way they're going to expect him to be coming around Showers behind them here. This is such an unorthodox position to be in right now. Rest of their team. Tens का game है भाई. Bang, it's in a really forward angle. Tens का game है. Jiggling from the bench, spots it. Do they think about him at any point? No. Not likely. Flash. What is that flash? What is that flash, dude? What is that flash? When he's on the Euro on this map, I mean, he looks like a one-man army at times. He's absolutely inspiring. Genuinely, the kind of tech that he's got all around the map, these little bounce flashes that set up perfect. क्या कर रही है भाई Tens भाई? चैट Tens भाई का हो गया है मालूम. Tens भाई का हो गया है बोलते भाई अभी मचांड. Eat your heart out, Forsaken fans. I don't care. Tens is the absolute truth on bind with Yoru. But yeah, the fact that Sassy was still able to get a kill off भाई इतना instantly वो कैसे वो flash किया है भाई वो. I can't believe they went even there. Yeah, it's nuts. Good morning Somnath भाई. Score 2-2 here. Barriers dropping. हाँ बोला तो था Atomic लेकिन आ गया अभी क्या? Fast here, Asuna facing all together. Nice kill. Weapons for the sheriff, still deadly enough. And the dog does Boostio try to punish in any way. He was there at the bottom of B long, thinking about walking up onto Sassy. Decides not to. Sassy के पास ult है. If he pops it up. From Zelsis on top of the truck, one that Aspas played multiple times against 100 Thieves and came out to the good so often. ना कुछ मतलब ही नहीं रहेगा अगर Sassy ने ult pop किया तो. क्योंकि वहाँ पे 100T का Boostio वहाँ पे lurk कर रहा है, वो अकेला flowers तोड़ देगा पूरे. We've been robbed. At least there's Okay, TPs now. From Boostio, looking left to right on a swivel. Sky ने शायद flash दिया long पे and वो कोई flash नहीं हुआ इसलिए Viper भी rotate कर ली. So now we can see 3 जन यहाँ पे Sentinel के. Running it down TPs, he's trying to fake presence. Pulling away. I mean, they bought it. Hook line single. Okay, now that's a good ult. Now that's a good ult. उसने fake किया TP, but now they know कि सारे 100T के यहीं पे है. So वो fake work नहीं किया. Oh wow, वो फेक वर्क ही नहीं किया. Sassy ने बहुत अच्छा अल्ट किया. वो जैसे उसने टीपी किया Sassy अल्टेड. That was super good. देखा क्या हुआ यहाँ पे? That was super good. It was a very brilliant try by 100T. अगर अल्ट नहीं रहता ना Sassy का तो रोटेट हो गया था. But nice. Fairly successful attempt at just trying to generate a pick in Showers. Yeah. But I'm looking towards the ultimates online. And I think they're really important because Dream कैसे ऊपर चला? कहाँ पे भी? देखा नहीं मैंने. They did use the Seekers already in the prior.
Shen, sorry, hello. Can't try to fight short here, can he? Smoke's so deep, he's like feigning like they might be attempting to fight over this orbital strike. Mosh pit, it's all being utilized. क्या डाल दिए थे उधर? Satchels, gate crash forwards though. That's Asuna and a snake Bro, bite on top what of a it. snake bite. Beautiful execution with all the utility. Wow. Combined up. क्या execution था भाई ये? Towards the back of the side with those 2 kills now. That was beautiful, bhai. That was beautiful. Offsetting it, you got to take risks in the moment, but it's all being contained and answered back. That was beautiful, bhai. Huge round from Asuna, and Cryo with some excellent trades as well. Asuna was getting absolutely diffed on map 1, and now we're actually seeing Zekken struggling to get a little bit of impact against the level of utility being thrown in his face. And he had to dodge an orbital strike, a mosh pit, get behind, got snake bit. Meanwhile, Asuna bullies his way into backside. Hello. I don't care. Hello. Nice. Hello. Let's go, Viper. क्या लगता है कौन जीतेगा 100T Super या important round Sentinel? for 100 Thieves to win. ये मैप 100T लग रही है लेकिन भाई सेंटिनल मजबूत खेल रही है. The start of the round. 100T का स्ट्रॉन्ग है ना शायद भाई, मतलब मैंने बहुत देखा है जितना मैंने पिक ये इनका है, पिक सेंटिनल्स का है. सेंटिनल्स है. Following the cues, it was the initial flood of utility here. It's being used. All line up from Bang. That's going to sell it even more that the pressure's coming over towards A. Sentinels are trying to cheat their defense. And they're going to get punished for it by the look of things. Everybody grouped up. Face your fear! I fall. Away, it's a full retake onto the B side. पूरा रिटेक कर रही है यहाँ पे सेंटिनल्स. सेंटिनल्स के पास 2 अल्ट है, टेंस के और जेल्सिस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. यूरो अल्ट और ब्रिमस्टोन अल्ट. What did he just flash, bro? फ्लैश को अल्ट करा भाई. लगातार तीसरा अल्ट है आसुना का जिसमें कुछ वैल्यू नहीं निकली है. One man army. This guy's a wrecking ball running straight through them, and the elbow players, they can't afford to swing. Zekken can stick it all the way through. And talk about भाई Tens is playing too good भाई. machines. I mean, 100 Thieves on their attack executes, but Sentinels on भाई their retake, आसुना. that was just picture perfect. आसुना ने फ्लैश एकदम हवे में जो फ्लैश था उस पे अल्ट कर दी. Sight is so difficult to retake, but the flashes could not have been more perfect to just annihilate people on sight. Those 100 Thieves What a players trying to retake, anchor Ana bhai. had no chance. Insane. Asuna's like an actual rocket launch into the stratosphere moment. Like he was trying to put the thing into orbit. Yeah. Double flashed up. आसुना हमेशा अल्ट में ब्लाइंड हो जाता है. हाँ ना, कुछ ना कुछ हो रहा है उसका, कुछ ना कुछ. It's been even so far. I mean, it feels even, I will say, but it was 100 Thieves winning that pistol round, which is why the scoreline ends up being closer. Yeah, and that's a massive difference, right? Because Sen in the first map, their first kill conversion rate. Tens भी like बहुत हो गया. अब दिखा दो तुम लोग को Tens को. आना भाई डोलिस ले ली सीधा. ब्रिम कैसे बॉक्स के ऊपर चढ़ा, वहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं. While the scoreline seems fairly even. हेलो. भाई तेरा जैकेट देना मेरे को. Because 3 out of 4 of the rounds that Sen have won are retakes. And it's one thing being able to get the plant down, but if that takes all of your utility, and then you don't have anything to stop Sen getting back into the site, you're going to lose these rounds. Yeah, what good does it do? Nothing to stop them. Maybe that's part of the reason why Sen have picked into Bind as well, having seen 100 Thieves play it. Potential read with the heavy execute style that they've been playing. You know, हेलो अमनेस, रंगोली बना दिया रिजल्ट से. हाँ ना बच्ची. बुशियो के पास अल्ट है अभी एग्जीक्यूट करने के लिए. Play for the retake. I think the retake protocols looked amazing on split as well when they played against Loud. It's aggression now. 3 जन बीलोंग की तरफ. Right timing here. That's an anti-flash by Cryo. Doesn't earn himself a kill from it though. क्रायो हुका होल्ड कर रहा है और बैंग ए शॉट होल्ड कर रहा है. Because Boostio's got 2 attempts with his ultimate to generate some kind Oh, he's gonna ult A shot and they're gonna go back B. Broken. Gate crash. Back to safety. But kind of plays Zelsis in. Does a little bit. I think he's heard them retreating. Surely going to be able to hear them retreating, and they are creeping and. भाई काफी साउंड देके रोटेट किया है. Second flash. No dice. हुका से 4 जन ड्रॉप हुए. लॉन्ग का इन्फो दे दिया उसने. उसने जंप किया, मालूम क्या सैसी ने, इसकी वजह से साउंड आ रहेगा. That's why they check. Go in their way. This post plant looks aggressive. Plays in forward positions.
They're gonna pitch, surely. पांचों जन साइड पे. But available for them, and they should, yes. That's a good ult by Bang. CT cover हो जाता है उसमें. He's dropped as well on top of it. Nobody can withstand this kind of pressure except maybe भाई second got 3. Needs there forwards. The pre-fire. भाई क्या मारा है भाई आसुना. Huge kills भाई. But what I was noticing during the game of 100 Thieves versus Lev. अगर Zekken अभी ना पिक नहीं करता ना और Bang को आने देता तो 1v1 आ जाता भाई. And their strategy didn't really work. खेले भाई खेले. Game round था भाई अच्छा. Thieves use the ults. They get big value out of it as well. Finding the identity of where Sasu was playing. Thank you so much. Bye. Usage of the flash to be able to clear him out. And then pick on top. Yeah. But does that same strategy work if you don't have the ults to rely on? That, I think, is a question that 100 Thieves still don't quite have the answer for. भाई ये अल्ट्स मेरे को रिस्की लगते हैं भाई. Viper's pit blocks off that B long avenue, which ऐसे अल्ट्स में ना भाई क्या मालूम क्या मेरे को रिस्की लगता है क्योंकि खेलने का एरिया है ना कम है. मतलब तेरे को वो ऐसा डीप एंगल रखना ही पड़ेगा. अगर एक बंदा तू मार भी दिया ना तो इजीली स्पैम हो जाएगा ऐसा लगता है. हाँ भगने का ज्यादा वो है की जगह. मतलब दो लोग एक साथ भी पुश कर गए ना तो आराम से ट्राई हो जाएगा. फिर भी ठीक ही है वे. अच्छा ही है वो अल्ट. लेफ्ट साइड मतलब लॉन्ग की तरफ अच्छा जगह है ऑक्टागन की तरफ. हाँ. Give it a TP pivot. We wait to see what these players can get done. Asuna. Some spots. The problem with the TP pivot though, Bren, is you don't have anybody be long, so John Cutie's not getting pressure. They're giving it up, waiting for Bang to see if he can make his mark. I mean, look at this gate crash. Yeah, where is this one going? All the way into the spawn. Swapping sides. I mean, Ten's commits to it. Yeah, he's all the way behind them now. And he's going to be trying to put pressure on the people, putting pressure on John. Yeah. Flash, eye, everything committed, but still, it's a TP pivot into showers. Does he expect Cryo right here behind him? Oh, भाई Cryo अभी भी उधर ही है. Absolute Bro, what is this timing? Flying straight past him, Tens. He's not. No, Cryo. Catch him with a Tens भी पीछे से आ रहा है भाई उनके. Attempts to spray through, but it's all. Oh, 1v4. भाई क्या? Tens भाई. अभी मैं सोचूं कंट्रोलर क्यों खेल रहा है ये? Bro, you know what? You know what? क्या? Now I know why they call me Tens. To make it look like they were going into B. Took the teleport again. One through onto A. Tens was behind them and he just was running from side to side. Yeah. Couldn't figure out where the दीदी अपने बाल बिगाड़ रही है और साथ ही साथ बना रही है. What a call to come out from 100 Thieves. Multitasking. That is well such an played. important round as well, because it starts to build them back up to the ultimates. Asuna's now very close to a showstopper, which we've talked about how important हाँ that भाई is. विफ होगा ही. कौन बोल रहा है विफ नहीं होगा भाई. Well played भाई. Sentinels economy. Well played यार. That round 9 call could not भाई have पूरा come at a पूरा better गेम time. अच्छा खेला है यार. अभी एक राउंड ऐसा चलता है बच्ची. हर्ष भाई मुझे कॉलेज जाना है. आप क्लियर कर दो कितने देर तक स्ट्रीम करने वाले हो और 4-5 घंटा. Awesome. One eye on the minimap, one eye on the game. नहीं 4-5 नहीं. Really cool. Like you said, critical timing for all of it to be happening. So they've taken a lead, 5-4. We mentioned the importance of this. Asuna का अल्ट वापस आ रहा है. भाई Asuna का अल्ट आ रहा है एक और में. अब होएगा मचान. Counts for 100 Thieves. फिर से फ्लैश पे मारेगा और इसके अगले राउंड में 4 किल निकालेगा. भाई सेंटिनल्स का लो बाय है. लो बाय नहीं 2 वैंडल्स है और बाकी के सारे शेरिफ्स. सेकंड और जेल्सिस. और जेल्सिस खेल रहा है बी पे. सेकंड खेल रहा है ए पे. नहीं सेकंड भी बी पे ही खेल रहा है. 4 जन पुश किए अभी भाई. 4 बी पुश किए वो लोग. Playing for the retake here, backside control gained. Asuna. Straight to him. घुसा घुसी की प्ले बाय Asuna. TP to showers. Attempt. Real danger here. EU. Okay. Gonna be taken out here. 2 versus 3 now with the spike planted. 2v3 दोनों शावर की तरफ. The Sentinels here and they don't have the positioning. Do have the right. Asuna भाई का अल्ट आ गया है. Asuna's got a rocket. भाई दोनों को अच्छा पीक करना पड़ेगा तब भी निकल सकता है ये. मार देगा क्या? या तो फ्लैश भाई. फ्लैश भी नहीं कर. अरे यार भाई. Very hold on the crosshair placement of Cryo. Now knows where the second player is. Elsis. Understands his role here. He's just got to get the hell out of there. भाई चापटी पड़ीस. Could have been some danger in that. I am a fantastic supporter. क्या बात है क्या बात है. Navigate it.
Will be the 6-1 भाई for पर them. जो टेंस ने Steadily करा था accruing ना the वो lead even more. But this is how important भाई round आसुना 9 was, just to go रिलोड back again. मतलब उसको देखने के बाद रिलोड स्टार्ट किया गरबा वरबा खेल के वाय मारे ले His gecko on flank, which if they get the plant down, he'll have it for a post plant. क्या इजी टैप्स देते ना भाई ये लोग मेरी तरह एकदम हाँ Round the world call, and now actually have the ults to be able to snowball their way to a really decisive attack. चलो आसुना भाई का अल्ट सेकंड का अल्ट आ रहा है एक और में भाई सब लोग लो शील्ड हाफ शील्ड खेल रहे हैं Half armor for Sentinels won't really make too much of a difference. Maybe the goal now to go a bit faster once more for 100 भाई Thieves, ऐसा especially क्यों with a लग रहा है showstopper. ये बीच हवा में Asuna, खत्म कर देंगे a much आसुना better game compared to that first one. Boombot leads the charge, clears the close corner, so has the satchels, and now finally lets it go! Back wall, Zelda अल्ट का कोई फायदा हुआ नहीं on your ground out towards Lamp, and that is a real skirmish taking place. उसकी अल्ट पे घुसे दो लोग दोनों पिट गए Pause in the play here with the spike being reclaimed. Both teams taking a breather, but now it's planted into the post plant once more. No more ults to be used, but Sassy's on the flank, so Sentinels are waiting for this to happen. To be honest though, these flanks have not really worked. different direction. Bang. Doesn't look really the wiser. Oh, by for it. EU on top. Oh, jump. Oh, nice. Lovely tap, but Nice. there's the kill found. Finally, flank paying off. I regain. John QT really being pressured towards the back of the side. He needs Sassy to get a move on. He's a little bit too late 1v2 to the babies, party here, 1v2. especially Come with on, it ticking. come on. EU so नहीं much यार, shooter time to नहीं है. work with. Teva connects. Salunkhe's nade अरे rebounds, भाई and there's नेड the खा kill. दी Combinations भाई of क्या मारा था यार combinations. उसको उसने ग्रीन बॉक्स वाले को Bit too slow on भाई the retake for साहब Sentinels, not able to भाई get लोग those 7-5 really या coordinated retakes working 8-4 like they were in the first quarter. 7-5 या 8-4 जल्दी बताए जल्दी बताए जल्दी Tried to बताए deal with that blast pack showstopper play down short. He saw 10s 7-5 on या top of 8-4 triple, जल्दी बताए but he couldn't teleport away in time. Boostio was really sharp on that trade. भाई And इनके once क्या more, लाइनअप्स है भाई the उसने players ult करा going in, लाइनअप्स क्या was क्रेजी है able to भाई catch Zekken over towards triple and set up that kill नेड too. वाला क्रेजी था लाइनअप 7-5 ओके लाइनअप का Really unsafe position. वो to play. वाइपर This is लाइनअप really किया था gonna be बे running ग्रीन back to बॉक्स the ults. Thrash. Not exactly Sure where where that went. अल्ट करके रिटर्न ले लिया उसने बस आगे लेके भी नहीं गया वो Something super aggressive at the start of the round. That is a वो weak नापतोल नापतोल पे कहाँ रहती है ना जिसपे कैमरा होता है छोटा सा इसने वही करा छोटी सी रेंज में घुमा के वापस ले आया उसको लगा ये शॉट पुश होने वाला है इसलिए उसने वैसा किया Definitely a little harder to read than their game against Leviathan. तोबा हो रही भाई अपने पेट को वॉक पे ले जा Go रहा round two, clear out towards Hookah now. Seekers be offloaded. The Oh, takeout bhai. is there. Satchel plays. That's Second का position. Blinded up. Second close to the corner. Now the showstopper. Right to the feet. Good Takes God. him out. Boost returns. 1v2. Spike planted. 1 versus 2. Maybe a chance for it to be winnable. An 8th round would be a dream. But it's a tough ask ओ for भाई him. गेको खेल रहे 10s, 2 flashes. One more smoke for Zelsis. It's a slow play. Tucked in. Here's the footsteps. Doesn't know where they are exactly, but strikes correctly. Round No way, dude! It's too good! What a clutch to end the half for our Gecko cosplayer here. Defending world champion Boostio. भाई Showing how he got साहब it done on the यार big stage. गेमर तो है हाँ That's a nuts बूस्टियो ending. भाई बूस्टियो गेमर है भाई W's in the chat सब लोग भाई साहब सब लोग हाथ उठा के W लिखो भाई क्या हाफ हुआ है भाई Just seals the deal. क्या हाफ हुआ है भाई तगड़ा Awesome हाफ हुआ turnaround in round nine. है ये देख भाई सब मार जाएगा उठून Clutching incredibly. Feel the energy that's Sheesh, bringing from bhai. as well. With their backs against the wall, you got to think an elimination match. It's all खत्म भाई खत्म क्या टाइमिंग पे पीक लिए ला उसने well earlier. We spoke with Sentinels coach Kaplan about what it's like Yes, to have let it, such I a know. passionate fan base. भाई साहब तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे भाइयों गेम प्ले बहुत ही भयंकर चल रहा है बूस्टियो भाई सबको बूस्ट का डोज देते हुए काम 25 कर रहे हैं बूस्टियो भाई टेंस भाई के यहाँ पे काम 25 होते हुए उनके दिल में धड़कन तेज हो रही है क्योंकि टेनिस भाई के एम अभी थोड़े कॉमड़े शामड़े हो चुका है लेकिन अभी देखने मिलेगा हमें सेंटिनल्स का अटैक और अटैक में देखने मिलेगा योरू के फ्लैशेस और टीपी मतलब टेंस का डुअलिस्ट गेम प्ले तो जाने के लिए देखते रहिए आगे क्या होता है 8-4 ये हाफ हो चुका है अगले हाफ में क्या हमें कमबैक देखने मिलेगा
4 round का difference. I hope we see you come back and this game ends at 2-0 so that तुम्हारा प्रोफेशनल एनालिस्ट एक अच्छी नींद ले पाए. Certainly are passionate. I mean, after these losses for both of these teams, to be honest, you'd think they'd be more doomer than zoomer. I mean, it was just absolutely dire. Good morning, Kelly. But I think you can be pleasantly pleased so far with the series that we've got right now. What's up, Kelly? Good morning. Against this Sentinel squad that were looking all too strong in our first map. And even in the first half Hello. of their defense rounds, they looked like Sentinels had figured out a way of playing against this. भाई 1v1 हो अगर तुम्हारा और टेंस का तो कौन जीतेगा? मैं. भाई क्या 2 मिनट का टाइम आउट है क्या? अच्छा हाफ टाइम है. I'm at work and watching you. In those final 5 rounds. W's. Now put some serious मैंने भी good morning बोला था भाई. Good morning Dawn baby. Super heavy double initiator exec style. Getting fired in any seconds now. How does it work on defense? It's okay. You are a good streamer. Long distance lob from downtown. Get to the Olympics. क्या था वो? The NFL. I don't know. What's more topical? I don't know meat sports. वो स्मोक देखा क्या? वो इसके लिए है, लाइनअप के लिए. The way that Sentinels likes to play this is ये शॉट प्लांट होएगा ना तो स्मोक अप करके लाइनअप करेगा B से. Yeah, most of the time. A lot of the time. But if you try to fight him, Olympics भाई साहब. Did you like my sofa filter from yesterday? Yeah, that was best. It was like he is on you. It doesn't actually tell you anything about which way Sentinels are defaulting. This dog from Sassy though will. Okay, let's go. Sentinels pushing in. Send straight through. Second inside. Wrapping around. Spots out the players there. Decoy. Yoru clone. You all ले रहे भाई. You all control मिल गया है. You all से CT जा रहे हैं. And choose लिया भाई. साफ. Nade on top. No, not quite. भाई अगर वो नेड लगता ना काम 25 होता. Massacre, a bloodbath. But the players still stand. They take a breather. 35 seconds in this round. Not much more time to work with. Another tap. Baiting out the util. This is getting really tenuous. It's spam. Being committed. भाई 500 जन आ गए भाई इनके. Plan to drop down. Asuna way too far forward. But they should TP now. There. No one can help him out. But with 20 seconds left, the call is made. TP pitted. Still 2 जन यहाँ पे Sentinels के. John Cutie and Zekken is still here and This kill to be claimed. So this guy, Boostio is too good. Able to hear how many people went through the teleport. It looks like Boostio's not quite where John can't capitalize. No, down though. The post plant now. Oh, Sassy, please get one, Sassy. So many players. Oh, okay. This team are taking contact. Attention being Oh, nice, bhai. Oh, bhai, Zelf is cooking, bhai. Bhai, saab, what a round, what a round. Let's go, let's go. Let's go, bhai. Call in the round from Sen to just put that pause in after 100 Thieves. Zelf is cooking. To deny the plan and decide to take the kittens through the teleporter. that is a play. That play right there, though, could have just swept. Hello, Ajay, watching your stream from America. Big fan. Hey, Mukul, thank you so much, mere bhai. Thank you so much for watching from America. Otherwise, the perfect from EU. ऑफिस से देख रहा माँ कसम. What could have been? सब लोग आज ये होने वाले. सब लोग आज सब लोग का आज काम जाने वाला है. सब लोग स्ट्रीमर बनो भाई. UPO classic is best gun for real. Why their classic works like this? Mine never works like this. Even I aim the same, you know. Missions played by Sentinels. It's a flash. Yeah, that flash though, when you Boostio is too good, bhai. Boostio is too good. Tell you anything because there could be a player left, For real. a player in garden, there could be a player on site. You want your flashes to be a bit more specific than that, especially when you only have 2 of them now. नींद हो रही है नहीं इसके बाद. Your classic is Hagasa. To 100 Thieves, there's a kill that's going to matter a lot though, because now Sentinels can make the call to end over towards A. John Cutie's not seeing anything over here. Oh. A is clear. Easy round for Sentinels. 6-8. 6-8. Dog sent in. Sassy does have not Manan bhai. be able to get this down. He's got a scurry, cleared forwards. Guys, like the stream. How many likes do we have? How many likes do we have? Have we completed 800 likes yet? If not, सब लोग एक साथ like मारो. सब लोग एक साथ.
नहीं तो your favorite team will lose if you don't like the stream right now. It's going to be a standard round here. Already won basically for Sentinels unless something goes amiss. Flash play to re-peek into this and trying to hopefully farm up some of these old forwards. Reload online, 20 bullets left. Tens is helping him out, right? To him, not letting anyone escape the ire of it. Tens is backing up all the kills. Yeah, I mean, when you say Tens is helping him out, you mean Tens is stealing the ult orbs from the player trying to get his ult online. Likes done? कितने हुए likes जरा गिन के बताओ मुझे कोई. सोने जाने से पहले तेरे को देखूं, नींद से उठ के तेरे को देखूं. अब तो सपनों में भी तू आ रहा. ये तेरी कैसी लीला घोड़े. क्या बोल रहे हो? इको था क्या लास्ट राउंड? हाँ ये तो इको राउंड था. Good to see them thinking about that extra layer of the game. 570, let's go for 600 like babies. Right back into it. There's a molly sent flying. I'd have missed that one as well as we were getting laid out of replay, but Boombot broken. Feigning. 652 likes है. Let's go. W chat. Being held really aggressively by Bang. सुना भाई अल्टी करो. You look at who's got the spike. It seems like Celsius wants his ult for the post plant, but 100 Thieves are fighting short really hard. Satchels. अल्ट आया क्या सुना था? Teva, beautiful, points him in the right direction. Zekken, he's there over the swing. Close! Sassy takes a whole load of damage in the process here. Him and Tens now linking up, joining hands near. Here's the dog, Mosh Pit. Round and sideways the coverage. Sean QT on top of bench 2 versus 2. Or gonna try and use it to reposition. Oh, flank आ गया. Right behind you. Backstab. Online. Vulnerable. Does not matter for Boostio. 6-9 हो गया. Done. And 100 Thieves look like the way that they're planning to play defense on A is by fighting the plant, not allowing Sentinels to get it down for free. And Sen don't have all of that unbelievable double initiator utility to push back 100 Thieves and make it impossible. अपना क्या उसे कहते हैं? अभी है ना मेरे को तो यही लग रहा है कि for a long time now on Bind has been इनको Sentinels को है ना स्लो ही खेलना चाहिए. स्लो उनका वर्कआउट काफी अच्छा किया. वो जो एक्चुअली दोनों राउंड्स में वो लोग है ना आराम से खेले. यहाँ पे प्लांट देने की वो लोग घाई किए ना तभी वो लोग मर गए मजबूत. That's what I feel. Can that be the difference maker? It definitely felt like it was in the first half. Yeah. Burned the one for Zelsis. Tens, meanwhile, taking a bit of a peek towards Showers. Like we said earlier, this man doesn't shy away from it. The solo Showers take. Wants to fight over it, but look at this from Zekken. There's a nade to rebound. लॉन्ग पे 2 जन है सेंटिनल्स के. हुक्का पे 1 ट्राई कर रहा है. क्या? Gate crash fading away. ऑक्टागोन कोई देख ही नहीं रहा. Really approaches position. It doesn't look likely. Flashing back and away on either side. B long was given. Tens का TP देखो B पे कैसे जा रहा है chat. What a peek by what a peek. Another crosshair placement, so a freebie for Boostio. And Tens is actually so no one is hookah now. In Showers. एक TP आउट कर लिया. Okay. For the rest of his team. Yeah, I'm towards the back side. That's 100 Thieves. 3 guys towards B. Giving up that space. Now they don't explode out into the side here. Instead, taking up residents into A short. Dimensional drift, maybe to spot out close to the positions. Just using it as a glorified drone. Oh, Tens के पास कोई TP नहीं है. He can't go CT. Sight is clear. So John QT with a plant. Nades. Will he get out? Just barely. And now remember that Zelsis has Molly. He also has his orbital strike for the post. So this is Oh, going भाई to be lineup है. an extremely difficult nut to crack. GG. जीत गए. So far back here, Asna. Satchels now. Onside the flash. Dizzy. भाई Zelsis पे अल्ट है और उसका लाइनअप भी है भाई लोग. जीत गए चलो. Now out towards Showers and yeah, that time pressure. They know it. You hear the Molly landing at the feed. Okay, half on the defuse. Oh, wingman! Whoa! Half on it. Push them back. Oh, जब wingman हग रहा. Half on the defuse is essentially around when Celsius. Half हो गया ना? Bro. Not a chance. Not a chance. Oh my God. भाई wingman. Sure that the molly did miss. I think we were hearing the one that fire thrown out or something. Because I could have sworn that there was a molly on the spike after the orbital strike came through. But either way, Sen not able to delay it पहले अल्ट करना रहता है यार. in order for their player to be able to है भाई capitalize Celsius. towards the हट end. खेलने नहीं आता उसको. That's a major, major round again for 100 Thieves to win.
because that one played भाई very इसलिए मुझे वो differently. बच्चा Instead of पसंद नहीं going for भाई, plan denial, playing वो for that बच्चा big भाई retake, बहुत बेकार है, saving a खा lot of जाऊंगा their उसको मैं। initiator utility for it. ये तेरे Small तरह mistake, स्मोक but किया। doesn't really matter too much. Does give away his positioning though. Judge in close quarters, they're trying to run this guy down. Bang! Judge in hand, blind. All the way through, couldn't see anything, but he's done the damage, hasn't he? And now the return of the fire, wait a second. Overzealous. It's a 2 versus 2 with the rifles here. Boostio, he's sending Thrash into the mix. He wants to try and get that potato, but he missed it. Cancel it. This is chaotic. भाई जंप करता है क्या ये गेको का अल्ट? हाँ हाँ। ओह, I suppose you could say ऐसे thrown नहीं करा away. होगा। काफी फास्ट और छोटे-छोटे जंप्स करता है। The course of kickoff in Americas and Pacific, Bamboozle it हो just गया feels भाई like वो the full। Ecos are so dangerous even with minimal investment. Far back position by Boostio Boostio. भाई का हर हो गया। Contact lurks. Got the right read on how. भाई एक फ्लैंक आ रहा है यार, they can't win this bro। Be the one going in first here on 5 HP. Seekers. इसका क्या प्रेम इनको स्टिंगर में? Blind, committed. I mean, they are going to teleport as soon as they realize that these two players are close. भाई अल्ट नहीं किया क्या इसने? किया ओके। Through showers now with 30 seconds left देखो नहीं। remaining. अपना स्काई ने अल्ट 100 meter dash स्काई ने all अल्ट the किया way तभी through उसको here. समझाना He कि is as quick दोनों as उधर है। anything. Do they expect this one plant down? Wall up in their face. Doesn't catch the timing. Oh my God. John QT. No! Drops down. Dawson. Stun. Oh, he's pushing the molly. Bro, W move bro. अरे यार। John QT, that is ballsy. A tap. Trying to force these players out of position, but it's being held from Heaven Sassy. Holding it, balls of steel. They do not swing. They do not approach the position. They are still holding their ground. But no, Boostio takes the timing and they know exactly where John QT is. Once more, another tap. No kill. भाई Only for Cryo. ट्राई था यार, ट्राई किए लेकिन सेंटिनल्स अच्छा ट्राई था। भाई दूसरी टपली खा के हेवन चला गया। नाइस आली रेन टॉप गेम्स। रिप्ले में देखना उसको टपली पड़ी है मुझे। भाई यार अगर वो बूस्टियो मर जाता ना सीडी पे ही तो निकल जाता। नहीं भाई बूस्टियो गेमर है भाई, कुछ भी बोलो, बहुत डेंजर गेमर है बूस्टियो। टाइम आउट आ गया भाई लोग, टाइम आउट आ गया। डिसाइडिंग मैप वो है ना स्प्लिट। हाँ Boostio was so close to going down when he crossed. बूस्टियो द गेमर वाइटी ओपी येलो असुना भाई यस। Small moments in this map that are असुना भाई making खुश हो रहे यार, huge बहुत बड़ा हो गया भाई असुना। differences later down the line. हाँ। Next time release stream होगी, yes. You can tell it's an elimination game. There's a Boostio lot is of world champion, just a reminder. Yes, almost baby. anxiousness to some of the plays that are being made. Yeah, frantic in nature. On both sides though. ये मेरे को बताओ, EG का टीम डिसबैंड क्यों हुआ फिर? जैसा मतलब जहाँ तक मैंने ट्विटर देखा था, जैसा फाइनल्स हुआ उन लोग को ट्रॉफी मिला, दूसरे तीसरे हफ्ते या महीने में ही कॉल मतलब ट्वीट देखा था मैंने कि भाई इनका हो गया। क्या बोल रहा है अमन? एनर्जी खेली है क्या? हाँ हो गया उनका मैच। है। एनर्जी के लिए एनर्जी में तो फॉर्म को देखता था, छोड़ दिया था। वो निकल गया भाई। अभी एनर्जी में डीमन 1 है ना? अरे डीमन 1 कोई नया है ना भाई, बहुत डेंजर प्लेयर है वो। Perfectly fine to try to deny the plan. बहुत वीडियोस आते हैं। मैं वैलोरेंट दिखता भी नहीं, मेरे में वैलोरेंट आता भी नहीं, फिर भी कुछ टाइम पहले डीमन 1 के से वीडियो आ रहे थे। फाइनेंशियल इशू, ऑफर अच्छा मिल गया होगा बूस्टियो को, राइट? कॉन्ट्रैक्ट इशू। भाई कौन बीच में चिल्ला रहा है? खेलने दो ना उनको। अल्ट आएगा टेंस पे नहीं। हाँ सुना बेचारा कंफ्यूज हो गया, अभी भी कंफ्यूज लगा पड़ा है वो। देख अच्छा वो टीपी चेक कर रहा है क्या? हाँ नहीं उसने फेक करा ना। हाँ उसको लग रहा है सीटी है, मैंने कहा है चुप गया है। It has pulled EU over towards B. Oh, drop किया टेंस। He TP'd away bro. Drop करके ही TP'd away. Now they know भाई क्या पोज दिया आसुना का। Damn भाई, अभी मरा ये। भाई लगातार 5वां अल्ट है उसका, 5वां, जिसमें एक भी किल नहीं मिल रहा है। Oh my god.
चैट आसुना पांचवा काउंटर है आसुना का। आई मीन पांचवा अल्ट है आसुना अल्ट विफ काउंटर। Attempted nevertheless here with really such little time close towards it. Sassy, the spike has been dropped down. You have to accept it. Cut the losses. Get the hell out of there. But that means 100 Thieves. आसुना ने निकाल के दिया है भाई राउंड ये। Crazy. पहले अल्ट खोल लेता फिर तो नहीं निकलना था राउंड। It's not great for his team. Gotta save it. He's gotta save it. Massive from Cryo. Huge towards the end there. That's going to put so much additional pressure onto the economy. You look at what पैसे कम कर दिए थे फिर EG वालों ने बाय आउट नहीं एक्सेप्ट करे डीमन वन और ईथन के। पहले $100 का बाय आउट ऑफर था वो रिजेक्ट कर दिया। मैप 3 करोगे स्ट्रीम? ऑफ कोर्स भाई, पूरा दिन कल सोएंगे भाई, 5-6 बजे स्ट्रीम करेंगे। स्ट्रीम मिस नहीं होगी, नींद भी कंप्लीट होगी, टेंशन मत लो, सब करेंगे। अल्ट आ रहा है भाई, ओ भाई साहब 3 प्लेयर्स फॉरवर्ड आए हैं, 50 जन ब्लाइंड हो गए, बूस्टियो ऑफ लगा के खड़ा है भाई। ए शॉट दिखाओ भाई, ए शॉट पे ही मचांड हो रहा है भाई पूरा। असुना मार दिया एक। ओ भाई टेंस का थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है भाई एक किल के बाद। Claiming that space out towards showers, they give up and concede again through into short. Still with the op out towards triple. How do you really seek to do some damage here? There's just an angle opened up to him. Does he realize that they're so deep on site? I mean, side by side, shoulder to shoulder. वो चेक कर रहा है भाई साइड। ओह माय गॉड भाई ये ट्रेड आना चाहिए भाई। ओह माय गॉड वो ट्रेड नहीं कर रहा है। ओके 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 okay, 2 versus 2. We could end in a moment's notice with this flank attempt occurring. Bang, he's all the way behind. फ्लैंक करेक्ट था ना बे, वो मर गया। Call to be made by Sen. असुना मर गया। वो था ना अपना असुना, 2 HP था सिर्फ। अरे मां कसम भाई, so close. Barely opened himself up a tap. Teva through. They don't know where this last player is. They are really struggling to find it. But with 25 एक शावर से आ रहा है, एक हेवन खेल रहा है भाई। Dangerous games they're playing here for Sen. John needs Zekken inside the pit, I think, so that he can just get Zekken का एक अल्ट आया तो भाई किल है। And he just chooses to stick it. Oh sorry, अल्ट है। उल्टा बोल दिया। हां सॉरी सॉरी। Almost going down just from the vulnerable and the spam. Really dangerous. Back to the box. 26 HP है यार। ये Zekken मरने वाला है स्पैम में ही। Random spray, the bullets through. One player's a target and Joju T is found. Oh no भाई अल्ट गया इसका। No way, no way dude, no way, क्या पोजी में अटका बेचारा। GG भाई GG, गुड गेम। स्प्लिट देखना। Massive victory for 100 Thieves. क्या? स्प्लिट तो अच्छा खेलती सेंटिनल्स पर 100 भी अच्छा खेलती। वो showcasing the power of this Gecko Fade composition. GG's in the chat, everyone, GG's। 1-all हो गया भाई। डैमेज नहीं हुआ भाई, किल तो छोड़ो, एक डैमेज नहीं हुआ है अल्ट से। भाई आसुना भाई की अल्ट है बहुत भयंकर भाई यार, क्या हेयर स्टाइल है यार उसका भारी, इतना क्लीन हेयर स्टाइल है ना वे। और गेको अच्छा खेल भी रहा है। भाई क्रेजी गेम प्ले भाई, क्रेजी गेम प्ले। मजा आया भाई देखने, मजा तो आया। Madrid as well get that qualification even further forward, but वो वाला map 3 दिखाया ना on the जो cards. फ्लैश Wouldn't want पे it मारा any था। other way. It's time for a quick break and we come back. हवा में भाई, We've been waiting for. भाई क्या खेलता है यार, जमीन पे देख रहा था उसने हवा में देख के लॉन्च कर दिया। सेंटिनल्स हमेशा हकती है स्प्लिट पे। हाँ क्या सलामी दे रहा था। मतलब जीजी है तो ये पिक भी इनका ही है, सेंटिनल्स का पिक नहीं है, उनका है। क्या उनका नाम है? उनका नाम क्या है भाई? 100T। आज भाई ऐसा क्यों होता है, जो टीम जो मैप पिक करती है वो उसी मैप हार जाती है। टटियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी टटियां कलाइयां वे। चलो आ जाओ, अभी क्या करें? रैंगेस नहीं करना भाई, अभी मुझे रैंगेस में सड़ रहा है। सेटअप। अबे यार भाई दो इसके पास। गोल्डन वाली बढ़िया लग रही है भाई। अबे ये
क्या गेम से इस पे इतने पैसा है भाई, पैसा है भाई पे हैवी पैसा, पैसा बोल रहा है भाई का पैसा, माँ गिन कसम कितने? भाई 3 6 2 करोड़ गेम्स है 9 भाई पे। 12 15 सेकंड कैट लुक्स पोजेस्ड, ये वाली भाई 21-22 गेम है इस पे। हाँ ना भाई। मेरे स्टीम पे 21-22 नहीं है। इसका रैंक क्या रहेगा? भाई पढ़ाई लिखाई वाला है ये, तो टाइम पास के लिए खेलता है भाई। इस पे एफपीएस भी ये 60 आते रहेंगे। सिल्वर ब्रॉन्ज। हाँ हम्म। ब्रॉन्ज भाई मजा तो हाँ ब्रॉन्ज, पर इसको सबसे ज्यादा मजा आता होगा गेम खेलने में। फैक्ट्स भाई। न्यू सेटअप क्लीन है भाई, क्लीन है भाई। टीवी लगा दी से ऐसा लग रहा है यार भाई, बंदे ना यार ये मेजर खर्चा भाई। नहीं यार, ये वायर ऐसी क्यों लटक रही है अगर इतना अच्छा टेबल है तो? अरे हाँ यार ये होता है, मतलब वो मोटी केबल होती है ना हाँ बहुत, अरे वो मेरा बेंड भी है, नहीं मेरा होती। भी है, तो मैंने खींच लिया भाई, जोरदार हो जाती है हाँ बेंड भाई। तो वो करना नहीं रहता ना, तभी तो उसको मोटी बनाया है कि इससे नहीं वो नहीं, मोड़ा नहीं जाए। नहीं भाई, तो उसको घुसाते टाइम ही ऊपर से घुसाओ ना, मतलब समझ रहा है वो हाँ हाँ वायर के इसमें से। स्टिल स्टिल वो एक यू तो बनेगा ही ना, मतलब अब नहीं वो भाई, सॉकेट ही जब नीचे है तो क्या करना। भाई टेलीफोन उसका कहाँ लगा है, वाईफाई के ऊपर सब टेलीफोन लगाया लगा भाई, यहाँ पे सर्वर है उसका। है। हैकर आता डायरेक्ट फोन मिलाता है भाई ये। ओ भाई ये टीवी एक सेटअप आ रहा है, एक जानवर सो रहा है, एक सेटअप आ रहा है, एक जानवर सो रहा है। भाई भाई अबे ये कीबोर्ड क्या कितना इंच है? बढ़िया है भाई। भाई ये अल्ट्रा वाइड में लिया है इसने फोटो, तो लग रहा है थोड़ा स्ट्रेच हो गया, देख है देख। ना, मेरे को स्क्वायर लग रहा है भाई ये लिटरली। स्क्वायर नहीं यार, क्या होता था जब वो स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दे तो उसको कुछ बोलते थे, मैथ्स में बोलते थे कि स्क्वायर को हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दो ना। क्या बोलते भाई? भाई उसको हाँ कुछ तो कहते हैं, रुक जाओ चैट में बताऊंगा भाई, मेरी हो मैथ गया इतनी अच्छी इसका भाई। होती। भाई इसके पास 3 3 कैट्स है भाई फर्रू पे। भाई क्या क्लीन है यार। रोम्बस रोम्बस बोलते भाई, रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस क्या होता है? हाँ नहीं रोम्बस या पैरेलेलोग्राम, ओ भाई। हाँ ओ ये देख, ये देख, ये हाँ, देख। है ना, पैरेललोग्राम बोलते हैं। वैसा था उसका मॉनिटर। आओ भाई। सही है भाई, वापस नहीं पढ़नी मैथ 1 साल तक और हो गया मेरा मैथ। लेट्स गो ब्रेकफास्ट हैवी भाई, क्या मेरे खा को रहा, कोई क्या दे खा दे रहा? यार। ऑमलेट पाव है भाई, ऑमलेट ऑमलेट पाव ब्रेड। सिस्टम। भाई रेजर वाइपर मिनी कितना बढ़िया माउस है, वो उसके जाने के बाद पता चला मुझे। अरे नहीं भाई, इसका स्क्रोल व्हील खत्म हो जाता हाँ है ना, हाँ फिर जमा हो जाता है स्क्रॉल व्हील। सब। हाँ 1 1.5 साल तक खत्म था मेरा भाई लोग स्क्रॉल व्हील। 1000 लाइक थोड़े बट हो मैंने फिर जाएंगे तो। नया लिया रेजर का ही लिया, डेथ हेडर लिया, बट वाइपर मिनी क्या माउस है भाई, कितना छोटा, इतना हल्का लाइट है। वेट। वैसा माउस नहीं है ना, अब वो बनना ही बंद हो गया, हम्म। वरना तो मैं हर साल नया लेने को तैयार था वो ऐसा माउस। भाई इनका पूरा परिवार होता है। अरे भाई इसके यहाँ पे सो जाते हैं ये। भाई गलती से नाखून निकाल दिया ना भाई, अगर उसको कुछ डरावना सपना आ गया तो? छोटा बच्चा है अभी तो, इतना वो नहीं करेगा, तो छोटा कूदाफांदी बच्चा नहीं है करेगा। तो भी भाई, मतलब छोटा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई यार। भाई इमेजिन ये रेज में कुछ एकदम से जंप कर जाए या ऐसे पटक दे अपने आप को, हाँ ना भाई। डबल किल हो जाएगा भाई इसका। लाइक नहीं करा।
इन लोग के वजह से ही 1000 लाइक नहीं होते साला। भाई ये कौन सा मॉनिटर होता है जिसके नीचे ये रावण जैसा निकलता है? भाई ये बहुत बेकार रहता मालूम क्या? ये भाई इतना BTS देता है ना भाई ये चीज। ये नॉर्मल स्टैंड है लाइक इसका, ये नॉर्मल वो है हाँ नॉर्मल स्टैंड है ये। नहीं अलाइनमेंट उसने चेंज किया है, ऐसा वाकड़ा किया है उसने थोड़ा सा। भाई छाती में घुस रहा है ये। हाँ भाई वही होता है। और कभी है ना, कभी तू अगर फ्लिक मार रहा है जोर से तो तेरा है ना उंगली माउस में और इसके स्टैंड के बीच में ना चपक जाता है भाई साहब, दर्द होता है फिर। भाई वो बिल्ली देख। आई यार भाई डॉग और कैट बता यार। कैट भी बताएगी। दोनों अच्छे हैं। नहीं दोनों में से एक चूज करना हो तेरे सामने। भाई यूज करना पड़ेगा। मैं ना पूछूंगा कि मेंटेनेंस किसका कम है, फिर मैं उठाऊंगा, समझ रहा है? तू बता मेंटेनेंस किसका कम है? भाई बिल्ली का। तो बिल्ली उठाऊंगा। मेरे को बिल्ली का कम लगता है, वो भगती रहती है खुद ही, मतलब उसका भगती रहती है सर। अरे यूज क्या बोल रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ यूज क्वेश्चन मार्क, मतलब मैं यूज बोला क्या? हाँ सेंटिनल्स बाहर हो जाएगी अगर ये वाला हारी तो। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ भाई हाँ तो हम थे बिल्ली और कुत्ते पे, क्या हुआ? भाई का सुबह सुबह चल रहा है एडिटिंग जूम कॉल पे वहां भाई जूम कर रहा है, एडिट भी कर रहा है उसने, विंडो इन विंडो करके स्ट्रीम भी देख रहा है। खतरनाक यार, डेडिकेशन है भाई का। शादी हो रही बहुत भयंकर। भाई इट्स हाई टाइम तुम दूसरा मॉनिटर भी ले लो, बहुत काम आएगा तुमको तो। आ रहा है पैसा आ रहा है ना, अभी पहले पैसा आन दो फिर लो। रैंक यू ऑलरेडी नो बट स्टिल। ओ भाई इसका बड़ा माउस भाई, ये अच्छा प्लेयर रहेगा, थोड़ा फ्लैट रहेगा, ये आराम से फ्लैट रहेगा। लेकिन ये मोटा माउस है ना ब्रो, ये मोटा माउस से ना सिर्फ फ्लैट जा, इसने भी लाइक नहीं किया हगरे ने। अरे इसका कीबोर्ड कहाँ है? यही तो कीबोर्ड है उसका। भाई इमेजिन ऐसा खेलना। हाँ समझा, पूरा हाथ एक्सटेंड करके। मतलब तू अगर सेंटर में बैठेगा तो सेंटर में मॉनिटर नहीं है, और मॉनिटर सेंटर में, तो भाई हाथ का तो वाट लग जाएगी भाई। एक लेफ्ट वाला हाथ छाती पे एकदम, और राइट वाला बारगाम। ये फ्लैट है भाई, ये फ्लैट है। अबे चले गया भाई, असेंडेंट 2 है ये भाई साहब। अबे मिले वो एजेंट पिक हो गया। चैट क्या एजेंट से? क्या एजेंट से? क्या एजेंट से? I wonder what 100 Thieves are going to be bringing out here against them to try and take them out. Yeah, I think the biggest thing to look at is what the analyst desk set up, which is that there is just huge amounts more of that initiating Decider map, available babies. for 100 Thieves. What we saw them do was trying to pick timings to fight really aggressively on defense. They were trying to overwhelm Leviathan when we saw them play earlier. Okay, decent comp है, single duelist है दोनों साइड पे। Kind of setups. I mean, they had a whole डबल इनिशिएटर खेल रही है भाई 100T। And in this pistol round second on the attack side, doesn't appear to be afraid of anything. He's just taking it सुना भाई फिर से रेज लिया है, ना माने ना माने। So close now to utilities. Tucked to the corner. अरे भाई still got one. Going 1-for-1, and in the meantime, Cryo defending B Heaven didn't realize that was where the entirety of Sentinels भाई बीमन पुश किया है फेड। I like this from EU. He's oh my goodness. Okay, forget about EU. Yasna, he's right behind them, hot on their tail. EU though into B main. They've planted that Prior. Oh, and Asna's just भाई fearless is the word to use. घुसे जा रहे वो लोग। Yep, just running them down. Asna. He does not care. Seeking out his players methodically. 3v2 है। दो जन सिटी पे। ओ भाई फट गया Zelsis फट गया। Zelsis naked out position. Nobody's watching this one. I mean, getting hectic into it. So 2 versus 2 is what it returned to now. 40 seconds.
Oh, well played. Nice भाई एग्रेस कर दिए भाई 100T ये थ्रो कर दिए मालूम ये लोग 100 थ्रो Thieves कर let दिए that लिटरली one slip away though. I mean, once they had Sentinels on the run, chasing Sassy out of B Heaven, hitting 10s when he was going for the plant, they then 90% voting for Sentinels आना बच्ची and they decide to go for a reclear. चैट ये थ्रो था कि नहीं बताओ थ्रो था कि नहीं playing on sight with crossfires. Questionable. हल्का सा थ्रोइश्वर हो गया है क्या बोलते हो I think Sen get away with it. Now, this is the kind of setup over towards A that you've got to be aware of. When there's a double initiator and the raise here, they can put crazy pressure onto John QT. And you know when the Cypher's there because you can see the cages being thrown over the roofs. Cypher healer Sen win. क्या? Walking forwards though. Molly missing from Bang just to try and stop them in their tracks. You can hear it now. Being threatened. अबे भाई Classic. Eventually getting it. Through the wall here. Damage done. Paranoia. Blinded up and enough to collect the kills. गुस्सा gameplay by Sentinels. A bold plant again. But this time not punished. One enemy remaining. 700 like के लिए 2 like. Gets cut down. So a strong beginning for Sentinels. 2 like चाहिए 700 like के लिए let's go. At the same time, not the most. One tap मार के दिखाओ 10 inch भाई. One tap देखो one tap. With their attack side. Tens भाई का one tap. I think the most. अबे वो hold कर रहा है भाई उधर against Loud. नहीं मारेगा So far, one tap नहीं मारेगा the like pathing from Zekken there, not quite checking pillar. Never mind. Sassy भाई मारेंगे Sassy भाई मारेंगे. Definitely opportunities for 100 Thieves to punish that kind of stuff. One tap. Once they have the rifles online. मैं जाता हूँ सोने पे सेन जीत जाएगी ठीक. In particular, the A side of the map is going to be really dangerous for Sentinels to try to play because they don't have enough utility to be able to counter what 100 Thieves are playing with over there. The Gecko Fade and Raise is nuts. You can use it for re-clears over towards A ramp. You can use it to fight at the beginning of the round. Full buy आ चुका है 100T का पहला buy और Sentinels का यहाँ पे बोनस ए राउंड. Let's go. Perhaps with the dog at the beginning. Let's go. Usually quite slow though off the rip their attack side. हैं? उसका पहला वाला केज किधर गया? अच्छा राइट लेफ्ट केज गए उसके. Into the cage. That's a unique way to try and take it. Thinking about getting a punish on someone who was playing aggressively there. No one's quite home. Dog. That was close. Yeah. In the meanwhile, because they've drawn all of this presence towards A Heaven, both initiators and the Rays, Zekken's got all the way deep up mid with Zelsis. Going for this one here. Flash and a peek for Zekken. Nade rebounds. Why, what a shot! He does stand his ground. Will he deliver? Additionally, nice. it's EU from the side. चल good bonus, good bonus. अरे भाई साहब. That is play हो गया भाई इधर. Down to 3 health. Knows where John QT is actually. He's got him locked right into place. ये गेम प्ले तो थोड़ा जाना पहचाना था. Precise aim with that one. John's going to get the plan down, so additional funds for the rest of the team. But I don't see how he's winning this with a Spectre in a 1v3. लग गए. Out of his grasp. Look at it. Funneling him right into their trap. चलो अच्छा बोनस था. Nice ult built up. हाँ 100T की ऑडियंस ज्यादा है उधर भाई. भाई 100T जीत रही है ये. मेरा पैसा 100 It's going to be an important thing to keep an eye on as well, because the 100 Thieves composition, not only has it got really good initiator utility, but also the ultimate shot भी कुछ भी मारता भाई ये बूस्टियो साला. This round though, just coming down to defending the high, destroying a line in the sand. Hyper पे जो मारा फेड ने. We are going to roll if they step past नहीं मारा. कुछ भी नहीं मारा. Nice भाई ये फेड वो. Boostio screaming vamos towards the end there as well. So 100T. They are actually investing into this. They're not choosing to play this as opponents. Boostio has gone for the judge. Bang's bought himself a rifle. हाँ ये मतलब एक ही है ना यू पूरे इसमें. क्या मालूम? मतलब मैंने सुना है यू ये वही है कि नहीं पता नहीं. मैं पहली बार देख रहा हूँ इसमें खेल रहा. अरे भाई साहब. Thieves just waiting for the cam to be broken. Full Huggies gameplay कर दी. थक गए भाई दोनों. Now the ult online with that orb.
Flash broken. Spotting these players out. It's two. Testing them out towards ramp. Junkie T. भाई जो fast mid push किए थे mid to B B ले लिए ले पूरा. Meanwhile, the rest of the team is going through B heaven, so there's two silent plays working on at the same time. वो Cypher CT पहुंच गया है भाई उधर. Guy in mid. So many unknowns right now for 100 Thieves. They have lost control of the map. Information is king in situations like this. It's the call to be made. Where have these players got to? So many times in rounds like this, it comes down to double jump down into that just to make sure in case there was a player in there, they would be able to get the Directed by Rohit Shetty. and they spot Boostio. There's some info. So through, almost landing it with the stray bullets here. 30 seconds left. Why not? Wingman sent flying, just in case there's another player sitting close deep. Zelsis. The lurks on lurks. Yeah. 4v2. This is why it's dangerous to lose control of the map in that way and form two players playing close to the site here. Dropping down now. Bang and Boostio. Oh, round है भाई, round है. क्या तगड़ा round है. That is snappy. That is clean, but can he do even more? भाई वो सीडी पे नाच रहा है जॉन क्यूटी भाई. जंप करे जा रहा है भाई. अच्छा गावत तेजा भाई बूस्टियो लेकिन मारता है भाई कुछ भी हो जाए. अल्ट कमिंग ऑन सेकंड. असुना का भी सेकंड. क्रेजी था भाई वो. सिंगम जेकन का और जेल्सिस का दोनों का अल्ट आ रहा है भाइयों. जेकन का और जेल्सिस नहीं, जेकन का और इसका आ रहा है भाई असुना का अल्ट आ रहा है. असुना का तो अल्ट आने के बाद भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा फिर, क्योंकि हिट तो होने नहीं वाला है ना भाई. चलो अभी मैं सेंटिनल को सपोर्ट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए. चलो और यहाँ पे सेंटिनल्स मिड पुश करते हुए डॉग यहाँ पे टपली खा सकता है लेकिन नहीं. ओके नाइस किल, इजी किल. यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है. जेकन का अल्ट आ चुका है. बीमेन पे बंदा एक. भाई बीमेन पे है ना. क्या हुआ यहाँ पे, कैसा मारा वो? जेकन मर दिया था. हाँ मेरे को भी तो वही लगा जेकन मरा है. अच्छा कोई और मरा, सैसी मरा. वो ऑब्जर्वर शायद तब भी क्लिक किया था. हाँ So they navigate a fairly dangerous eco round again. John Cutie just acting as a utility sponge, drawing out all of that initiated utility. Gameplay करी सा. Chased him around the map. Gameplay करी Stanish Gaming YT. सुना बाबे कुछ करो. Could have seen Asuna go for that with the showstopper. Think about the way that Evil Geniuses was playing last year when they won champions. They would send those ults on eco rounds. Oh yeah. When they thought they might be able to turn it into their advantage, they would go for it. That time, 100 Thieves playing with a little more caution, just making sure that they have that ultimate up for the next. And actually, the showstopper is one of the most important ults to work around. अभी असुना के पास अल्ट आया भाई लोग. असुना अभी तो ये लोग क्या ये लोग रीटा के खेलेंगे. मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो लोग रीटा के खेले 100 Thieves वाले तो वो लोग निकाल सकते हैं असुना के अल्ट पे. If he hears that dog, he can blast back out and try to get a kill on somebody over there. And that can be used in various different places around the map. राउंड के स्टार्ट में ही भाई साहब असुना ने अल्ट मार दिया और 5 किल ले लिए. भाई नशे होंगे, फिर नशे होंगे. वैसा गेम प्ले दिखाओ भाई. You're gonna super try to punish people who are loser out, yes, in those spots. It's timeout coming at another really important pivot round. If 100 Thieves lose this, their economy is in shambles. Sentinels have already built up such a buffer. And this was actually the half where 100 Thieves were having भाई कितने अल्टे देखो 100 Thieves पे भाई. 500 अल्टे भाई रीटेक के लिए अभी 100 Thieves पे. Lev running the breach and the Sova didn't really have people willing to take the fights. Second is so happy. ये राउंड भी अगर 100 Thieves हार गई ना तो सेंटिनल जीत गई. चलो भाई लोग देखो आ गया. इसमें तुम लोग को विनर समझने वाला है ये राउंड में. देखो अभी जीजी लिख दो जीजी. Half of the course here with Sentinels. We know what to expect their attack side rounds. They like to go slow. ये राउंड में तुम लोग को विनर समझने वाला है. Spot here, Asuna chasing him down. In the meantime, this walkout through B main. Cryo's fallen. भाई walkout किया है भाई Zelsis. Now I've got to really worry about this one with Zelsis dropped.
evened out 4 versus 4 here, but the site is now theirs. And Tens, it's a little bit more. Non-QT causing all sorts of problems, just pricking them from behind. Whoa, what a rocket! Miracle! जीत गई 100T. Straight down into sewers. He's left it just 2 alive now. भाई ने अल्ट में कैसे मार दिया? Hold in hand. Sentinels seeking to do the most here, but Thrash is going to be clearing out most of the site. Staircase still being held here by Bang. GG भाई. खत्म गेम खत्म. At this point, there's not too much that Zekin can do. He's just eating all sorts of bullets, raining down onto him. There's the fuse for 100 Thieves. So, ults being utilized there to really great effect. Yeah, हो गया. play from 100 हो गया, चलो हो गया. चलो हो गया अभी. भाई लोग sorry. Sentinels गरी. Sentinels bye bye. Good night. Sweet dream. Take care. YT. OP. retake के लिए तो बढ़िया आ सकती है. That Viper lineup, oh yeah, he just got caught there trying to pick the orb back up. But that Viper orb lineup is so powerful. You'll sometimes see teams default their wall towards B to threaten lurk plays out there, but that Viper orb that I think Zest came up with from old DRX. It's so good. Ult crazy था ना भाई. Players if they're not careful for it. Here we go, explosive. Right up. चल चापटी. Okay. चापटी gameplay. अरे भाई साहब. It really does. There was a TP from Tens as well in the meantime. Ult expended and bang, he did win that fight out. So very reminiscent of what they were doing on Lotus actually, just sending Zekin and Tens in. Those Tens teleports that I don't think they were really ever finding value, and that's another one that gets shut down. It's going to make this round more difficult. Trying to mid round without smokes नहीं है भाई अभी. वाइपर का बस वॉल वो डिफॉल्ट वाला है, वो उठेगा नहीं अभी. They know. ओ भाई रीड है भाई लोग का, रीड है कि ये नहीं हो रहा भाई, बी जाते हैं. Great read, like you said. चलो वापस RIP होने वाला है. Being pre-placed, that's the Viper ones, so they think, okay. Zelsis का ult आ रहा है. Thieves ready to receive. And this could be a bloodbath. Nightfall here as the Uto comes out. The damage definitely being done straight through the wall though. That second. भाई एम का विषय हो गया है बे इनका. ओ भाई वाह. भाई एम का विषय हो रहा है भाई. वो एंट्री पे वो एस्ट्रा कैसे मार लिया यार उसको, जबकि उसका स्प्रे कनेक्ट हो गया था. थोड़ा अभी नसीब और एम का विषय हो रहा है. क्या बोलते चैट? बराबर की नहीं? बराबर बोल रहा हूँ भाई. 100 तो जीत रही है. That's just the gamble of a lifetime. Super well played. We didn't quite see it from Tens POV as to why he committed on that ultimate, but really put his team in a bad position. भाई ये कितना ऊपर मॉनिटर रखा है बे. Ziggs will be happy if they make gambles. एक बार बाहर जा, मैं नहीं जा रहा बाहर, समझे? अपने देश का मैच रहेगा तो बाहर जाऊंगा. इनमें क्या है भाई? Zekin का अल्ट आ रहा है लेकिन बहुत दूर है, वो भी चिल है. तो अभी तो पूरा एम पे ये राउंड आ सकता है बेबीज. देखते हैं ये राउंड में क्या होता है. Waiting, maximize the use of that molly. Let's rip now as soon as he hears the dog. A boom bot. And generally, 100 Thieves have been following the noise. You see EU start to get pulled away into B heaven. They're expecting this to be some kind of B split, and Asana's already calling for a re-clear of B main by the look of things. Trying to bring Cryo with him. That is on the exact opposite side of the map to where the actual action is. Close to flowers. अरे भाई क्या एंगल लगाया भाई. No way. Okay. Nice attempt at the discipline. Respect it. Open sight for the pit. Tens का पोजी अच्छा है. Tens, nice one. That is nasty stuff. All the more difficult. And the decision has been made for 2v4. Really. Thieves जीत गए. Yay! Back away with the rifles that they can have. So Sentinels. Usakale koma. Usakale koma. Chose that mid-round timing to try to pull Koma. people Usakale away kale from koma. mid and instead go to explore B main, trying to gather information. And Sen calling the freeze, slowly contacting over back towards A, just found the gap. And we just seen a round from 100 Thieves where they gambled perfectly and won because of it. That's the other side. Double-edged sword if you're going to play a bit like that. What a time to do it. 4 players surviving for Sentinels. If they lost that round, like we said. कौन सा मैप चल रहा है? ये third last decider map है. Same case here for 100 Thieves. Should be, potentially. Yeah, things are starting to get a little tender, though, for the 100 Thieves economy. And both of these teams
back and forth does put a lot of strain on your ability to be able to buy up. Cover going out. I think 100 Thieves are really struggling to get information and deny this Viper setup. Cryo's just basically having to sit there and babysit B main the entire round. It's just relegated to jump spot, isn't he? Yeah, and that's the problem with not having a Cypher in the composition. Big strength of 100 Thieves comp is that they have that double initiator that the desk was talking about. It's awesome. You don't also have the क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है? ये एकदम शांति वाला गेम प्ले हो रहा है भाई सेंटिनल्स का, एकदम शांति वाला, चिलिंग्स कर रहे हैं भाई, फुल इन्फो लेने की कोशिश करेंगे अभी ये लोग, कुछ किसी को आइडिया नहीं है क्या क्या विषय क्या नहीं, डिफॉल्ट का कॉल है यहाँ पे, सब लोग अपना सोलो, ओ भाई डिंग खा लिया वहाँ पे भाई साहब, फेड इतना लो हुआ वो फेड, नहीं ज्यादा नहीं, और एक जंप पिक कर रहा है, सब जंप पिक कर रहा है, जा आइला इंचा. Both off their respective angles. Not that that's pulled anybody over just yet, but that's the idea. Sen are hoping that they can make it easier to walk through on this B split. Wow, and what a punish that is! All of these 100 Thieves players having to jump because they don't have that info and getting smacked. And now they go, Asuna close to the choke. There was a molly in the hands of Zelsis, hands him, and easy one Cryo still. Asuna का राउंड है भाई. ओ भाई, सेकंड क्या लैंड हुआ है भाई उधर हवे में से, क्या गावा दूर. Another really tough situation. They want to fight this. They want to fight this. They want to fight this. Boostio. ये गेम खत्म होने के बाद तो आएगा भाई. अब फिल्म बाय रोहित शेट्टी. Feels the two. Sees the reposition. Lined up, actually. Lined up entirely, but it is that crossfire. No freaking way. No freaking way he gets this, भाई. It will be a monstrous clutch. No way, भाई. क्या? Disgusting Wow. work by EU. Insane performance. How has he managed to? भाई वो सबको टैप्स दिया है. I was really shocked with the call there. Boostio and EU committing into that when they had that player disadvantage, but holy, does it work out when he's playing like that? Masterful. That's a fantastic clutch up there. भाई का निकाला है भाई राउंड, वो क्या राउंड निकाला है भाई. Because that was an eco swing. 100 Thieves would have had to be on some kind of broken. अगर ये मेरे टीम में रहता ना भाई EU, तो ये क्लच करने के बाद हमेशा मैं ये ऐसा करता. उनकी टीम में होता है. कोर्स भाई. पानी पिलाने तो एटलीस्ट होता. पानी पिलाते हैं. ओह सेकंड भाई, अरे भाई ऑलमोस्ट भाई 50 डैमेज खाया, वो 100 डैमेज खाया एक्चुअली. ओह मर गया. Essentially TP straight into the fray. One player up into heaven. That's Boostio. Boostio भाई का all the entertainment. No freaking way, dude. The savior. The Boostio. Oh भाई, भाई क्या राउंड्स, क्या शॉट्स भाई, कुत्ता बना रहे भाई. क्या एम हो रहा है भाई लोग, क्या एम हो रहा है. Sentinels had the right protocol, but they made sure that they were set up to go for the exec, increase the tempo, and punish these players. John slipped. ये मारा है ना इसने. दोनों शॉट भाई, ये देखना अभी भी देख. And he looks very clean with the shooting. My God. Insane. अबे. I put for you. I was putting in work. भाई वो हेल वाले बंदे को मार ही नहीं पाया जो डिटेन था. है ना, वो वाइपर को मार दिया ना. शॉट भाई. Boostio's been hitting every shot. He is on one right now. उसको गिरवी रख के आया है भाई. शॉट मिस ही नहीं करता भाई. Scaling into the site, they are meeting them. This is a hard rotation. 100 Thieves, what a time to do this. Pull this one out when the weapons are weakest. That is only up to Sassy. भाई मैं तो राउंड ही नहीं देखा. Fragile is his place. भाई. And a thrifty round. I mean, अबे क्या हो रहा है? Heartbreak for 100 Thieves. After all that talk of economy to broken by, but it matters not. और भाई आप ऐसा क्यों नहीं खेलते? ए भाई मेरे को कॉल करके मेरे से ही तो स्ट्रैट लिख के गए ले वो लोग, क्या बोल रहे थे? Swings at the very start to make it feel like they're fighting A. भाई सब ये मुश्किल जा आइला है जा. It's a great shot. His individual skills been nuts, and then they read the fact that there's a response on A and swarm around the rest of these players trying to react.
super mobile. आना भाई, 350 राउंड निकाले भाई लोग 1000 लाइक आज अगर नहीं हुए ना तो आज तुम लोग का दिन बहुत गंदा जाने वाला है, मजाक से हट के। Who's going to lead at the half, or whether we're going to have a draw. Not the rifles. B main. Game for Zelsis. Has he spotted? No, I mean he's pre-firing it just in case. I believe there's a jump spot. Yeah, he doesn't know. Cryo has been playing into that back corner. He's alone, he's spamming this. Calls for rotations, and here it is. Dude, वो लोग That's one of the first they are times good the भाई। found an advantage by holding like that in B main. क्यों Zelsis easily मरा मालूम क्या? क्योंकि आसुना है ना हेवन से साउंड देते देते ड्रॉप हुआ डिफॉल्ट पे, और उसने दिखाया कि वो डिफॉल्ट पे पीक लेगा, इसलिए Zelsis ने डिफॉल्ट पे एम रखा था और उतने में भाई इधर से पीक किया उसने। और क्रायो ने अभी तक वो वाला एंगल खेला ही था, या तो बॉक्स के पीछे या तो साइड वॉल के पीछे खेल रहा था। Up into heaven with the smoke. ओ भाई वो लग देख उसका साइफर का। What a kill! Zekken will not get out alive. फुर्सत में आ रहे हो। ये योगा कर रहा भाई साहब। They are none the wiser, but only just the one. Asuna forcing his attention forward. 2v3 They want to try to take this fight straight to the site, onto these players, seeking them out, all the way to the back. A map, the spam kills, all the way. Tens is really finding it difficult, and he does 2v2. fall. 2v2 planted potentially. I don't know for heaven. What? Spam here. No way, no way he gets it. Oh my! Oh भाई साहब, भाई साहब, 7-5. Switching sides. भाई। That one was so incredibly close to going. अबे ये जॉन भाई कुछ भी मारता भाई, उसका तो एम उस पे था भी नहीं। Very streaky, very one-sided. This back and forth constant. भाई जॉन को पता है 2 किल से तो ज्यादा लेने थे जिस हिसाब से उसका फ्लैंक था। देखिए ये क्या शॉट था भाई उसका। And yet Sentinels still leading 7-5 at the half with John calling a masterclass. Yeah. So tied between these two teams. Well, Liz is standing by with Kelly and Tina, the parents of Bustio, and तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गेम जो आ पहुंचा है वो बहुत फोड़ा फोड़ी आ पहुंचा है। यहाँ पे ये 2 दादियाँ आ चुकी है, ये एक आसुना की मम्मी है और दूसरी जो है वो पता नहीं किसकी केली किसकी मम्मी है, बूस्टियो और बैंक। केली है, केली। I love all you guys. You're everything to me. I love you guys. You're everything to us. Now, Tina, I have to ask you, how have you seen your son grow in the time that he has been a professional player? I've seen him grow tremendously. There isn't a day that goes by that I'm not super proud of everything he's accomplished. He is absolutely the most committed, devoted player, and we just love him. You're gonna make me cry. I can't. फनी है सीन, इमेजिन वो पीछे जो ऑडियंस है वो स्क्रीन देख रही है, और सामने जो खड़ा है वही बंदा खड़ा है, उसको नहीं देख रही। भाई सब स्क्रीन देख रहे थे, जस्ट सामने, मतलब स्क्रीन से पहले ये खड़ी है। We love all of you. We love the fans. We love everyone here. Kelly and I are very emotional, so we spend time in the evenings. We watch our boys stream, and we cry tears of happiness because we're so proud. And nothing makes us happier than to be here to support them. Okay. This just made my entire day, everyone. What a wonderful halftime interview. But we have a very tight game to get back to. So Bren and Sideshow, please take this very tight game back. I mean, 100 Thieves is going to be earning a few more fans after that. That's, Dude. yeah, I mean, so wholesome. But that also shows you how much is on the line. I mean, just for everybody involved too. There's pride, but it'll ये be इंग्लिश more वाली with मैम क्यों लग रहे a little हैं? bit of devastation if 100 Thieves do end up being Cuties eliminated भाई. here. Because again, these Cutie guys, mummy. they put everything into it. All the players on both sides. We've already seen 2 teams globally get eliminated from contention in Madrid. And the rest of this map is going to define the third. You don't play until April. If you end up getting eliminated here, भाई गेको का एक बफ आइडिया दूं क्या मैं, कि उसका जो ऑर्ब उठाना रहता है ना, वो टीम में से कोई भी उठा सकता है, उसका फिर कूल डाउन बढ़ा दो। भाई मैं गेम बनाना चाहिए भाई। Down to the minute mark almost here, and now they're starting to walk their way over with the Viper wall.
Tens is in this spot at Flower, holding a चलो अभी डिफेंस कर रहे हैं भाई. राउंड स्विच हो गए. इट्स अटैक टाइम फॉर 100T. गंदा स्मोक किया है टेंस ने भाई. टेंस ने गंदा स्मोक कर दिया है उधर. Piece by piece, 100 Thieves might be gaining exactly what they need. Overstepping themselves here by Sentinels on their defense side. अभी भी साइड पे भाई. John the cutie gamer YT. भेजे भाई मजदूर को भेजे प्लान करने. Get him gone. Oh no! Oh no! 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 This could be a disaster. 3v2. Ushi or low है भाई. Winnable है. To the corner, but plenty of players left standing. 100 Thieves now swarming onto the site. Teva. No! No! Oh my God. भाई पूरा पुलाव मिला था उसको. हाँ ना भाई. John QT is weak enough. One shot will do it. The damage there. 12 seconds remaining. Seeks to deny. Bro, both are 1 HP. Still kicking by the way. तीनों जन 1 HP है भाई. Imagine if he clutches this भाई. No freaking way. No way. I'm not ready भाई. Single shot. 3 bullets. Wrap around. Cryo. फिर इस पे स्टार्स वगैरह हैं क्या? नहीं है. क्रायो इस पे खेल रहा है क्या आपने? No way. And he knows it's not really planned for. उसके पास कुछ पुल वुल नहीं है. Hasn't pushed up a tap. Oh, अच्छा main plant. The game of chicken is being played all for the pistol line, all on the line. Oh, भाई. He delivered. कहाँ पकड़ है? ये भी तो था 1 HP. भाई राउंड था भाई. राउंड था भाई. Cryo still has to go for the swing, and yet hits the shot. Shit. That was anybody's. Even after Sentinels' original game plan had been so disrupted, they had their chances of being able to win that round, but it's 100 Thieves that come out. Good morning मेरा. भाई लोग लाइक मारो. जो भी अभी आया है सभी को गुड मॉर्निंग भाइयों. सभी को गुड मॉर्निंग. लाइक मारिए. आए हो तो लाइक मारिए. 1000 लाइक करके ही जाएंगे आज. मम्मी बोलिए घर पे में नहीं आना. स्ट्रीम बंद मत करना 1000 लाइक जब तक नहीं होते तब तक. Looking to paranoia off the cams contact, but there is nobody in that area. In the पांचों जन मिड देख रहे भाई सेंटिनल्स के. ये इकोनॉमिकल राउंड है अपना. और क्या बोल रहा है? जबरदस्ती क्यों चला रही है ऑडियंस? क्या मालूम. See if you can spot any players, get some additional info, because 100 Thieves, they don't want to commit into us just in case there is a stack on A. As soon as the boombot's online and the Viper wall drops, though, they're going to be able to take A under control. That is with the Dizzy. Additional layers on top. Worth keeping an eye on trap plays like that, though. हाँ यार प्रो प्लेयर्स में ना हमेशा इनको ओपन कार्ड मिलता है. ओ भाई. Wow. Here's the congestion. Yeah, EU definitely feeling sharp with this one. Sure got all the angles covered. अब डाल दिया भाई. Oh my, Cryo. Damn. फ्लॉलेस निकाले. Cleans house. So 100 हटा Thieves दिया get भाई up उसको to लिटरली. 7. अभी फुल बाय भाई. Come on Sentinel round. Have they got some kind of big idea cooked up? Sentinel round time. On Bind, we saw them comboing their utility together really heavily to try to ये take शॉट बढ़िया मारा the है. site. भाई रख के ऐसा चापटी दिया भाई उसको उसने उल्टे हाथ का. ये राउंड अगर सेंटिनल हारती है तो टाइम आउट आना चाहिए. New players stacked to skirmish. Developing, bubbling, brewing. Smoke dropped down. तनीश भाई यहाँ पे अपना रंगोली बना के पीछे आते हुए. यार वही स्किन चेंज कर लिया यार. ओ भाई नाइस किल. भाई मॉली देख फेंका है उसने मजबूत. Ah, gameplay. Is always going to be going for something a little unorthodox. But they held अभी उसने बीमेन का स्मोक उसका वन वे ना मिस किया टेंस ने शायद. Good support utility from Zelsis. और उसने भी एस्ट्रा ने भी क्रॉसिंग स्मोक अच्छा डाला वो. Back over towards A. Annoying thing now for them. Yeah, like you said, around the world ping pong, but none of that prior map control. Tense noob bro, yeah. I should get replaced bro. Nobody playing too aggressively, but there's still these 2 trips here. John's position. Trip spotted. See there, peek with the cage. Maybe a couple of stray shots might be in order. Oh bhai. Another plan. भाई प्लांट में जो हेल्प हो रही है. अरे भाई विफ कर दिया ला भाई जॉन क्यूटी ने अभी. Wrapped around here onto heaven. It's all Cryo. My ult's ready. 2v3. भाई ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है सेन के लिए.
his hand. It's still a 2v3. Definitely winnable. Wall committed. Slices Bang up the lineup map in a very unusual way here. Bang. क्या अलग वॉल किया भाई? Tux is going to be hearing them drop down now, making that information known. Bang. Weaving in and out backwards here. Celsius unable to get the half on a defuse. That's the pull, the benefit of all of this. What? How does he win that? And now the wall working against him in his face. No freaking way! That is disgusting. भाई क्या राउंड था ये? No shot. He's just bulldozed his way into the spike, mowing down two of them, and Tens in desperation with time ticking low. Thinks about playing through his outs, which is, I guess I'm just gonna go for it. ये क्या था? भाई कि कोई एनिमी नहीं बचा। A monstrous round. भाई ये गलत रिप्ले दिखा लगा दिया वो। क्या वाला लगा दिया वहाँ पे? He got so many ये kills क्या in the टीपी previous है? वो round. क्या उसको मारा? What was this भाई? What was this भाई? Somehow wins that. सुना तो माँ कसम में भी है ना आग उगलने वाला है भाई। Talking your economy to death, but it is important. 100 Thieves winning that bonus. Set up for अल्ट भी लग success रही है now. भाई इस बार। Paranoia though, being held by Tens here. Yeah, and here's a refight all the way together here, but do they have the guns for it? Oh, Yes. nice one, Straight to bhai. the dome. Boost here removed. The spike drop down as on top of this. What? Right from behind second. ये कब आया भाई? Push out Amen. That is filthy work here, only with the classic. and they have no swarm way, competition. dude. Relentless, running and gunning. Cryo, he's not taking a भाई शुरू होते खत्म कर दिया भाई। भाई सेकंड पीछे से आके क्लासिक से 2 मार के गया है भाई एमिन पुश करके। Quite a number of rounds now. क्या हो रहा है भाई legit? Oh, this game is crazy भाई। But this time, ये है ना that मैच push out from second. ये देख भाई what the मोन्टाज बन रहा भाई। भाई साहब। What a response. There are hero plays and trap plays, set plays and big plays all over in this series. See how much that meant for Kaplan. He realized how big that round was. ये क्या मौली है Could भाई? be the difference between 100 Thieves taking that lead and running away with it. Yeah, you think Second का ult आ जाएगा। that can sometimes just win you matches like this, and it's instantly been knocked on its head. Thrash through now, plenty of trips to deal with. Be tying and tangling him up, sent flying into the back of the site. क्रायो मिड लक कर रहा है उसके ऊपर पास गन नहीं है लेकिन। Want to bunker down here, batter the hatches. They want to make a go of this one. Still the plan's going. Oh, Whoa. where the hell are you? Smoke in your face with a one-way boost to there. Nice. Flash though. क्या blind था वो? This is really getting No treacherous way in a भाई। second. Not going to be able to defuse it. Brought down. The close-up positions is really just being seeked out, sought out. Flick of the wrist. भाई Celsius. साहब अभी इस पे गन नहीं है अकेले। गन भी नहीं He है। has one pull. Never tap onto this one, so pushes him away, buys him some critical seconds, but he doesn't have a gun for the job. Somehow removed and away. Oh भाई good freaking round भाई। From the Sentinel players, but man, oh Shit man. भाई। It gets so damn dicey. भाई वो जो ब्लाइंड था ना हेल वाले को वो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। हेल पे 2 जन थे ना बहुत क्रेजी था। गेको भाई क्या वो फनी सीन था। And then on the other side of ये things, भाई। Hasan's going deep the other भगवान way. की राह पे चल रहा भाई। खो गया था भाई वो। And Cryo just trying to pick up the pieces towards the ओ end. भाई अभी तो 4 अल्टे भाई। All of this और अभी madness eco round from भी the है। beginning of the attack half of 100 और Thieves. भाई though, अल्ट अकाउंट से should आया हूँ start लाइक to करने। quiet That's my down G. now. That's my G right there। Enormous economy and ult advantage for Sentinels. They are favored to pull ahead here by 2 rounds. What the hell does that mean in reality? The ecos have been seeing not too much. कर लर्क हाँ बैंक गेमर। Make it a little bit easier. Scared of the approach here. Where is that rocket being भाई utilized? साहब भड़क गया सेकंड। That's a heavy investment when they were in a उसने देखा भी नहीं कि कोई है कि नहीं। उसने अंदाजे से लगाया बे कि मिड पे साउंड हो रहा है तो बी में एक रहेगा ही। I guess. in a punishable spot here. Yeah. Oh my. Wow. भाई क्या? Okay. भाई नो वे इसका पीसी भाई चेक करना चाहिए ब्रो ये बहुत सस्ता। It's sometimes going to be a non and done. Never mind a one and done. And instead What? 3. Get out of here. Bro, no shot. Better on an eco, but I mean, look at this. The reactions. Adjust भाई aside the transfer. What the? भाई ये लास्ट वाला तो कुछ और ही था। Surgical. स्नैप हुआ है भाई वो लेजिट। And that takes any kind of danger out of the eco round for 100 Thieves.
So we're getting back to an even position. Ults on both sides. क्या मार रही है? Rifles on both sides. But a 2-round advantage for Sentinels on ऐसे भी खेलते हैं लोग? The pressure is on 100 Thieves right now. Time out. Don't want to let the moms down. And Asuna was an absolute beast on Bind. I think the big difference maker between the performances on map 1 and map 2, a lot of it came down to how Asuna was following up. Someone literally said Sentinels overrated and John did that on this face. सहम गई भाई 100 अचानक से बैक टू बैक 2-3 राउंड ऐसे गए इनके ना भाई कुछ भी भाई एमलेस मास्टर क्लास भाई legit भाई साहब It's needed now. क्या ही हो रहा है यार? Only 2 rounds ahead for Sentinels, but this can सबका पिंग सेम है क्या? हाँ, ऑफिशियल इवेंट्स में रैट एक अलग से सर्वर सेटअप करता है तो सबको 0 पिंग या 1 पिंग आता है. It really was. It was Doomer times for both. 0 पिंग. And for whichever team ends up getting eliminated here, it's going to be a long time until they see their team play again. None of these players want that. Running 2 for Nail. Busy. There. Down to the side, no connections. Evanade combo. To try and punish some potential read of maybe where Zelsis has been playing in the past, but doesn't get anything until used. They hear the orb's been picked up. Right there. Zelsis. Smokes in their face though. 100 Thieves, they can't cross that line of scrimmage. Ready. Right there. Maybe now though with the util. That's way too much for Zekken to try to handle. The wingman combo with the Prowler, very difficult to work around. And Boostio is going to be able to get back in here. सुना पे अल्ट है बट सचल है हाँ सचल भी है. A slower pace to this one from 100 Thieves. Zekken's going to be feeling like he's isolated here. Knows that mid has been compromised. It's going to be called out to him. ए की तरफ 2 जन है और ये लोग मिड वेंट्स लेने का ट्राई कर रहे हैं. बी की तरफ दो अटैकर्स है. I'm not sure what Sentinels is trying. I mean 100 T is trying. 100 Thieves to make a ping pong across the map. This is going to Tens ने TP करके चेक किया कि एमएन पे कोई है क्या. Thinking about going for the B split. Time is running out. It's an ult committed. Okay, Asuna is faking this. Fake कर रही है. Bro, what is that fake? They're off the sides. Okay, never mind. Maybe cancelling his back. Okay. Big kill, bhai. Big kill. He's his way back into elbow, holding down the fort. Out to the side here to flash to connect. Boostio. Big kill, bhai. He is down. Everyone following up. Oh, bhai. Well played. Well played. 2 players left. 100 Thieves. Well played, bhai. Flawless, bhai. भाई that was such a nice fake. बहुत अच्छा फेक था लेकिन जैसा ही एस्ट्रा का वो आया ना उधर स्टार आया ना वैसे ही लोग भाई रुक गए टेंस और सैसी और टेंस ने फ्लैश भी किया था येमेन तो they couldn't push. The call was great. They went they मन भाई ओवर टाइम तो ले जाओ यार. आखिरी मैच है. And then somehow Sassy was able to pick up everybody. He just swung through the smoke, deleted, I think it was Bang the first player. खराब हो गया भाई And मोमेंटम suddenly, अल्टी का. there are too many threats on the A site. भाई टेंस ऑफ लिटरली बिना डरे खेल रहा है ऐसे लग रहा है. जो हुआ देखा जाएगा. चलो घुसो. बहुत अच्छा हेल्प किया भाई उसने सासी को. The guns few and far between with the Guardian, the Bulldog, in the hands of just Boostio and Bang. अल्ट किसी का लोड हो रहा है सैसी का लोड हो रहा है बूस्टियो वो भाई बूस्टियो का लोड हो रहा है अल्ट. तो ये राउंड अगर बूस्टियो का अल्ट आता है तो एग्जीक्यूशन थोड़ा बहुत इजी हो सकता है विद गेको अल्ट. But they are not going for the orb. They're going. Still contacting with a camel catcher. Now they know. Players are there. Celsius. भाई ये साइलेंट जंप कर रहा कैसा? कैंसिल कर रहा ना? हाँ. Sentinels need to get some information somewhere else in the map, so Tens is peeking towards A ramp. But the real threat is whether or not these players in B Heaven can survive. Snake bite. And a good smoke as well to make A it पे feel वो like वाइपर they could स्पॉट be हो गया है pushing फ्लैश up से. behind that. Second ready Is है this going to भाई. be another fake, like a nightfall into A Heaven and then quickly pivot B? Noise made, jump down, Zeken's fake holding कर रहे वो लोग it. गल्ट The से. gun for now, he can hear them onto the ropes. Popping up and over the nightfall. भाई इनका फेक फेल हो जा रहा है भाई. They can't do anything. भाई नहीं स्पॉट करा ना वाइपर ने. नहीं करा. Cleans him up. Oh, Cuts never him mind. out of the picture.
The B मैं टीम plans. स्विच कर लिया था They come गलती through से. here, and 103s critically. They have the post man positions onto heaven. Mosh pit down and defeat Sassy. You got to get the hell out of there, and he does survive. भाई साहब सासी. भाई हाँ हो रहा है. साहब. डेंजर टीम है भाई. भाई लेकिन बैंक बचा है भाई. बैंक भाई निकाल दो. In the round. हमारी मम्मी पीछे ही खड़ी है. One player standing. He's got the pit, but पिट no हो गया mollies. घर जाके ढंग से खेलो. Multiple players swarm in a position like the map, but listen, they just follow true. GG भाई. And Sentinels get to 12. भाई वो जो 2 राउंड निकले ना, जो जैकन ने करा ना वहाँ से पिस्टल से, to me has the big impact here. Look के at the बाद से भाई timing. इनके दिमाग की लग Just गई. peeked away. And of course that kill on भाई फेक कर नहीं पा रहे 100 टीम मालूम. But Sassy was under enormous amounts of pressure. He had a mosh pit at his feet and still managed to pick off EU, who would have been a backstab to try to. भाई सेंटिनल्स उनको थोड़ा और कुछ फेक करना पड़ेगा भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को. उन लोग को पता ही नहीं था कि सिचुएशन क्या है, वहां पे अल्ट करके वो लोग घुस गए मालूम. मतलब फेक करने का ट्राई करे. नहीं. For the final round, he's got a rifle as well. One would assume. जॉन का 3K was turning point. हाँ ना भाई. जॉन का 3K नहीं, the pistol round was a turning point. All these close rounds, I mean, it's just whistled that economy. Still down to the half armors, the Guardians. Can do चलो भाई, right for 100 Thieves to do. अल्ट है भाई, बूस्ट ही होगा. To stay alive in the series. ये स्मोक के बाद स्मोक के बाद अल्ट करने वाले हैं लोग. Against a thrash, Boombot, Dizzy. Oh, and here it is. Someone needs to deal with this one. It doesn't clear it. No doesn't clear way, it. dude. Boombot doesn't either. Perfect on the strike. Molly at their feet. They steal. Bro, the no goal. way. He might have just finished it for them. Make their way through B main. It's all Sentinels. भाई 10 ऑफ शॉट मिस कर रहा है भाई. Threes maybe made this winnable. There's a chance. They've really got to capitalize. Seekers right behind them, chasing. Hot on the heels. Spams down. Only the one of them. Just going to be pointing them in the right direction. Players towards me. There's 35 seconds left. And here's where you got to get a move on. Only one player to beat them is Sassy. 30 seconds left. Close now. Anything to clear him out? Not really too much util at all. 25 seconds left. How do they want to take this? 100 Thieves. Time is of the essence. They drop down themselves. Into the Damn, bhai, well played. That could be it. Bang, flashed. And he just insane game, bhai. GG, bhai. GG to Sentinels, bhai. GG. क्रेजी गेम भाई, क्रेजी गेम. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. पैसा वसूल मैच, वर्थ इट मैच भाई. इतना जगह ना, वर्थ इट मैच था भाई. कुछ भी बोलो, वर्थ इट मैच भाई. लोग इसी बात पे लाइक भाई, 1000 लाइक किए बना स्ट्रीम बंद नहीं कर सकता मैं. 1000 लाइक किए बना स्ट्रीम बंद नहीं कर सकता भाई. जल्दी. Unbelievably difficult group, and both of these teams gave it everything today. भाई साहब गेम था यार, गेम था. It's going to be a heartbreaking situation for 100 Thieves. But I mean, what GG, a भाई, GG, performance from individuals on Sentinels. Zekken, map 1, map 3 looked sublime. And Sassy, towards the end Crazy, of split, bhai, pulled crazy. everything out when it mattered. Putting on a Sadak performance. Bhai. Sky just decided to win. Sky allegations thrown out the window. No. 2-1 is the victory here for Sentinels. Earn their right to continue deeper into this kickoff tournament. Take a bow, well deserved. Yeah, let's go! Sentinels are here to stay. To their next 100 T घर पे. It doesn't get any easier. चलो, bye bye 100 T. Leviathan faces them. Good night. They've got a while to prep though. No 2-0 but GG. Yeah, GG Abhishek bhai. They got pushed. Thank you for the 40. 100 Thieves certainly had some people popping off. But the players were firing. What a clutch this was. Yeah, just Oh भाई, ये क्या क्लच था भाई. ये दोनों क्लचेस बहुत इंसेन थे भाई. यहाँ से डाउनफॉल हो गया भाई पूरा. This series was completely tied up. भाई, Anybody's game. And Sen just pulled it off. Running away with the tried and tested defensive setups on split, yeah. GG भाई, GG. Oh भाई, that was a good day भाई.
कल किसका है? कल पता नहीं भाई, अभी तो आज वीसीटी पैसिफिक में इतने अच्छे मैचेस मतलब है, अच्छे मैचेस है, रुक देखते हैं। सब देखने आ रहे क्या भाई? जीई का है एक दिन 6 घंटे बाद। हाँ वो कल है। आज नहीं है। DFM TS है, DRX टैलोन। ओ भाई DRX टैलोन का बहुत इंटरेस्टिंग मैच है भाई आज, लेकिन आज तो भाई वैलोरेंट खेल रहा हूँ मैं। और कल जेंजी, ओ कल भी 3 गेम्स है। कल जेंजी का है, जेंजी रेक्स का है, जेटा जीई का है। और ये बीच में जो है ना वो आई गेस जो हारेगा उनमें का है, DRX टैलोन और DFM TS में जो हारेगा ना उनका मैच है वो, आई गेस। कैसा लगा हर्ष भाई आपका स्टूडेंट टर्न्स जीत गया? ए ब्रो आई एक्चुअली फील इज प्राउड एंड एक्चुअली ब्रो आई जनरली फील वेरी प्राउड दैट मैंने जो सिखाया उसको उसने वो किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्लैड दैट इज गेम प्ले इज ओपी। जो मैंने उसको जैसे बताया था कि ओमन की प्लेज उसको करनी चाहिए उसने किया, सो आई एम वेरी थैंकफुल दैट इज ओके गेम प्ले एंड नो मोर क्वेश्चंस गाइस। एक कॉल आ रहा है। हेलो या ना ऑल गुड या इट वाज ऑल यू टनिज। Yeah. It was all you. Well played. Yeah. भाई लोग लेकिन वो सब छोड़ो बे, वो सब छोड़ो, मेरे को ना भाई एक चीज जानने की है। वो सब छोड़ो भाई, मेरे को ना ये बताओ, ये देखो मैं बता दो तुम लोग को, एक क्लिप दिखा दो, एक क्लिप दिखाता हूँ भाई, मेरे को वो क्लिप समझाओ कोई भाई। Like how can someone aim like that? And मतलब वो इंसान का रिएक्शन टाइमिंग क्या होगा? Someone explain me this भाई। भाई साहब भड़क गया सेकंड। This उसने देखा भी नहीं कि कोई है कि नहीं, उसने अंदाजे से लगाया बे कि मिड पे साउंड हो रहा है तो बी में एक रहेगा ही, I guess। Oh my wow। अबे वो एम भी नहीं कर रहा है। What the? That was insane. That was insane भाई। नहीं ज्यादा नहीं। हाँ क्राई वाला भी ओपी था भाई। भाई ये भी क्लच था ना, ये भी एक क्लच था भाई। टैप टैप टैप। No freaking way he gets this भाई। भाई ये भी बहुत क्रेजी था भाई, ये भी बहुत क्रेजी था भाई। इसका है ना और एक क्लिप है भाई, और एक क्लिप रहेगा जॉन क्यूटी का, कि जो देख के मैं बोला भाई ये थोड़ा सस्त है भाई, कुछ भी एम है इसका। शायद वो हाई सेंस पे खेलता है भाई, तो हाई सेंस वाले खेलने वाले हैं ना भाई, वो थोड़े दिखते हैं भाई वैसे ही। दैट्स एम लैब्स राइट देयर। एक्चुअली मैं भी एम लैब से ना अभी चालू किया हूँ। सो अगर मेरा गेम प्ले ऐसा तुम लोग को दिखने लग जाए ना, तो कोई प्लीज़ बोलना मत कि भाई हैक कर रहे हो आप, ठीक है ना? तो मैं बहुत मारूंगा, ठीक है? अभी मेरी बात सुनो। अभी आज तुम लोग खुश हो गए रहेंगे ये गेम प्ले देख के मेरा, आज बोले रहोगे अरे यार आज हर्ष भाई मज़ा आ गया यार वॉच पार्टी में। हर्ष भाई थैंक यू यार ओवरनाइट हमारे लिए स्ट्रीम करने के लिए वगैरह। चलो ठीक है, थैंक यू बाद में बोलना। अच्छा लगा कि तुम लोग आए, ठीक है, मज़े आए अपने को। दैट वाज अ फन स्ट्रीम, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गेम एंड मगा जिंगन मगुल मुक सुरो। सब लोग अभी उठे हैं, अभी मैं जाके सोऊंगी और सोने के बाद हम उठेंगे
और उटेंके के बाद हम लोग करेंगे ई स्ट्रीम ऑफ वैलोरेंटे रैंक ग्राइंडे। ओके गाइस, तो मिलते हैं वैलोरेंट ग्राइंडे पे, तब तक के लिए सायोनारा गेमिंग वाईटी। लेकिन आज VCT पैसिफिक में जो गेम है ना भाई, इसका DRX और टैलोन का, वो वर्थ इट रहेगा क्या? अगर किसी को देखना रहेगा तो जरूर देखना भाई। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वैलोरेंट खेल लेते हैं, ठीक है ना, ये मन कर रहा है, थोड़ा सा मन कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, इट्स बीन योर बॉय, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ W ऑडियंस। आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट स्ट्रीम एट maybe 5 o'clock because I'll sleep straight up, और मैं उठूंगा कब मुझे नहीं पता। बाय, सी या।